You need to be very snappy at punching these forward positions. I think having a Neon and a... Hello guys, welcome to the another new live stream. कैसे हैं सब लोग? मैंने कहा तुझको ऐसा PRX baby. We are live आजो सारी Ta-ta-ra, na-ra-na-na-na. Ta-ta-ra-ta-ra, ta-na-na-na-na-na-na. Without a doubt, as you said as well, looking at Neon, it will be point of contact. No Man's Sky was stellar when it came to that first map. Look at the PaperX, they didn't get the memo. They think they're still on the attack side. They pushed through mid with 3, full control, 4 in fact. You can count the player towards the door of Patman, who will be safeguarding market. Oh. This is all about the flank game. And Batman there is, luckily, a trap waiting for them there. So it won't be a complete surprise that there's someone there. It just might be a bit of a surprise quite how many players Happy Wave's about to see. Yeah, Patman's the only player elsewhere down to 1 HP already, so I have to be a bit more careful. But you can see they have switched up where they are defending this spike from, or pushing all the way around. It hasn't mattered though. The swarm that is PaperX has given them an advantage, and Device is going to start defusing. He's just going to stick behind the wall. They need to run back around over the top. They need to go, and it seems like they are not going to be able to deal with anything. It is defused Round in front of their nose. Rocker did well, and I think Device stopped for a second. He was like, okay, someone's going to jump on this wall, and then they didn't. Yeah, well, I mean, they were too busy dealing with players towards main. It's a nasty little strategy, and one that has worked wonders. There was a gap on the, on the left side here, as we see it from Forsaken's perspective. It could have been exploited on the wraparound as well, so no surprise that he was a little bit worried. And in the end, Rorga surviving on 1 HP, but it doesn't make a difference. It is 1-0 start for PaperX. And we want to see XLG on the board early because we saw it in the last one. PaperX slow to start. We even heard it in the comms. They called it. Let's start slow, and then we get them. Paraphrasing. Yeah, you can't start a train at full speed. That's not how it works. That is true. Got to pick it up. They only had to dock into the station. Pick it up, baby. Speak with the conductor Alex one time, and it was plain Something sailing. by in action, baby. I love watching something because, like, you would see him play an agent that you think is like, okay, supportive 39. lineup, Missed that and then he's match. playing contact with a That wasn't sniper rifle bind. with B-Babe. The score was It doesn't 13-19. necessarily add up. I also love the fact that we've seen these changes to Sage, obviously making the range of that wall so much further. So Devi obviously places it 2 millimeters away from where he is. Yeah. This round, expectation incredibly low. Any weaponry drop would be nice, and hey, Braga has dropped one of the rifles. And 4 second Baba down ho be gaye. retrievable. But something is back. Selection though from something. Will be retrievable, but at a heavy cost indeed. Round goes Jing. He's down to 15. Ooh. Doesn't need to swing as something covers that. 2-0 start for PaperX. 4 players alive. Big weapon still carried through, and
ऑफर तो It's a कहते भाई strong 4 start, सेकंड को भाई but this round is really where we get the 4 litmus सेकंड भाई test. A good ऑफर sign तो है early on, though, is seeing Rarga be able to deliver. As we said, he's someone that comes in, as we said, as he said as well, he's someone who comes in here with something to prove, and he's certainly playing like it. if you are fine we can go tomorrow for gym Last time we saw XOG tomorrow what is tomorrow at tomorrow is Masters, September it wasn't Saturday really anything to write home about. okay Obviously, we've seen them have a fair few roster changes throughout the year, trying to fill in for you, and I don't mean you, obviously. For me, No. you're trying to replace me, Tom. Is this like Baby Bay? इसका मंथली कितना एक बार मंथली It's all right, पूछना I'm है ready to play. Okay, me against him. क्योंकि अभी एक पवन पुत्र में दिवाली ऑफर बहुत सारे अच्छे जिम में दिवाली ऑफर भी आएंगे There's no need for that. This purchase is definitely an odd one, though. You've got yourself But a कितने कम Bucky करेंगे for वो भी? Forsaken, Sting is still in play. 1000 Like, this is around the 2000 XOG nigh on half to win. Otherwise, the amount of Just to economy see, upgrades okay, that there will be. Dimensional Drift only one away as well. Could be powerful in that post pump, but it is a wide net currently being thrown out by XLG. And while Forsaken mentioned that he had a weaker gun, it didn't stop him taking a fairly aggressive angle. 45 on the clock, fairly committed from XLG. They got to go towards this site. Jing to deal with to start. Great stun, but he gets out of there thanks to the blast packs. Well placement. 35 now. XLG got to pick up the pace. Wrapping around, but PaperX are flooding back into the site. 3 players here now with one deeper towards the spawn. This is essentially a 4-man hold. 25 seconds. oh they are rotating Yeah, it's the right call. They've dragged all these players over. And they'll make their way across mid with that smoke with ease. This should be a plant, but I'm always wary of PaperX's ability to be disruptive. Something, he's in there. oh Only but one. taken down Yeah, and they've managed to make it inside the spike was being Batman down guarded हो गया all the way through. A good देखते हैं कल redirection, चलते हैं okay especially okay with the sage wall being used in towards the spawn. There was the box up top that you would have had Devi watching from afar. And now even with no man in the spawn, just waiting to try and catch them as they fall out. The fact is though, PaperX, all of these guns are going to be upgraded in the next round anyway, so they might as well try and do some damage. That's exactly what they're looking for. You see all this deep clears of middle. The idea is certainly in their head that someone could be lurking around. Rifle picked up for Devi as well. Good chance to make these exits very costly. He will close in towards this spawn. I don't think Jing has any chance of... Oh, exit frag he goes back to नहीं ले पाया Devi is shut down. Okay, 2-1. 4 players alive for XLG. That's a picture-perfect round 3. Yeah, and that's exactly as clean as it needed to be. It definitely got a little bit dangerous, and as we mentioned, like you're always going to see these sort of timing fights looking to be utilized by the side of PaperX against a lot of early information. So I like the fact that with 20 seconds left, they were willing to sort of gamble on that rotation, not fearful that they'll be caught somewhere else. Even still, though, it's going to be an immediate purchase back up from the side of PaperX, and I'm kind of looking at Braga here. He's going to immediately utilize that dimensional drift. Bear in mind, the only weapon he has is the shorty. Perfect for this ultimate. One flash left. Oh, he's come out without one. Moving around through the smokes, but the wraparound for Patman. Quick on his feet. He'll take Rarga down. Now it's Rifles, though, that they will be up against. The trick play hasn't worked. Devi's dead. Dead to right. It's even a headshot from Nomad to lock it in. But still, a 2 versus 4. Can't even get the 3 out before Patman's dealing with another. PaperX holding strong so far. And Happyway failing to take down Jing. Now that's the information. The element of surprise gone for his position. Jinga जरा से issue बचा भाई. Forsaken. He's going to cause issues, but Viva seemed aware of it. The timing, though, he corrects in time, but he can't quite land the shot. There's been a lot of moments, something's looking. How low some of these Boom. are, but there's a chance. But it seems like PaperX are ready and raring to go on this defensive half. A third already picked up, and I have to say that the orb placement coming out from Patman there in the early stages of that round was just wonderful. Like you see this attempt to play into the back of the site, and he's just denied all of it, just keeping hold of that control. Yeah, it's the fact that he's able to walk into spawn to be safe and then back out with his smoke, right? It's so much value delivered as a result of that. I'm not sure what's being said there. I love these guys. The energy on the stage is different, and 3-1 up.
Energy will only increase as these rounds keep going away, but PaperX, deep play, caught by the stun, caught by the paranoia. Jing stuck in the corner, and they know it, but in goes Divide. Happy to help out his buddy, set him up for success. Forsaken's found one timing the wrong way will be dropped by Nomad. We're back to a 3v3. Spike still secure for XLG, and this map, it doesn't get any smaller. The less players to defend it, this should be an advantage for the attacking side. Yeah, it feels like the first 15 to 20 seconds of the round lead to those early battles, and then there's a break in the action. I do feel like XLG throughout this matchup so far have actually done quite well to deny a lot of these plays from PaperX. I think it was even Nomad just having a reactive stun immediately to try and slow that push. Now with 50 seconds left, early rotation available. Borfo second up top, but he's been dealt with immediately. Nomad doing well on this Neon. Spike planted. Spike will now be planted. They know players on side are stuck there. Snakebite stops them from falling back and stops Happyway from helping out, but now it's faded. Happyway on the angle, looking for the fight, finding it, and Nomad tripling up. That's what we needed to see. Nice round by XLG. Won't let PaperX run away with this as they push up to 2. Yeah, I was definitely a little bit skeptical with Nomad going on to the Neon. I think definitely a role that he has played quite a bit in terms of that individual brilliance. I think we saw some of the skill in the last map, but as said, even some of the reactive stuns he's putting out, willing to sort of take a bit of a gamble, take a risk versus these players, and the timing was then in his favor, but even just winning, some of the fights that maybe he necessarily shouldn't. Not even flexing while he does it. 3-2. Economy of PaperX has taken a hit here though, a pistol for something, although at times it doesn't even feel like a detriment. Well, PaperX, think back to the last map when they had that astonishing, I think round 5, bunch of pistols in play, and that's maybe the most dominant that they'd looked. For XLG, ulti's available. They need those safety nets. It rotates from Coconut, the information. You have a Hunter's Fury soon. Deep play from Nomad. No ult popped. It's down to his rifle. But Coconut's fallen in middle. Rarga, good to trade that back. Now they've sensed the weakness. Blood in the water, but Forsaken still standing strong. Deep fight from Nomad, though, has managed to pull this back to a 3v3. And with the ult pop, he's got a tough fight up against Jing, and he won't win it. But with Forsaken going down, the numbers keep going back and forth till there's only 2 men left standing. The 1v1 that leaves the Sovas on either side. Bit of a risky position to plant from. Power PR से 4 second उड़ गया भैया. That 1v1 could have gone, but that was, I felt like that. I always talk about an observer's nightmare as a round where there's just a million pieces of utility. I feel like that was it. It was just one kill, but all on different points of the map. Like timing to catch out Patman, the drop down, avoiding the fake out, Jing winning the battle versus a slightly shaky Nomad, and then coming all the way down to the 1v1 at the end is PaperX to keep their lead, extend it a little further. But there is still investment here for either side. In fact, both teams' economy Secret is Lab on the की brink. VALORANT CHAMPS edition A few extra credits to spare, so a winner of seats this आ round, it चुकी could है. be worth a double. This is going to be so punchy. Could even have a Hunter's Fury off rip coming through from V, but they want to get aggressive. They want to play this one fast. You can already see Nomad taking space. Paranoia burned by PaperX early to try to slow them down. Jing goes in swinging, won't find much, and TP from Coconut. He's deep in their spawn. They are making so much pressure towards this A site. Forsaken, he doesn't crumble under that pressure to start, but finally he will come crashing down. A 4 versus 3. Res possible for PaperX, but the positions of those bodies, it doesn't make it look very likely. Happy with beautiful timing, but the shots don't land. Luckily, Rarga's there, picking up the pieces and leaving something alone and trapped in with the enemy. He can't even get out till that wall fades, and he will be cut down to size before that happens. Great round from Happyway after a little shaky of a start. Yeah, like he gets the job done, but I think also the hesitation there is that he realizes how much value his position holds. He goes swinging wide, guys, they can potentially be isolated on the site. Instead, him staying alive is much more of a burden than even the individual kill that he could have got instead.
And it's sort of the happy way I wanted to see. Like, yeah, sure, still maybe a few jitters here and there, but the guy is always good at having those backstabs, always good at sort of having those Adirex, hello Adi, welcome to the I like the change stream. of pace from XRG. I said so far, I feel like even in the last map, they called a decent game. Like, it didn't look like they were getting outclassed. And the important thing there is, right, HyperX, on that A-side hold, not only do they have numbers, but they have the wall behind them, so they're not even worried about a mid-flank coming through. Everybody is focused on that choke point, and Coconut being able to go into the spawn makes that much more difficult to do. The guys on site can't just swing out wide and hold the short fight. They can't just look for the elbow duel, because they'll be shot up from spawn potentially. And you have all of these headaches. Ek baat pucho, puch. That very much felt like HyperX getting a taste of their own medicine. Oh, back to a low bite. See how slow and methodical they're being on the other side. Dum dum. Forsaken has been able to take that first fight. Now the move away is somewhat to sell a ruse for something, but he's going to be able to hear any of the steps as they rotate. Forget Still got this aggressive position from Jing. Bear in mind, he does have the showstopper available. Probably won't want to use it immediately. But never mind. He's going to go straight in, and the steps will fade out. That was Raga's utility that has baited the ultimate, but now they go back towards something. Are they going to check the box? No, they're वो तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने हम भी नहीं कर पा रहे तो इस सवाल का जवाब कैसे दे Great correction from the previous map where HyperX were finding so much value with these weaker weapons. Forsaken, the only player that, well, he didn't have that much of a weaker weapon. He had the Guardian. Wasn't the Sheriff doing the work? And he's recovered a rifle, a chance to do more damage. Surely the round win is already lost. I'm starting to question that. It could be an ace, but the problem is you've got Viva deep playing with that Fury and Forsaken. Oh my god. He now knows where his opponent is with the Hunter's Fury. Surely decides the fate of this round. It's already activated. It might seem early, but the time on the clock is already so low. Forsaken goes in, pops it, goes for the stick. He might have time. It's going to be desperately close. The spam coming in from Viva doesn't get but it's a 0.02 second difference. Blink and you miss it, but that 0.2, bro. Swings in XLG's favor. So you know earlier where I said it might take a while. हल्का सा रह गया. ये तो 4 second diffuser diffuse कर रहे थे. That made it not. That's absurd. I can feel myself swallowing my own words. But I'll be honest with you. You doubting Forsaken in this clutch? Round हो जाता भाई, epic round. अभी Twitter पे आ जाता भाई. In a 3v1 with the spike planted ages ago. But Forsaken. Yeah, I mean, you know, I'd like to argue with you, but what we just saw means my point's invalid. Oh, that was so desperately close. 0.0, that's ridiculous. Wow. Nice shot. You can see the confidence right back in. Aggressive start. Gaming करके सोचा भूल जाऊंगा, but no gaming छोड़ के सोचा जाए तो but नहीं भूल पाएगा भाई, कुछ भी कर ले. कुछ भी कर ले. Expecting to be challenged. He's going to spot nothing outside the A site, and because of that, it's allowed for an immediate rotation for Forsaken to get back into B. They have definitely been red, and in fact, कभी ना कभी उसकी याद आ ही जाती है. Smoke up, it's decently deep, but that drone, oh, it didn't see him. He's gotten inside the smoke. Forsaken. Oh, it's beautiful. Chinga, क्या rotation आया भाई. Wrapping around the other side. That slipped through the smoke. It's been a problem. A couple of times you've seen that finesse from HyperX and being quick on their feet, able to get especially smokes, poison orbs, it doesn't matter what it is, but able to get that positional advantage in some of these plays. Even still, a round gap of only one. It's definitely been a different match to expected, but still those moments, Jing still performing to a high level. It's not looking great, is it? No. Def क्या है? Sheriffs and attack Def? side Bucky. Defense? Makes a bit more sense when it's on the क्या बोल neon. रहा है? Def Slide in, get real close. Oh yeah, I've seen plenty Def? of TikToks of that sort of game. We'll see if No Man has it in the locker. It might not matter. कौन सा Def की बात कर रहा है? Teammate, and there you go. That's a Bucky onto Jing. This fast-paced 1-2 punch of the duelists have not only got difference क्या है? it's also
got them डिफरेंस in पूछ रहा है क्या पूछ रहा है with that weaponry. And the bigger danger as well is, okay, sure, you had yourself the ultimates. Hunter's Fury might now be able to cause some damage. No man gone, rifle dropped, drone already being sent through. Raga just immediate on the headshot. Not hit by the drone either. ओए He sticks शॉट है around, Divide लली over one दवाई position. एक्सएलजी क्या The res लो available. क्वालिटी There's a player में that can be res. डिफेंस There it is. जैसा Patman's brought दिख रहा back. था Even numbers. And ओह he gets Coco नो ये furious. He एक्सएलजी swings out अटैकिंग भाई looking for the duel, but now they'll go लो pushing क्वालिटी कहाँ है into भाई him. Viva down and it's happy बड़े against two, but he's brought it to the 1v1. 6 HP. A headshot needed, but it's Divide jumping with the shorty. फिर से सीर से 0 पॉइंट का फर्क पड़ा क्या है ओ हो गया 0.4 इस बार I'm starting to doubt myself there. If they lost 2 rounds to time with that close, that would have been madness. But unfortunately, the ring around the rosy, the only man falling down in this case was shot. Line में shot. In fact, an excellent round from him in general. Making this one competitive. I feel like no man actually walking further into that shock dart rather than away from it. But you understand the panic. A nice attempt. Very low by a round and happy way. Definitely. हो गया I think he was doubting it as well. Well, he has just मेरे नेट के हिसाब से क्वालिटी अब नहीं होती है मेरी क्यों नहीं होती भाई not quite as close. क्यों नहीं होती Tampa para pa para pa 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 PRX ओपी बोलते हाँ ओपी तो है भाई ओपीडी तो है अब क्या ही कर सकते हैं भाई चैट में से 3 लोग आए ऐसा क्यों यार क्यूटी आ गए मोरिजिन भी आ गए आज एक मैच लेट करा अपन ने पहला वाला मैप करा ही नहीं अपन ने वॉच पार्टी जो 39 PRX जीत गई थी बाइंड पे वो मैंने ऑफ स्ट्रीम देखा भाई Happy way highlighted as he had a tough, and the desk highlighted had a tough map previously, and look at him now, 11 and 7. Very good. On this attack side. बाकी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें गाइस जितने भी नए लोग आ रहे हैं 1v3. Impressive performance. Well, Raga's got to wait for his teammates to break that wall open. It's going to पर we will miss Genji champions इस बार Genji नहीं है यार RRQ आई है clearing out these close corners on the site, not finding any tags, but delaying the push. It didn't really allow for much space to get back in either from the side of HyperX. They're waiting to move as a unit. Batman does have ult, but unless they really need this space, it's going to be tough. The fight goes a little bit ahead. They were still setting up utility on the remaining 4 players. सेकंड को भी ले गया वो take that close contact and put them into प्री spot, फायर especially फायर ऑफ लाइन में ज्यादा with बेचारा coming in on this flank. 4 चिकन डाउन वो हो गए समथिंग डाउन हो गए The trip. That's why nobody's looking in this direction. If this smoke fades, he might just have himself at least one freebie, but he's looking for more. He's going to take it all! Forsaken! A one-man retake! And another on the board for PaperX. something eh Shrouding his steps to ये great खेल रहा effect. He है made it past that ओ trap, भाई as you said. डूम पहले डूम 3 तो देख ही नहीं रहे थे उसको तरफ क्रेजी चल गुड नाइट मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो तो बताना चेस में अजीब सा पैन हो रहा है आजकल जब भी ऐसा होता है वो तो होगा भाई दिल का पड़ोसा है तो चेस में तो होगा इसका कोई वो नहीं है बस अपने पे ध्यान दे तो थोड़ा सा हो जाए बस व्हाट इज दिस And 1 round left to play with. For XLG, 7-5 still possible. A move to the defense where we've had our questions. The answer's not far away, but will they be? समथिंग बाबत अपने ऑफर करेजी ऑफर भाई इनको बड़ी गोल्डन वो बड़ी दिया गया है स्पेशल चैंपियंस का देख रहे तुम The last round really could give them a little bit of wiggle room. Well, we've said that it's been a closer affair than maybe expected, but if it ends 2-0, ends 2-0, they'll still be yet crazy to win भाई a map at a VCT international event. Yes,
Maybe after in how close Paris. the first one seemed, they might feel Paris, a little bit hard done by Paris. for that, but it won't change a thing. Already you can see some of the vulnerabilities, and more worryingly, it's that showstopper vibe has pit on the other side. Like, there's so much to play with in this. बॉल है, वॉल अभी बनाई है. थोड़ा हमारी अंबुजा सीमेंट की बॉल, और ये लो क्यों 3 ले गया भाई वो. हमारा ऐसा शूट नहीं होता भाई ऐसा. हमारी एल्ट तो पॉप ही नहीं होती है. Into B main from Jing. An 8-4 locked in HyperX. उसने खोली सैसल मारा, पहले अल्ट भी सैसल मारा. आप रेडेंट नहीं हो ना इसलिए. हम डबल सैसल मारते ना ऐसे सिचुएशन में तो हवा ही रह जाता. उसने सिंगल सैसल में फोड़ दिया वो, समझ रहे हो. सिंगल सैसल अल्ट था वो, और उसके हमारे अल्ट पे साला हम गुत्ती के नीचे भी मारे ना तो 140 130 उसने 3 निकाल दी उसी अल्ट से. हमारे इसमें तो नर्फ करके रख देते तुम रेज है. 140 डैमेज पड़ जाते हैं, या 3 निकाल दिया वो एक ही शूट में. गलत बात यार, हमारे साथ इतना इंसाफी हो रही है. देख रहे हो विनोद, और क्या हमारे साथ ना इंसाफी भाई. 1 मिनट चलो एंजॉय करो, मैं पानी भर के लेके आया भाई. मैं कहूँ या ना कहूँ, लास्ट मैप पे है. लास्ट मैप पे तो हवा में ही मार दिया रेस को वर्ल्ड के टाइम. हवाई डैड, ये एमर लोग है ना, इनका एम हो जाता है भाई. वाह, देख रहा है आदि, देख रहा है पेरिस, कितना अच्छा लगता है पेरिस, था ना पेरिस. Here. Send HyperX skyrocket. ये कहाँ चढ़ गया भाई? 9-4, probably 10 on the ये board. कौन सा स्ट्रेच ऑफ लिबर्टी बन के खड़ा हुआ? Home stretch while XLG trail. ऐसा पिरो में भी बन सकता हूँ. I like this early play. Similar to what HyperX did. ऐसा प्रो बनने के लिए भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. बन तो कोई भी सकता है. Just falls back. Looks to punish anyone over aggressing and hopes that this flank can find a lot of value. But HyperX look like they want to play aggressive. Well, this is where the wall causes issues. पीछे से आ गए 3 लोग. यो S25 अल्ट्रा वाले लोग आज पे चैट में अमीर ही देख रहे हो. They've sectioned everything else off, and actually no, they're looking the wrong way, completely the wrong way. They've been foiled by their own plot, but there's still a couple of players standing. Jing, Forsaken, not in the best of positions to try and deny this, but that time is already ticking. Only somebody just getting onto the spike. They need to try and wrap back around, and that's exactly what Forsaken will do! The clutcher. In this match, this man could do no wrong! Forsaken को रोकना मुमकिन नहीं हो पा रहा है. That pistol round was slipping through their fingers. The flank शेयर तो है.
When he got चेयर his तो 4K थी from भाई। main, there was at least a trap there, giving them some security on the other Boom. side. But HyperX had no reason to ये believe थोड़ा मेरे that जैसे that क्रॉसर जैसा space नहीं कर was रहा, clear. They get caught थोड़ा off मेरा guard. क्रॉसर Oh, it's just so nasty. 4 सेकंड All लेफ्ट I'm नहीं going खेल to रहा है। say is he's already got a bracelet on one arm. I think he's looking for a bracelet on the other. If he keeps this sort of performance up the entire tournament, I think he's going to be dual wielding by the end. हमारी Knows how गोश्त to put रिकॉइल up हो जाती MVP है performances and well, map number 1. इतने में। He always said that उसने the स्प्रे नहीं HB मारा was ना, Brimmy. डब डब He डब डब। started playing the Brimmy and It it was like a didn't look dub 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 dub. fantastic, but stick the man on an Omen. He's having a ball. And well, I अपन say क्या करते हैं, डब डब it's डब 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 almost डब। यहाँ था imperative डब 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 for डब डब डब। XLG that they get themselves a pistol. 9-4 down, their opponent's map choice. HyperX going into the attack half. And when they have shown strength on this map, that's where it's been. Solid victories on that side versus Sentinels, Fnatic, T1 more recently. जिंगा एक नेट मार दे, And it राइट was वाली a दीवार से टकरा के defensive सीधे side लेफ्ट। defeat इन दोनों की बूंद when they बूंद struggle में आगे versus गिरेगा Zeta. भाई। ये यहाँ से टकरा के Everything is set for यहाँ them to डाल now दे take बस। this map. साइबर भाई What's a टोपी good पकड़ते stack रह from जाएंगे। XLG. 4 players on the B side, 2 of them with sheriffs. नेट है भाई, कब मारेगा? Polar opposite of where this hit's coming through. A lot of players from HyperX though covering this plant. They've got numbers even after the Mara walls need. run, or the mags run dry. Something with a nice shot over the wall, and it looks like a lot of the danger already dealt with. Player No man standing. traded out, and that's really the story of this take. वीवा बचा बस वीवा वाइवा बचा। फोन में माइनक्राफ्ट Flooding in like this, they've got the numbers to back it up. Finally, फोन में माइनक्राफ्ट ले लो, close and 30 रुपए में नहीं खेलता मोबाइल गेम्स 10-4 भाई। on the line, but this was not the मोबाइल round में यूज सिर्फ XLG इंस्टा were और ये fighting सब के लिए for. करता है। It all comes down मेरे पास to बीजीएमआई round पड़ा हुआ है, 15. वो नहीं खेल पाता Rifles मैं। in play. Both sides. Yeah, well that was the investment of the last round. It was mostly into stingers, a couple of rifles. I also think this is the point you'll make a lot of the time when it comes to Sage. Like there's been critique a lot Boom. through history of this age, but one thing it gives you, ये तो especially मेरा on वाला this, शॉट a lot था, of मेरा वाला। different elevations, is sometimes you don't know the angles you're covered or not, and that's about as free as a kill as you're ever पुश gonna करेगा get. अब नहीं। ओ Because let's be real, there aren't that many teams Oh, ho, that ho, play wait. with the Sage. Okay, a very aggressive early start to the round, but it is No Man. Been impressed so far with him on the Neon. And he's No started Man. strong again. फ्रॉम नोवेयर। Yeah, it's No Man and Jing both trying to get that early contest for this corner. And even with the boombot backing him up, Jing can't get it done. Forsaken, I think, heard I like that cam this. activate. Certainly now did. He knows it's there. He's calling for it. And we see the pings that he wants to walk on through. Has to catch a timing. Even with that smoke, a TP will be heard. He'll be seen walking Boom. through. Nice shot by No Man yet again, delivering. क्या As he looks up at that's the unlucky. cam. That's a wonderful punish. What is going on? Oh, There's something here. yeah. A swing from No Man that gets punished. Something's got three. And I think Devi is about to go down. He's trapped in the corner with a sliver of HP. But in comes his old buddy. Something here to save the day is for ये राउंड में from something. ये राउंड में पीआरए जीत गई। XLG from one foot in the grave to bury पर मर तो हमें दिखाई गई है पीआरएक्स और जीत गई success. पीआरएक्स। देख रहे हो क्रेजी राउंड। The POV on the first two kills, because I feel like there were two एस से players बाबा down का। here, and I don't really understand how he's walked out of it alive. Boom. Well, they're just isolated. Okay, Boom. fair enough. He gets 2 bites of the cherry. It's incredibly clean though. An absolute Yeah, the headshot savior, machine throughout the something. round, and I don't even दवाई know भाई if की he बूंद looked बजा ली भाई। in the middle of all of that. दवाई की बूंद लग It गई was थी। always going to be one of them. You felt like to take कौन it आएगा to the मुझे ऐसा कवर दे दे? and something will be there. कौन है जो मुझे ऐसे कवर देगा? Forsaken looking for another bracelet. Maybe he's looking या for हम one that चिल्लाते रह जाए, हमारा बंदा एल भी पड़ा रहता है। They'll have to be in goal. भाई इस बार का स्टेज थोड़ा टॉटी नहीं है? ग्रुप स्टेज का स्टेज है कि क्या है? बेसमेंट में दे दिया इनको भाई। बाकी चेयर तो सेक्सी लग रही है भाई। सीक्रेट लैब, इफ यू आर लिसनिंग मी यू कैन स्पॉन्सर, आई एम ओके ओके। बस पार्सल करवा दो, एड्रेस मैं आपको डीएम में भेज दूंगा। जैसा भाई का नाम वैसा ही खेल रहा है, समथिंग क्रेजी है। अभी अभी भी सामने वाले एक्सएलजी वाले भाई फिश बम दे रहे हैं। अपन होते तो मुक्के देते भाई, Let's put it that way. I think I'm better वो भी suited, गालते। hopefully. तेरे साले But for क्या कर रहा है? HyperX,
11 rounds on the board. 5 अक्टूबर तक चलेगा भाई ये, तो 5 अक्टूबर तक अपनी बुकिंग फिक्स है। Even some credits for the next. Nice opening from Divide, and this should be a relatively easy round. That was one of the Guardians that Battle took down, Sage. the main punches that they're packing. Okay. Full blinded up. Patman still looked like he was close to गन taking कलेक्ट that कर kill. ली भाई ने। Yeah, that's a pretty hefty upgrade for No Man as well. Given the coconut. Willing to risk गया it. बोर्ड चेकिंग डाउन हो गया टीपी मारता हुआ। TPing. This is good आदि for खेलेगा Right कस्टम या Minded. डीएम Spike जैसा plant here for कुछ Divide. अभी नहीं Looking मेरा at भाई 1045 his करो। ultimate online and likely bring back someone who's been terrifying if it even gets to that point, because You will not kill my they've already got an उड़ गए advantage. 4 सेकंड तक क्लचर। Yeah, worth putting The it in, clutcher, obviously, the in this supper. position. If something can fade back, this is where you'll see your Sova play in main. Most of the time, Hunter's Fury for post plan, but no, they want to fight. Of और उठ course के ही they do. एक को This ले is लिया। HyperX we're talking about here. What's going on? Is that fight? Divide closes it out. What was Force something 1v1. doing, bro? They needed a 3K and a res to get it across the line, but you know what? A round's a round. 12-4 now for PaperX. There's so much I hate about this round. That was Like, crazy. it was just like, at this point, you can feel like they are just vibing with आदि how आप aggressive they're being. TP into the side, आदि व्हाट्सएप देख basically थोड़ा jumping lopsided, सेशन है एक्सेल का मेरा pulling पॉइंट them up to whip, running into a Ooh, smoke in आदि between भाई the walls, so action there's कर only रहे। the tires of angles. And yeah, it's that is a nervous smile if ever I've seen I one. aced like 2 rounds ago. Yeah. Oh, And here's it's the popped the Hunter. Hunter's Fury immediately. Here's the Early hunter। one, and it's Forsaken going deep on the back of the Chaos. Viva Oh, good for the trade, and Batman No Man down. doing the same. Numbers light on the A site. No Man's the last point of defense, so he'll fall back. Won't continue the aggression. Well, the rotate had come through. Viva, who started over here towards A, went back to take that kill and spawn. Drones out कोई सी भी साइड जाओ clears सेम it, and इक्वेशन they're है। comfortable now that वहाँ there's पे no more नियोन pressure on और them, that deep सोवा control भाई है, coming in इधर from ओमेन Nomad. और There's nothing on mid. सैपर They भाई weren't है। looking, they weren't walkabouts. So the B sites where the hit should be coming through. They'll keep in 2-2. But Happy Way and Coconut, they're the ones that have a chance to keep their team in it here and now. One way। Cage immediately used. Going through all of this utility. नियोन अभी भी नहीं आया It's like a भाई। little bit of a risk. Paranoia even being thrown through as well. So they're going to know that there's a couple of players here at least. Curious to see if PaperX still opt to actually execute in this direction. They're throwing in more utility. Boombot to click close. 35 seconds. Now we're limited Oh, on options. hey. Gotta go for the spams through the smoke. They'll take down Divine in the choke point. The shock dart's fantastic, and the swings are even. स्वागदाद ने बहुत मेजर रोल प्ले XLG किया with इधर। a round win, still trailing by 7. But they got to take this comeback one step at a time. That's a good round from them. Something to note as well is it really does feel like the Sage Wall, how far you can get it now, Oh, it's actually makes things really interesting, because Divide put that wall in from inside main. Like, he was just like, I might as well give it a go, just try and give us a little bit of extra space, but it feels like it goes incredibly far. I don't mind the buff though, because I feel like a lot of the aspects of what people using this were before were basically boosting themselves up. Brings a slight bit of tactical element to it. Well, a weak buy, but potentially a much faster one. I like the kill trips though. Great trip positioning indeed. It's a little. Never mind. Unexpected. Jing hit that. Happy Way down and out. Jing revealed in the corner, but he's got backup now as they start to flip back out. No Man looking for market control as a deep late play from Patman. Will it be? जिंगा भाई ने But क्या they're both dodge up करा है already भाई from left to फ्लैशेस। flank. Jing's already got 3. He's still going. हमारे तो आखिरी अब तक वो जाती नीली। Looks for his 4th. He won't find it, but they'll clean up anyways. 13-5, 2-0. PaperX. जीत गई। जी अब सैन और किसका है भाई? ऐसे कैसे जीजी हो गया? यस वो तो होना ही था भाई। पीछे वो देख रहे हो, बाउंसर को देख रहे हो भाई? किसने पीछे बाउंसर को देखा है? ट्विच पे पीछे नहीं होता भाई, वो खड़ा हुआ पीछे। इतना राइट का एक निशान बना रखा अंदर।
कहाँ गया वो बंदा? ऑफिशियल लग रहा था राइड का, बाउंसर नहीं लग रहा मैं वो। टैकी भी नहीं कह ही सकते, ये तो बाहर के फोटोग्राफर थे। आप इधर आइए, आपका फोटो खींचूंगा। पीछे पे तू हंस, तू दांत दिखा। देख फोर से को बोलो, फोर से का दांत दिखा रहा। चपलूश, yeah, thank you. You let me sign your autograph. Let me sign. Uh, net speed is slow. That's why I'm buffering. Ching ping ching ching cha ping ching 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 cha. Hole hole. Am I good now? Yes, I'm good now. अब buffer नहीं होगा. Solamba. अब मैं क्या तलूं राजा. Oh my God. Very bad result till now. भाई गर्मी लग रही है मैं तो यार. लेकिन मेरे को बताओ, मेरे को भाड़ू लोग कौन अनसब किए हैं? कौन है वो भाड़ूस? पकड़ के लाओ उन अनसब वाले भाड़ूस को. तुम्हें पता है अपना राइजन 5 और i5 हाई एंड में आता है? You guys know? You guys don't know, but you should. मैं कहूँ या ना कहूँ, आदि तेरे तो मैं तो बूंद मार दूं. भाई 8:30 बज रही है भाई. कौन कौन है चैट में? Tampalu, happening. Where's Pista? आदि है, आदि है. दूसरा मैच किसका है भाई?
GX वर्सेस सैन का है भाई। सैन का वो तो मुझे पता है, किसके साथ था वो मुझे पता करना था। देख रहा हूँ काजू भाई की आईडी से टेक्सचर्स भाई काम भी खेल ले विद एली। फ्री भी भाई भी है यार। बाउंड टू बन इवेंट पास, इसमें क्या आ गया भाई? ओह प्री के रेड नाइट्स। लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, एक सांप का बड़ी भी। ओह हो, अच्छा है भाई। डेफी ऑल ऑड्स, Match found. डेफी ऑल ऑड्स कर क्या है? सैन वर्सेस एक्सजी है भाई। Death match. Warm up. वामा, वाह, एनटीआर जूनियर एनटीआर वालों का एनटीआर लगा के रखने वालों की जय। पापा से नहीं खेलना चाहिए बॉल बैक, पापा पेल देंगे। मना किया है ना करो हमारे साथ मस्ती, You're फिर all भी। more important than words on a brief. Look out for each other. Fight. Bring your best. Target down. हेड है भाई, हेड है भाई। कुतरिया क्योंकि मैं उसको मारने जा रहा था, तू बीच में क्यों आया भाई? हाँ योरू, टीकू बदमाश मुझे मार रहा है, टीकू बदमाश। माना कि आपका लगा 410 का है, लेकिन आप मुझे घूस से मारोगे, आप इतने बड़े हुए नहीं हो, आप मुझे पीछे से वार करते हो, शर्म नहीं आती है आपको? वाओ, हाँ टपक जाओ, पता चला दर्द। 120, एक गोली भी नहीं मारा उस हार्बर को वो घूस से, शर्म आती है उसको? मर जाओ आप अरीना, आप उस हक के नहीं हो। मैं जान दूंगा। Gecko down. फाइनली हील मिल गई मुझे। अरे यार हार्बर यार, तू कंट्रोल नहीं कर सकता? कहाँ से आवाज आ रही है? मेरे कान थोड़े से डैफ है भाई, सर्दी वाले डैफ है भाई, परमानेंट वाला मत बोलना वो। This harbor is such a pathetic person bro. हेलो भाई, हम पीछे से क्यों नहीं मार पाते? 120 दिया भाई, this is wrong ना bro, this is really unfair with me ना bro. पागल बनाया तुमको, पीछे से भी वार करके नहीं कर पाया मैं। क्या हेडफोन दिए, कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं ही अंतर्यामी हूँ। अरे यार छूट गया, फिर पीछे से आ गया। भाई 67 मैंने दिया, कोई दे नहीं रहा उसको कुछ भी है। वो नीचे वाले को छोड़ के मुझे देखने लग गया।
ये तो गलत हुआ ना भाई. This was wrong with me ना. Scratch one. Die and be done. Problem solved. 10 kills remaining. भाई 117 मैंने मारा, मेरा किल लेके क्या? Scrap metal. मैं जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, इसने मुझे ऊपर से मारा. 5 kills remaining. वाओ, इनकी फाइट चलती है दूसरों से, दूसरे लोग इनको कुछ देते भी हैं कि डैमेज नहीं देते. मैं क्या करूं? 100% PRX पे वोट आए तो PRX जीती है. अब नया वोट हमारा ऑन है सैन वर्सेस GX का, तो बताओ सैन जीतेगी या GX? सैन और GX. पिकाचू. Match found. Death match. Warm up. I reckon I'll take a kip after this. नहीं, I've earned लाल it. लाल है, लाल लाल है. Fight. Oh shite, I lost my pet rock. No, my rules.
अरे पीछे से मार दिया मैंने। 101 103 What he on the reflex? Hi, bye. पड़ी खट 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 120 120 वाह भैया Dominating. घंटा मैं तो बस wakakalopo parehas to po eh. Wow. Target down. Nice. 10 kills remaining. That's 3. 4 in the dark. Wow. हाँ जी बाव हाँ वाव तू बोले चोंदी 5 kills remaining. वाओ वो पीडब्ल्यू आईडी है आपकी है नहीं मेरी कहाँ सो जाएगी भाई मैं कहीं से डालूंगा उसको बंडल उसका फैन रिक्वेस्ट आया हुआ था मेरी नहीं है अमन की है अमन अंबाड़े
One kill remaining. Lamborghini. Pew pew. वाह मुझे ही गोली लगी. GG easy parts noobs. इतना मजा आता है. मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ. Oh my god, the guys are on the tables. अंदर आई एम से वो ऊपर हेडफोन्स पहन रखे देख रहे हो. इनको तो फ्री एक्सेस रहता हुआ ना हर जगह का, कहीं पे भी घुस के कुछ भी ले लेने का. ओहो वामा पूरा भाई. मॉनिटर को थोड़ा सा नीचे करा गया है. भाई इसकी पैंट छोटी पड़ गई क्या? ओ भैया क्या बैठे हो आप? People are going to come in and they're going to say, these rookies from Giant X, you know, they had. ओ जा दो what's up, what's up, what's up? भाई एक की रेड बुल खुली हुई है भाई. इसने बीच वाले ने पीएस के राइट वाली कैन का ढक्कन खुला हुआ था. देख रहे हो राइट वो देखी. इसने नहीं हाथ लगाई भाई, इसने नहीं लगाई, इसने लगाई. उसने बीच वाले ने पिए भाई. ओ तो क्यूटी के बाल आ गए. Buddy, listen, you're gonna make Rob hate me, dude. Okay, yeah. Like he's never gonna. Why you think that you're the... क्या विशी चैंपियंस क्या चल रहा है सेकंड को. भाई गंजा करो. सेकंड को सेकंड नहीं था ये हुआ था भाई जेल्सिस. सेकंड कब गंजा था भाई. गंजा ही ठीक था ये. गंजा नहीं, पहले लंबे बाल वाला अच्छा था भाई. तक 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 तक. अभी 3 मिनट है भाई, लेट हो रहा है. कुछ टैग इशू इशू आ गया कि वार्म अप नहीं हो रहे लोग. हाँ, बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस. जितने भी आ रहे हो मेक श्योर फटाफट लाइक चट चट हो जाना चाहिए भाई, चट चट. कैंजिरा कौन था भाई, कौन है कैंजिरा भाई, कौन है तू पैन के टके. मेरे को कैसे मिलेगा यहाँ से. फरेबिल भाई खेल रहे. दादू भाई के आईडी से टेक्सस खेल रहा 9 बार और हार रहा. सर हमारी डायमंड लॉबी में एक इमोर्टल का हारते भाई. नहीं कर पा रहा कैरी. कैरी नहीं हो पा रहा क्या. कैचू कैचू कैचू. ये तो काश है अपनी क्या है. कैशू कैचू कैशू कैशू कैशू. वेनम वाइटी. फरेबिल भाई पेजअप आ गए. नवरोज भाई एसएन 3 आ चुके हैं इमोर्टल 1 से गिर के. बड़ी खुशी नहीं हो रही मुझे. बाकी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं.
इतने सारे कास्टर्स दिखते तो है नहीं भाई, सबके अलग अलग भाषा का रीजन भी है क्या भाई? Why we don't have a Hindi caster here? टाइम क्यों ले रहा भाई चालू होने में? भाई वीसीडी के टाइम पे कोई इतना कोई आ नहीं रहा, तो व्हाट वी कैन डू ब्रो? वैसे भी कोई आ नहीं रहा भाई, वॉच पार्टियां नहीं करूँगा फिर भाई मैं। ऐसा ही है तो जस्ट प्ले द गेम दैट इज मोर गुड देन। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। ये तो चालू ही नहीं हो रहा भाई। Texas has come from his ID to play swift play. Match found. Death match. Warm up. Tara tara. Nara nara nara. I call you Chale because it means you're my friend. But maybe I should call you Kwasia because you Fight. follow. Rise and bring glory. मैं magically correct. You know I am hero in this game. Bye bye, Boomer. Bye bye Boomer. Bye bye Boomer. Bye bye Boomer. Nice. आप यहाँ क्या कर रहे थे? शिफ्ट वॉकिंग कर रही है, शिफ्ट वॉकिंग कर रही है। हम भी बैठे क्या ये ला एडी एडी करना दिन पर है। एडी एडी तुम कराओ मतलब व्हाट द फक यू शुड बी डूइंग। Take them out. मिल जाओ तुम मुझको। See this dead fool. Oh, what the heck, bro? थोड़ा हम तो नाइस ही है गुरु। You dead. मैं कहूँ तुझको
Pavilion. Too easy, too easy. शरीफ का पत्ता पड़ गया. Useless individual. जल्दी जल्दी आया वो दे गया. Wow. Just swag. Oh, come on. मार जाएगी तुम मुझको बाटे, मैं मारू दूंगा तेरे को हेड. हो जाएगी. Oh my God, Aaron. Kills remaining. What blood निकला उसका head से. What was that? This is really unfair with you guys. Trinity, you're welcome. Quadra. 5 kills remaining. Dominating. चार जने जल्दी. 3 जने जल्दी मिलो भाई. I killed them. 1 kill remaining. No shots. One more. Live on YT. This is progress, my friends. GG. Well, Parasta, thank you. No spring trips like this. वो चालू हो गया. Up in elbow. They're concerned about a rappy coming from spawn side, but all of GX now have announced themselves, and that's Grabinho. Not solo, they're a top mid. Flickless not able to take a trade though, and Zekken from that tower spot. That ghost is starting to sing out. A lot of good damage. Ara knocked down to 15. Zekken able to slide across now, but it's Flickless who's exploring the site itself, and GX lock it down. Ara and Flickless, the two players coming up from tier 2, are the ones to make the impact in the pistol. Both those SEN players just forced to swing out on the spike tap. Deleted. You know, despite Bang getting that isolated 1v1 kill on the controller opposition, they're still able to eventually win things out. What a play from Westside. Lovely anchoring from that elbow position. And it was Flickless' willingness at the beginning of the round to push all the way out of B main. It just allowed GX to stack up on that proper site, find the early advantage. Honestly, timed their exit from that A side of the map to perfection. As soon as Flickless rotates in from B, he doesn't actually see them get there. Not the opener Sentinels were looking for.
But again, their attack side's been pretty darn good on Corrode. It's the defense side that's raised a few eyebrows in the past. Here's Zekken trying to challenge early slide on out McLeod. Deals with him. His west side will remain in that pocket spot. Zelsa's going to go ahead and grab that orb. I'm interested in seeing what Westside is going to bring on this Vice pick, because throughout Stage 2, he was running kind of his patented Cypher on this map, and he was locking down that B site with some very creative setups. But GX have very much so indexed into the meta of this map that we've been seeing more globally. I've certainly been seeing a lot of in Americas. These are agents that SEN are definitely going to be prepared to play against. They've got a lot of experience against them. Delsa's likely an attempt to sell something more at A. Doesn't just draw out the shield wall, he commits and is easily picked off. Not the most inspired way to try and catnip GX over at A, but it does at least allow the Sentinels to set up. They've not gotten in. Flickless looks to kick them at arm's length now as we head into the last 30 seconds of the rounds. SEN should have no hopes of dealing any damage here, but I do believe they're able to kind of min-max the orb situation and collect each on the two sides of the map. West side likely going to clean up these last two players. Things go a little bit awry, but all good. He was the man just with the Ghost. So all of the important weapons retained for GX into this bonus round effort that'll be coming up. Of course, an Outlaw early for Aura. So proficient with the scoped weapons. That has been his bread and butter, and such a crucial part of the success for GX on the defensive sides that they play. I really enjoy watching GX on defense in general. West side, obviously, fantastic anchor player, really dependable, and where the map allows for it, GX love to push up, get some info, super active on the defense side, even trying to set up these little pops early. This is where that'll be put to the test node. Sent into a buy, looking for that mid-control early, and they've smoked it off heavily. That standard haunt thrown up top by Narrate Prowler through. Your critical pieces of utility for getting up mid. This early link control. Bit of damage exchange. Bang, real low. Zekken as well. Westside has fallen back to elbow out of that pocket position, but might even... I thought about reposting towards it. The gate crash set up here. Flickless, though, is down. That's a pick over towards top mid. He just goes for an exploration, and Bang was holding the line already. Look at GX at the top of the map. They're now concerned about some of the gaps that are open, but SEN have just been biding their time. They're waiting to get into this A site, which is now also great presence in A main still for Sentinels here, an off angle by John. They'll be able to drift over. This puts GX in an awkward spot. Gravino has been so dependable in this controller role. Will have to find a way in himself here. Cover going out. Look over towards pocket, that is at least going to eliminate that as an option, and also let GX start to get into the side itself. Zekken waiting, Prowler though, eaten up, close range, he's going to relay vault to try and get the space. He's low down to 45, the paranoia here comes on through. Westside and Cloud look to step up. Zekken will be first up and last out apparently. Gravino hasn't really been able to move from this position at all. Sentinels draw GX out of A with that pick in mid. Take the side for themselves. I do love how Zekken plays that situation, feeling the pressure of multiple GX players, retaking through that main area of the site. Loses some health, back. A paranoia comes through from Bang to the system. Prowler as well, then reposts on the angle. Even a little movement adjustment for that second kill. Really lovely stuff from him. Not too much damage done from GX on that bonus round. So SEN stabilizing their economy just a bit here. Once again, it's the same setup over towards mid. Both the fast lane and the Bible yeah, this time GX are ready to contest with this paranoia. Prowler's holding him out. Multiple players here. Prowler going through, but Bang crucial kill. Balls to his favor though, takes Bang down now, wants to try and challenge mid off the flash. Not much to be seen there, but Flickless is able to take care of Zelsis. And that's the control, the B side of the map secured. This is GX saying you're not going to be taking mid for free. What an adjustment from Aura. A gate crash if he does need to escape, but wow, actually just pops it as a fake immediately that he's gotten back out towards that B-side link, but he's staying posted up. Here's that proactivity on defense for GX, but this time it puts him right in crosshairs. Aura at least is able to respond, again emerging from that top mid spot. He's already had 3 kills in the round, locking mid down, causing that spike to go loose and leaving it all up to Zekken. Those remaining SEN players
numbers dwindling away because they just have too many angles to cover. A double face here is easy to put together. Zek has to expect that, yeah. Either Ara or Flickless will get the job done. He's 5-1 for someone who's feeling a bit under the weather recently, not even scrimming. He's hit the ground running. Debut global event as well. I love this adjustment from GX. Good call from IGL Cloud. They've been giving that mid space for free. SEN have been happy to take it fast. So with those Yoru flashes, some of our own initiator utility, just re-pop onto them, re-fight for that space. Really, really love that decision from GX. And now SEN, some fear is going to be instilled in them as well. When we have those walls up in mid, there could be flashes coming at us. They could be swinging through on us. Curious about how these, Zelsis lurks mid to late round have been looking so far. This has been hard to shift on that B side of the map. Zara starting up close and personal this time, a little more than he perhaps bargained for at top mid. Now 3 players in link. Surely GX pop from here. Well, yeah, they want to re-push. Steel guarded as well. SEN routed, running down mid, but Bang caught up top, so is Zekin. Confirmation though, as Westside steps in the mid. This is under the effects of Steel Garden, by the way. The classics ring out. I've never seen a better endorsement for the bundle than that. And the A side is open for Sentinels. Itna chaos mid mein. Idea from GX. They want to re-fight into the mid. But with SEN being able to escape towards the bottom and then, re-swing out, that is madness. How on earth does Zekin get 2? Well, they have 1 onto the first guy coming in who's trying to clear, see where people are at. Sure. How on earth does he get a 2nd off that? At the risk of being a little facetious, the crossfire setup for Sentinels was pretty good in top mid because they're obviously able to push all the way up to the arch at the very top of that part of the map. I think that's something we've got to have a look at here. It has to fall apart for GX. SEN ने मारा था, उसने उसका flash तोड़ा, उसने flash लगाया था. And they lose to vastly inferior guns in some pretty sharpshooters' hands. Well, they're certainly feeling confident. I'll tell you that. They have not gone, come to this game with nerves. But if you watch GX, right, you've seen this a lot. This is something they did to Fnatic in that series that really made Fnatic uncomfortable. There wasn't this time to set up. There were these thrusts coming out from defenders at really inopportune moments for them. Very disruptive. That is just Zekin just straight up won a 1v1 against Scribino on that swing. That is crazy. So Steel Garden didn't really have the impact I think they were hoping it would. You're right. That is a very GX-coded play, though. They love to use an ult on defense to activate some kind of very aggro play. SEN are just going back to the well, seemingly. They wanted to go up mid, but this time it's just a little bit more of a bait, drawing the attention and a reposition towards this B main side, and GX are going to find that out when they pop out of the smoke with the flash. Not a costly re-clear in terms of util for GX. Somewhat in positioning, right? Hey, hello Nick Gaming, welcome to the stream. क्या हाल है Nick के? Be affected by this Nightfall. Flickless though does step in, and the Steel Garden is active My this bad. time against GX. Vice card break नहीं होता भाई. Kaiju break करेंगे वो. In there with the overdrive. A player at top mid on the other side of the smoke, and it's very clear where Flickless was standing. Boom, 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 boom. GX now getting mowed down. Coming out boom, 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 boom. Even at long range, Zekin downs Ara. 3 for him in the round, and another flawless posted by Sentinels. A second at जब नियॉन का अल्ट चले तो ऐसे ही चले. been a monster. At Toronto, he was out of control. If he gets right back into that form here at Champions, this is going to be a potent Sentinels team. GX took a massive risk. अरे पता है ब्रेकेबल नहीं है, but इतने कि उसमें कुछ समझ नहीं आया. Goes in. Flash लगाया. Give me a fist bump. Let's go. Crazy bold play, and they're punished for it. And Sentinels can sort of guess how deep GX have gotten back into that side because of the info, or the lack of info that Nightfall actually provided. And then they've got such a massive inherent advantage. And Zelsis off the rip finally wins one against Flickless here at B, but he has some backup. This is just a sharps round for GX, so can't really fault Flickless for trying to go for something aggro. Again, this is it's all of GX going for something aggro, which it's really felt like every single round so far. Nice shot from Cloud. Does deal with Zekin. John gets a lot of damage on this corner, in fairness. Cutie, come on. Cutie around it, cutie. और नी क्या हालचाल है? Okay. Long time. When those regen shields really getting pushed their limits for John, he is going to have to give a lot of ground here and try and play at arm's length. He's given a lot of map control here to GX, but all of SEN are entrenched now in the post-plant scenario at B. Yeah, I mean, more than anything,
They should just be trying to kill John here, and they are, but thank you. Able to collect both. Well played from Sen's IGL. Like the look from Grabinho this game, but he has not been able to get on the board in a gameful manner. And well, lead में आ गई Sentinels post another one here, and this is that economy now. SEN is in lead now. Starting to develop. That was fairly important for John to keep that gun. I mean, it does just put Sen's economy in an absolutely out of control spot now. They will not be on an eco anytime soon. Uphill battle for GX in that regard. One enemy remaining. And so to some degree, it does feel like Sentinels are trying to tempt some early movement out of GX in these rounds, right? Take some space early, give it up, see if they re-clear, see how much they invest in re-clearing. Either use it positionally or fight them as they try and do so. This time it's over towards A, that's where the presence is, but there is a poison orb inside A main. Sentinels aren't going to advance too much further than this for now. You'll notice they've left that shield wall in their wake, so likely looking to end elsewhere. Finally seeing Aura pick up that operator. अगर ये round भी SEN जीती तो शायद timeout लेगी. Pivotal to his play style. Yeah, success on defense, both for him, but for the team in entirety. You know, a lot of their defense success really comes around playing with the op and then forcing those attackers into Westside's sight where he's so fantastic at anchoring. Doesn't see it, doesn't check the corner. Danger abounds. Westside, he takes his opportunity and he converts on it. And there's bang to fall as well. Perhaps some more dotty vibes, crossing of T's required there for Sentinels. And they have crumbled in a screaming heap. He is such a stunningly consistent player in scenarios just like that. Playing in anchored positions, Zelsis is going to be able to pick up this one, but still, how can they wrangle this back? Time is getting quite low, 30 seconds remaining. Spike isolated left. Top mid. Why not go for it? They have infinite amounts of money right now, but... There's a haunt shot out. Phone spotted. Now we're going to start spamming, I suspect. Our ults are going to able to hold that line down. John is off लगा रखी है. Straight down the way, man. The damage starting to come in. An auspicious number of health left here for John. Only 6 seconds left in the round to maintain this weapon. Come on, hunt now. Hunt now. And dispatched. इसके पहले वाले राउंड में बोला था. Hunter is renting on now. Hunt now, bro. They want to play towards top mid. They go this right is Valo, baby. Displays some lovely patience. Trigger discipline दिखा दिया भाई. The opportune timing. Getting the crosshair placement is excellent. And that's what a lot of it comes down to for him when you watch him on defense. His crosshair placement is just genuinely impressive. Always in the right spot. Good bait, no? I'm all behind you. Really liking what I'm seeing from Westside this game. Flickless also been really asserting himself on the B side of the map and successful. Still seem to have started to figure out a couple of ways to best him. Second does take a bit of spam damage. GX heavily indexed towards mid, towards A, as they have that op controlling the B side. So now what do they do with this mid control? Do they give it up, wait for a re-clear? Cut noise perhaps, look for a way in on A. There's a shield wall there in A main, which has not been uncommon in this game. I mean, right now there's no reason for them to believe that SEN aren't going to drift towards either maybe up mid, but likely towards A at this point. Now all of that Vice util towards A is actually expended, so that's nice for SEN to get out around the minute mark on the round. Ara playing forward. Mid में आए mid से अगर rotation दे दे Flickless मजा आ जाए, लेकिन mid में ओमेन भाई सब bang भाई देगा, bang कर देगा उनका. Eyes on west side. जैसे ही वो rotation काटना आएंगे. As the top performer already in these 8 rounds. Poison Orb here will obscure that field of view somewhat. Shield wall now triggered and SEN are going to fully commit. So they got 4 players here heading over towards Yard, which is the omen left back towards mid. Here's the Nightfall coming through. Narrate deals with Cloud. That's the eventual peak into mid dealt with. And some elbow control being assumed now for Zelsis. Slow and steady. There's a relay bot catching on the Narrate doubles down. West side out of the picture now. The close vicinity of the A side's been cleared. And Flickless walks headlong into an op shot. That was simply the perfectly placed recon bolt from Second. That connected onto both anchoring players on their re-entry after being stalled so heavily by a really significant ultimate that Cloud threw out. That connected onto everyone coming through that link side. They had no chance of getting into the site. There was a paranoia thrown on top of that. You know, which
Perhaps Garbino is regretting for not saving for a re-entry, but did think they were going to maybe pop out of that smoke, so can't really blame him. But operator. Would have been nice to have Narrate by. Use your ability. Use your ability. Oh, he missed that. They've been criticized, I think, maybe for sticking to their sort of Sova breach guns too heavily on a lot of maps in the past. I think the adoption of the Yoru gives some coverage of a lot more of the map, and also some pseudo-initiator capacity, right, in terms of his kit. VCTV. Not too shabby from them. Remember, Sentinels have a 74% attack side win rate on this map recently. Typically, they run teams over here. The GX staying in step is a very good sign. And that is really the thing about GX in terms of their comp choices. They love the double initiator still, and it got them on the best run that they've had all year in Stage 2 to make it to champs. But now that they're here, yeah, they're switching up towards the more meta double controller, at least to begin here on Corrode. Opsil for... दो राउंड के लीड मैच यहाँ पे SEN Viper's Pit, which could be thrown down on B at a moment's notice. Still Garden also active on both sides. That's been a pretty key component of the util or ultimate heavy rounds we've seen on Corrode so far. Do you expect if SEN make too much noise over on this B side, that pit will be thrown down immediately. They have the opt control over towards a main. So this should be a challenging round for SEN. Yeah, look at this forward posting up here in A main by Ara. This is... I think we heard that shot ring out. This has made a little bit half a second. दोनों के पास यहाँ पे वाइस सेंट है It's key for them that they try to exploit some of these lanes in mid, knowing that that pit is in B main. Kill from Cloud just stands bam, I believe, yeah. Might have been off the back of some of that util either way. Second now falling out. His mid presence completely neutralized. That was a peek out from 8 short. Now where do you go? SEN are running out of options. They did throw the Viper's Pit out onto the B side. The map felt like that was an appropriate investment. Elsewhere, there's no penetration here for Sentinels. GX just do a great job of finding those kills in mid. The only really open lane that SEN had, and now they're going back into this pit. और यहाँ पे ult में Viper बैठे हुए हैं this time. This is something he's been picking up a lot more recently in Stage 2. Okay, they're going to try and seize maybe to clear out. Yeah, this pit. Oh, they've got a catch there, and again, it's Garbino set up on the corner. Pit down though, Flickless inside of it, caught inside the seize, but Garbino nicely done with a recovered operator. Deals with narrate, and this puts John in an impossible situation. He'll just hope to walk away. 1 before again, QT. Gotta feel good for Garbino to get online, get on the board. QT फिर फंस गई. Kills to close this round out. Come on, QT. It's nicely done from him. GX able to tie things right back up. वो एंगल पता है वहाँ पे एक बंदा रहता है फिर चेक नहीं किया गया उसी की वजह से डाउन हो गया apropos of nothing, Wyatt. Cloud has just gotten a bit unfortunate. The inkling he should spray. What a shot from West Side. He is so good, man. He really is talented. Yeah, I've become a bit of a fan of this GX team, I think, watching them. I love those teams who want to push up for info and defense, get active a little bit, take some risks. R again is posted up towards that A main side with the operator and has a gate crash all the way towards back B. He needs to get over there quickly, and he just may need to. Steel Garden is going to canvas the entirety of the site. Flickless isolated in there with just a shorty. Okay, Steel Garden out in response, but all this does is really slow Sentinels down. Do they want to imply they've been affected by it? Pull out your secondary. I mean, that does enough that Flickless does get his gun back in time, ready to fight towards Link. Second tower. Oh, a nasty one. Garbino able to cover at least, and now swinging into two. Did catch the pocket player with the paranoia. It's shocking to me that there's even a trade. Nicely done for GX, and Zelsis is dug out of position. Traded though, West Side off the map. Now player inside elbow, and Sentinels have the pre-plant Viper's Pit in play. Then caught by that Prowler, knows it's time to just get out of there. This dimensional drift trying to spot plays out for Cloud, but with Aura isolated, no value to be found from this ultimate. Yorubai. Supposed to be for Aura, yeah. I think this question might be the better part of Valley here. Play off the side, still another round left in the half. Maybe get yourself a freebie if anybody steps past the line of scrimmage. Really has no choice but to save. Look at the status of the cash for GX. It is dangerously low. And there is zero chance he'd be able to win this post plant out in this 1v3 with the pit down. I honestly though, if Zekin doesn't get that initial kill, that absolutely absurd neon slide kill,
round looks totally different. You have to imagine 9 out of 10 times he's going down there. He's jumping out to create space and draw the crosshair away from his teammates. He didn't even have his gun out. So actually slides and gets a kill. Two GX players on that corner, and if the paranoia doesn't hit one of them, as you see there, this is disastrous. This is very bad for criminal. That is a criminal. I like this भी from मारा left side as well. जाएगा That was nice. He, you know, with the wall going down, he pops splash, he isolates a 1v1. The tables are hot, gentlemen. But from there, he's not able to get any assistance. You know, Heaven was smoked off where Aura was at. Good effort, but Sen all seem pretty satisfied with progress so far in this map. Oh, there it is. Kreo tried to get involved, not to be Aura. Flattens Zek and now is able to fall back further. that is Aura going onto that angle late. The attacker beats the timing of the defender in A main, but he's just so fast that it did not matter. That is a display of just the sick reactions that this guy has when he's playing with the AWP. Now, Ara. in mid position. Gate crashed here after that first pick in A. Three players of Sentinel Sig. साउंड गया होगा साउंड गया है तीनों देख लग गए थे तीनों तो देख लग गए जैसे साउंड दिया उसने Now the ball comes up at him. It's time for them to get on in. Ara now needs to spend a shot, get back through the wall. He's going to get that top mid control over. The Sentinels have struggled to fight for this part of the map. It's been very expensive for them, and they don't really want to force the issue there. Still trending in that A direction. They draw a lot of attention towards P. Good paranoia from Pavilion will stall things up. For Sen, maybe allow for a rotate timing. Well, rotate is gone now. Westside at least with a pretty swift trade. So they still need to deal with the anchors here on this site from GX. And they're still on the clock from that rotation in through mid. It's Cloud with the Guardian now to give a quarterback good count of himself. And that's Gravino for two. What an 6 is good half. Moment for GX. Good half. Just the Sen look like they एक भी टाइम आउट नहीं आया भाई Beautiful on defense. एक भी टाइम आउट नहीं आया सीधे 6-6 की ओर लेके गए भाई Dapaka dapaka dap dap dap. Zek in here though.
to wait out any aggression that may have come from SEN, but it did not. It's been safe from them right now on this pistol round. Testing A-main now. Near Viper Wall to keep them at bay, and they're going to step over that. A Razer Vine there and Flickless. And there it just walks out into the open angle, and it's like John alone as well. John's about to find two. Surely not more from John QT. A stunning three-piece that has now given SEN a chance to come up for air. And Zelsis deals with the spike carrier. A round that felt all but lost there. Salvaged by the captain. I suppose Nere feeling like if he goes out, they wouldn't expect John to be behind that box as well. So sacrifices his life. Yes. John, he definitely made the most of it. They never expect the second player to swing alone. But listen, if there's anyone that could win a 1v2 right now for GX, it is Westside. He is white hot. Arkrose confirms no presence in the side after the fact Westside has pulled back now, though. Giving his position away. Smoke thrown up here. Bang will be waiting within its depths now. Zelsis already got it to half, and Westside gets a frosty reception when he does. Nice round. Sentinels after a rocky start. 3v5 at 1 point. Able to take a second half pistol. That is such an outrageous series of kills from John. The second one, the jump connects the instant headshot. That is sick. Ara literally jumped to try and allow the other player to swing in. Maybe the spacing could be looked at there for GX, but it's hard to feel like they did anything really wrong there. Idea's not totally aligned there. I mean, if Ara just swings out normal, he might have just gotten the instant trade. So fundamentals a miss, and John hits some unreal shots to exploit it. Classic SEN move here. The force into heavy stingers after winning the pistol. Something that sort of changes the dynamic of the bonus round quite drastically, but allows them to buy up pretty healthily. The SEN have absolutely loved doing this. They just have the one Bulldog for Bang who's posted up towards A. Seen on this map a lot from them as well. Maybe on the attack side if they actually win that pistol. Yeah, Omen knows. The second is there, bro. They've favored this Omen buy. knows. Couple shafts for GX. See if they can get anything accomplished here. Zekin very far forward, but this is being checked for. This is about to be ugly. Oh my goodness, the rate bails him out. Zekin has the wherewithal to pull out the classic and go into some right clicks. Oh yeah, classic. Round and sting around, I suppose. For those unaware, that's a thing. And then when you lose the stingers, it's well, it's not too bad. It's not the biggest hit to the economy. You can just buy more stingers, so you're fine. That is the North American hailing way. from the land of plenty. Just buy more stingers. Great setup here for Narrate, though. It ends up being a crossfire as GX know. They know Zekin is in that corner. They look to dig him out, but expose themselves to that off angle. Not even Ara can bail them out. But let's see what the plan is here from SEN. They are going to make a pretty fast approach down mid, it seems. As GX work both of the extremities. How much longer can they take this early mid-control when we start to play the spam game? That's my question. Something they got owned by NRG on. With Brock just spraying them with an Odin. One nice little benefit of playing the Yoru against SEN. You know that you're going to be able to use that clone to just trip the Vice wall. So that is immediately super free. Yeah, just off the map for Zelsis. So change of tact here for GX. Flying off that B side of the map, which is far more loosely held. It is B आ गए सब के सब B आ गए यहाँ से Zekin भी B की तरफ आता हुआ but still confused. Smoke आ तो फटाफट आ bit of stall, and Zekin is actually posting up towards that link. Dodges out the paranoia. Alright, in the site, Grabinho also TPing across very much like Lotus here, as those two are able to get a bit to further enter ahead. the side. Into the site. Rotations coming back through. Spawn here for Sentinels. And a position taken up in tower. But remember, these are just stingers, with the exception of Bang's Bulldog. There was really no opportunity for SEN to flood their players not in position. Zekin continually just smoked off. And now on the re-entry, they're going to have to deal with these thorns on the ground. Yep. And no steel garden, no nightfall, none of that sort of accoutrement, so to speak. In we go, Zekin up first. John and QT step in. No one to trade there for Ara, but yet it's Narrate with the Sheriff to step up. Cloud, you think will be dug out of this corner in a few moments. Economically, this is for Sentinels. A very cheap bonus with 3 stingers in play. What? Yo, SEN easy. अरे presentable गई watch party की permission
मिलके हमें सब मिल जाता ब्रो। अब मेरा थंबनेल बना दो यार वॉच पार्टी वाले GX ताकि वो लोग आए। और अर्नब भाई कहाँ गायब हो भाई? अर्नब भाई गायब चलते हैं। AI से बनवाओ, AI से बनवाओ। And it's honestly an uncanny amount of these stinger bonuses. We've seen Sentinels be successful. AI हमारे नहीं बनवाता, लैपटॉप नहीं है इसलिए वैलो वालों से दूर हो चुका हूँ। लैपटॉप से था तेरा कलेक्शन वैलो वाले से। वैलो के लिए लैपटॉप नहीं लगता मेरे भाई, इसे लगता है मोबाइल स्ट्रीम्स अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं वैलो वालों से। Come on, man. That's not how the game is supposed to be played. AI तो आजकल भाई एक्शन फिगर बना रहा है, लड़कियों को हीरोइन बना रहा है। इतनी टट्टी दिखने वाली को भी पता नहीं क्या बना के छोड़ दिया है AI तो भाई। What the AI is doing with us, bro? What is to stop GX though from scouting out this early move? Boom. Because they are thrusting down mid, right? In Boom. theory, you could spray them down. You've got a Boom. controller competition. बम्परा बम 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 कितनी बार दिखाएगा भाई जैकेट का एक ही वो। Surely that's an option here to answer this like early push up. Really, outside of a couple of those early fight rounds from GX, mid has belonged to SEN चलो भाई this पैरिस चलते हैं। entire game. Kings of mid, as we call them in NA right now. Mid is Let's so go to critical Paris. on the road that is just लीड going में आ to गई भाई, continue to give them the चार upper राउंड hand लगातार throughout. जीती SEN। The joke, Rob Moore, please don't tweet at me. 6 था हाफ। Obviously not the ending. ये stage पावर we करोड़ would की have liked. डिफेंसिव मैप। And everyone expecting them to step up here. So far, not so shabby. The mid control, again, that GX does not contest in the early part of the round. They're really only interested in the extremities. So Zekin's gotten स्पॉन से pretty रोटेट deep. करते हैं, मिड कंट्रोल ले ही नहीं रहे हैं, वो इजी कंट्रोल लेके बढ़ जाती है SEN Have मिड to pay में। attention to R, of course, with that dimensional drift. Can collect all of the info towards A. And if Cloud gets just one orb, we'll have the Nightfall as well. He has the spike right now, so maybe we'll see a scenario where this dimensional drift allows him to get the अर्ल plant मार down, के इन्फो and then लेने they गए can हैं योरू Nightfall साहब। taken out in the post plant. योरू साहब ने Inside एक there, साइड concealing की इन्फो surely दे a दी है। massive chin. Very chiseled. And beginning with the dimensional drift, and now sees the और यहाँ Nightfall come ओमेन out. ने टिपी मार के और टोपे और यो Commits to the sights, and he's sent packing by Bang. बैंग सामने तो बैंग कर दिया दोनों को। Position to play off second. नाइस जैकन एंड बैंग। Another three-piece बैंग इज बैंगिंग नाउ। for the young gun. Another flawless for Sentinels and 2 rounds away from a map take. This control Pixel of bhai, mid is again where is so Pixel bhai? influential. The pace that Zekin is able to just get right over into this A site and fight off that Nightfall catches one. Look at the teleport from Bang. That's insane, the adjustment. I mean, we rightly so Boom, talk boom. a lot about how good Westside was. इधर यू देख रहा हूँ मैच। Also on the angle, मैच देख रहे हो? the absolute best. And it looks like the key there for Sentinels is the dimensional drift that comes in from Ara. They know he's close by, and they just windmill slam. That's Nightfall on भाई शेप देखो भाई के थोड़े से लुल से भाई, इसकी बैक और इसकी कमर क्या दिख रही है भाई। GX एरा की भाई, इनके सबके ग्लास माउस पैड है। टाइमर बाय GX। ये जेकन बाय तो कीबोर्ड पूरा पैरेलल रखे। हाँ भाई। Why are you gay? I'm not, bro. I'm not. I'm not. I'm fully a straight guy, man. जेकन भाई को ऐसी हैबिट होगी तो इसे उनने रख लिया। That was just the buy where they had some lower weaponry, but they're just ignoring mid entirely again. They just want to hit ओए this बाबा B लड़कियों site से with the बात ultimate कैसे करते singles. हैं Maybe some kind of फ्लर्टी? cheeky Grabinho कैसे teleport करते हैं behind मतलब? with the Nightfall to cut off the audio. करे जाओ, उनकी तारीफें करे जाओ बस, अगर वो तारीफ के लायक है तो। नहीं है तो मत करो, उनकी खर्ची उड़ाओ। Simple way, bro. 2 ways to attract girls. Praise them or troll them. Both works. Straight through the pit he goes. He's ready to throw down. Spot that Grabinho. Boom. Zekan भाई आके, Zekan भाई आके slide slide up.
एस गए, क्राउड भी एस 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 चिल्ला लग गई थी यार, क्या पंपिंग मोमेंट था उसके लिए। भाई आप अमन की आईडी से खेल रहे हैं वेलो? नहीं भाई, मैं वॉच पार्टी कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग वेलो। चिल्लाना नेगेटिव लग रहा है मुझे, बट मजा तो आता है। और क्या भाई, जूनियर है, जूनियर्स पकड़ रहे हो। हंटिंग चल रही है भाई, हंटिंग चल रही है अंदर भाई की तो। यहाँ हम सिंगल बैठे हैं। Again, it's this lack of any control of mid that is allowing SEN to just rotate so fast, flood in, support. Okay, मैं खेलता हूँ उसकी आईडी से। Okay, okay, खेलो खेलो। They've been sitting on those for quite a while. They've been getting a lot of kills, having a lot of success on this defense side. Far cry from what we see. बस वॉच पार्टी कर रहा हूँ। और लाइक करना मत भूलना स्ट्रीम को गाइस, जिसने भी लाइक नहीं किया वो फटाफट लाइक कर दो यार। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, सब्स मेरे नीचे आ गए, मेरे सब्स ऊपर थे यार। ऐसा मत करा करो, मैं जब भी ऑफ स्ट्रीम जाता हूँ तुम लोग मेरे सब गिरा देते हो। Finally, they've given some mid control over. Well, I mean, वो 9th में है, मैं 10th में, but archery में बहुत senior हूँ। At this point, he's feeling himself. Just a little शर्म आ रही है ना? 9th 10th में girlfriend। Oh God! Spike down A. हम पे तो था ही ना। जीत गई। पहला मैप पिक था हमारी सैन का ही, सैन जीतते हुए। दूसरा देखेंगे भाई, कुछ 5v5 करवाओ। 5v5 कहाँ करवाए भाई, पहले हमने बहुत कुछ किया यार, अब 5v5 वाले लोग ही नहीं बचे, सब लोग बिखर चुके हैं भाई। हमने इतना 5v5 करा है ना भाई, इतना फन करा है, पर अब लोगिच नहीं है। अरे वो आज बोली आप 10th में हो, आई कांट बिलीव आज से आपको आपके नाम से बुलाऊंगी। तो तू खुश हो गया, तेरे मन में लड्डू फूट गए, मन में लड्डू फूटा। मोरिजिन तो भी तो टेक्सास और दो और लोग स्विफ्ट खेल रहे हैं, देख रहे हो। These peoples have given the more priority to the game rather than my stream. देख लो गाइस, ऐसा ही होता है। टेक्सास डी रैंक नहीं, टेक्सास इमॉर्टल 2 है अभी, इमॉर्टल 3 था तो रैंक रीसेट के बाद इमॉर्टल 1 ही मिलता है सबको। देन ही इज ट्राइंग टू रैंक अप, और उसका भी मॉनिटर जीजी हो गया, उसका भी मॉनिटर के अल लग गए हैं। Match found. सबका जीजी हो रहा, लाइफ ही यही है भाई, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। कभी तो अप कभी तो डाउन, वो बात है ना कि तुम्हारा भाई का तो डाउन ही डाउन जाएगा। ऐसे तुम ना देखो मुड़ के मुझको, यही मैप देख के आया भाई अभी। अरे मैं माना ज्वाइन फॉर कॉम्पी नीचू चैम्प्स का मैच चार्ट समझाओ। चैम्प्स का मैप चार्ट अभी तो ग्रुप स्टेज चल रही है, अभी जितनी टीम जीतेगी उधर जाएगी, बाकी अभी फिर मेरे को बाहर आना पड़ेगा, इसके बाहर आगे सब जाता। गॉड डैम न्यू वेंडल, क्या करे भाई, लेना का तो बंडल मन करा था मेरा, बट याद आया कि मैं तो गरीब हूँ। और जैम्स के जो आप चार्ट पूछ रहे हो बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, क्योंकि यहाँ चलता है अपर ब्रैकेट लोअर ब्रैकेट, फिर भी आपको भी समझा आ जाता है चार्ट। साला मेरे को चूज करा वो मारा। बंडल में क्या क्या है, बंडल में एक तो वो जो वैंडल मैं यूज कर रहा हूँ, एक यही वैंडल है, इसके साथ एक गन बडी है, एक नाइफ है, एक फ्लैग है और एक प्लेयर कार्ड है, बस। अगर टाइटल है तो आई डोंट टाइटल एग्री है, बट इतना तो है।
और INR में आपको पड़ेगा बंडल 5800 रुपीज़ का, टू बी प्रिसाइज। श्रेया के साथ क्यों नहीं खेलते? जस्ट आस्किंग। श्रेया मुझे नहीं खिलाती, श्रेया मुझे खिलाती ही नहीं है। और श्रेया और मेरी रैंक में डिफरेंस भी है ना। 5800 का मॉनिटर इजी। मॉनिटर का इतने का मतलब यार, बाप रे। श्रेया मुझे खिलाती नहीं, श्रेया का अलग ग्रुप बना हुआ है। श्रेया ने कॉल की कि आप मेरे साथ खेलोगी, एक बार भी नहीं पूछा श्रेया ने कि आप आओगे मेरे साथ खेलोगे। लैपटॉप का मेरा, अच्छा लाइक जस्ट you know record some videos together, record videos together। मैं वीडियोस एक्चुअली रिकॉर्ड करता ही नहीं, मैं जितना भी खेलता हूँ पूरा लाइव स्ट्रीम पे खेलता हूँ। टर्बो का है बोल कपड़े बोल टपटे। यस पैसे तो है बट दूसरे के। किसके है? अगर बता, अगर ये अगर जिसने तेरा स्क्रीन तोड़ा था उनमें से एक के भी है तो उड़ा दे बाप, उड़ा दे पैसे। बोल रहा हूँ मैं, डरे वाले अपनी स्क्रीन। अगर वो उनमें से एक भी कल्प्रिट का है तेरे रूममेट्स के, उड़ा दे भाई। सेकंड मैप कौन सा है? सेकंड मैप इज यहाँ नहीं दिखा रहा, मैंने पिकम्स देखे नहीं थे क्या थे भाई। स्ट्रीम चैट यहाँ पे भी डाल रखा है। वेरीफाई करना पड़ेगा अकाउंट मेरे को यार। क्या बोलते हो गाइस, एक ट्विच अकाउंट बनाया जाए? सेकंड मैप दिखा ही नहीं रहा है। सनसेट है सेकंड मैप, जीएस का पिक है, सनसेट है। हाँ भाई देख लिया, बंदे भी देख लिया भाई। आ गया था चैट पे, लोगों को चुगली रहती है। ट्विच पे भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। किधर हुआ? बच गया भाई। झुका मत करो क्या को भाई, आपको झुका दिया जाएगा। ट्विच अकाउंट नहीं है मेरा ट्विच अकाउंट। बाबू ना करो, बस ना करो। गूगल से लिंक बना लो। ट्विच पे भी स्ट्रीम करेंगे ना मेरा बात। ट्विच अकाउंट बनाने के बाद वी विल स्ट्रीम ऑन ट्विच टू। इनका काहे इतना काहे हग रहे हो? क्योंकि डेथ मैच है यार। यहाँ प्रो बन के क्या कर लूँगा मैं तो बस मैच होने के टाइम पास का करूँ। और हगना तो मेरे खून में है, तो बहुत हगता हूँ, तभी तो मजा आता है लोगों को हगाड़ देख के भी। वाह जी वाह, चलते चलते मुझे वन टैप मार दिया। बाकी मैं हगाश में भी 21 किल कर गया बे। 22 ओवर। कहीं से तो आओ, जल्दी आओ, मेन वाला आ जाएगा भाई। कितना एक बंदे को कितना टाइम लगता है चढ़ने में भाई। मेन वाला आ गया ना, करो विंडेक्सी। Where are you? Need one for compy. बेचारे को तड़पा के मारा मैंने। किधर दिख भी जाओ यार। वाह भाई, मैं चल चल के आ रहा हूँ पूरा फुल देखे। वो भाई साहब शिफ्ट करते हैं बॉडी पार्ट ना शोभा ना, शिफ्ट ना करो।
शिफ्ट करोगे पहले जाओगे। कैसी लगी चापटी? क्या मैच चालू हो गया? अरे यार this was Velto's OP pack gameplay. OP कहाँ है gameplay यार? What is OP the gameplay? I am known for a good game. मैं बोला उसको काहे गोली नहीं लगी? भाई आईडी रे बंदे यार। मैं बंदे धुन के परेशान हो जाता हूँ। अब यहाँ एक बंदा मर गया, मैं यहाँ तक आया तो अब यहाँ आऊँगा तो यहाँ मर जाएगा। मैं चाहूँ तो जाऊँ कहाँ? बंदा शॉर्टेज इन दिस। ना करो दादा, ना करो। One kill remaining. अरे यार दिस सीजुरी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। मेरा एक किल दे दे मुझको बस। I am the winner. Valto's live for money. Oh, they are on the tables. They are on the tables, man. Oh wow, the cuties. The cuties who are watching together. The tiles or the boosts up. Just Secret lab. John Cutie, wild those Cutie. John Cutie मेरे Choppy. John Cutie. वाइपर खेलेगा? मैं सिखाऊं उसको वाइपर खेलना। वाइपर पीरो था एक टाइम पे। वाइपर पीरो। क्यूटी उल्टा कर दिया। जिन क्यूटी, ओ माय गॉड, जिन क्यूटी ऑन टॉप। जिन क्यूटी है, जिन क्यूटी, जिन क्यूटी, जिन कोटाई। जिन क्यूटी कब जाएगा? जिन क्यूटी जॉब पे कब जाएगा? फिर कब मेरे को ढेर सारी सुपर चैटें मारेगा लाखों की? कब जा रहा मुड़ी जी? 5 wins on it. This is सनसेट है भाई, absolutely इजी their सैन best विन। look. नो ऑडियो आएगी Westside आएगी on अभी that आ गई cypher और where he thrives right now on the ऑडियो भी Viego. आएगी। A lot of damage through onto Bang. Gonna need some support. I think Going to need a flood. ऑडियो सिर्फ मैचेस टाइम की आएगी Look at आपको। this. They've inserted Zekken onto the site. The rest of Zekkos have actually pulled out. Zekken might have an opportunity here to really ruffle some feathers. But it all really remains to be seen on what the landscape looks like as this dark cover clears. He'll stay tucked in. अटैक है पहले He's भाई। smoked to be main, and Cloud diligently is looking to clear जैकन this भाई देख रहे हो तो मैं corner लेफ्ट से देख रहे, जैकन भाई देख रहे। Zekken is not looking towards his left at all, just kind of hedges on the right side. However, Grabinho flagged Oh, it and entry run हो over by गई। Sentinels, who now can accelerate into the site and start to set up for a post one. Unfortunate that GX lose a player immediately after. That was some nice awareness from Cloud to pick off Smoke Zekken here, in the bro, initial smoke first here. kill. Zelsis ready to flash, maybe to fight towards spawn, but no, Sen going to call Again a that off. smoke. Because of the एक स्मोक से पूरी एंट्री बदल दी उस साइड से सब आ रहा था। Link when GX try to get back in here. They do have a good amount of breach util of their own to do so. Zelsa still holding onto it.
Veins starting to emerge on his forehead now. Patience, patience, and release. It's onto the site now. Ara the only player in though, and it's staggering. The spacing of players has really thrown SEN for a loop. The narrates some sharp shooting. It's just not remotely enough. And in a 4v4 retake, GX looks sharp. GX are really fantastic at playing around their breach utility on this map. This is still the map in the pool where breach is very much so relevant. It's the only map in the pool where breach actually has a above 50% win rate against non-breach comps. So it makes sense that both teams are playing it here. इतना अच्छा breach इस map पे. हर्षल तो ये बोल रहा है. Swings from that box on A side, expecting there to be more players behind. आगे हम तो क्या कुछ खेलते थे यार. Slow things down. Ara goes ahead, and they've still got two players tucked on Link, who later emerge, and the timing completely throws them off. Also, Ara just knocks heads together on the site. 3 kills for him. It's a map, by the way, if you haven't seen SEN for a bit, where John is back to playing the Cypher, just straight up one-to-one swapping with Zelsis, who's now picking up that initiator, playing the breach. This is something that SEN have opted for since Toronto, going back to John's old role where he had so much success in 2024. Oh, okay, and a rare miss from Ara there. Actually allows for some. एक गोली इतनी करी, मेरे को तो 140 तो दिया होगा. They are, of course, on nothing but the classics. अच्छा देता तो सब मरते ही. शील्ड ही नहीं, कुछ भी नहीं इन पे. वन बॉडी है, पूरा गेम ले जा सकता है यार. 100% of the time he's going to have that full armor. Yeah, you need the full armor every single time you're going into that initial buy round. Flickless here inside the site. This is awkward. Very awkward. Flickless able to get through though. Zekin for a moment, thinking to remain towards top mid, but now it's going to be a large flood across here into market. West side not able to find anyone. Some damage on Delta, but the looks of things, and Zekin takes the fight to him like a bat. Zekin के पास गोलियां नहीं बचती भाई. West side for one, but John gets in there with the classic. Flickless overwhelmed. Sentinels running in numbers. And Acrobino with the Bulldog has to salvage the situation. 3v2. Only has the ghost right now. Hit the guns. A gun goes in. 3v1. Oh, shot. Little more than a one. But rate taken by Zelsis. Zelsis खड़ा हो गया भाई. Once again, shilling the bundle. Totally control and go market very quick. The GX players just not synced up at all here. Boom. Aura is caught in alone. Westside spent a bunch of time just spamming through that cage that was thrown in market so SEN could cross the site. So he's a little bit late to getting in to actually help Aura, who fully commits, stays, tries to kill Zekin on the slide. GX का कितना fan है भाई. I didn't even yell at them. I didn't even. And from there, I mean, GX, they just really mistime their players coming into flood and assist. They're essentially all isolated in ones. I don't hate this position from Cloud. It's so dirty. Zekin walks up into it. So Cloud by camper. Early in the round. Nicely done by Westside. Stunning shot. And this is GX for you. So Bang by किधर देख रहे थे? So proactive, looking to work the map, push up for info, take risks, and it's given them the edge. Even if not the rifle drop there in B main. Now Westside hears all of these players running forward, catches one with the cam. GX rotate and Celsius isolated. That relay bolt forced, narrate back or he would have been caught. Frustrating for Zelsis. Guy around it. Certainly would have felt stranded there. There's the rest of Sentinels. GX अपना एक को अच्छे से खेल गई भाई. Trying to work the map with only 2 players up. Narrate considering a double back here. Someone who's been very vocal, Wyatt, in saying that when he can contribute more to the ideas of this team, he feels like the game goes better, but he struggles when he's not performing well to have that voice. Aura takes this contact, but that haunt ensures that Westside's position, I think, will be revealed. I couldn't tell actually if he broke that, if it was flickless. Regardless, SEN do not want to get to that B site. They know there are multiple players there. Yeah, but what options do they have? They've had no mid control at all, and Gravino is able to scope up boom, in time to deal with John. Outlaw bolte. And simply, he will pull back now towards the middle of the map. Oh, nice little angle there held by Gravino. A fantastic thrifty from GX. And again, Sentinels try the same thing, burst the pace onto that B site, but very heavily disrupted by the breach util of Flickless. They're able to, I think, throw the guns around at the very end there too. Maybe get Flickless one, I couldn't tell. They were trying their best to recover all the weapons though. That was a great relay ball from Aura, who was getting into assist Westside so fast on that rotate. We lost against Eco.
वो बज रहा हो. Can't blame the guy for being Lost fleeced against about the that. eco. Back to Zelsis a little bit. He stood up for their eco. But he didn't know what to say, really, did he? He just sort of stood up. Grabinho, wow, they're having problems standing on their feet right now, Sentinels. Cut down aggressively. Grabinho's able to push up here, and Flickless can only go 1 for 1. Still, the Sentinels committing all of the remaining resources to that elbow part of the map. It'll leave Zelsis limping away. 8 bullets, baby. Reload, reload. And 8 in the chamber. Nice shot from Cloud. Very quick with that reaction. Sen just go for the NA Stinger Rush, but GX a little bit too stacked up towards elbow with the much better weaponry. They make light work of that. That's how it looked off the rip. The ping is very good. It's a freebie for Grabinho. Shoot the dart, boys. No one ready for that one. Card navigates all of that util pretty effectively. 3-1. Yeah, sit down, sit down. Shield down? No, a little sit Shield down. Shield down. Little sit No down. shit, sit down, sit down. Sen, all right, well, we're getting into mid pretty quick. R's been able to pick up that operator quite early. And the buy for Sen honestly isn't great because they committed a fair amount into that Stinger round. They didn't get kills. They didn't, only a couple. They don't get the plant, obviously. So the armor, not ideal. Bang with just the Guardian. And on Corrode, as soon as they knew that Ara had an operator, they stopped playing his parts of the map. They avoided him entirely. This time, no, not the case. They've got the Neon, of course, who can take this space aggressively, but Ara's going to repost up on this corner and might have a timing. And the danger is where Aura's in a location, you want to go elsewhere, and then you're running into the site that Westside is anchoring, and that is where he's at his absolute best, especially when he's playing Cypher. They do have the option, of course, to try and play top mid, pull the rotation through, and all just get gunned down, apparently, by GX. Man, that's going to lock Sentinels out of the round. It feels very hard to bounce back from that. What, are you going to go back to the side that Ara still posted up on? Very cool from GX that they pivot into that high-low setup mid after assuming that Sen will be rotating away from A. Aura's reposted up towards elbow, so then they're ready to just gun them down midway through their rotate. They read the situation well, and they, as a team, will always do something proactive around that on defense, even if it is just setting up, a high-low open face like that to get the man advantage. I'm always really impressed by the sheer number of different set plays that GX can put together on defense. It feels like they've always got something. Like Pipson has them drilled to a T. But this team, right, who in this form we've only seen since, the end of stage 1? They won 1 game of kickoff? 1 game in stage 1? Now they're at champs? Yeah, they were 7th, 8th in kickoff, finished 9th, 10th stage 1, and now they're at champs. And that is also a testament to the impact of bringing in Aura and Flickless right at the end of that first stage. So they make away with 3 rifles, saving on that prior round. Invested so heavily into this one, of course. They have that Nightfall to play around from Narrate, and they're just but 1 orb away from getting that Rolling Thunder for Zelsis. Okay, that was a TP across tiles by the looks of things by Bang. Smoke top mid here. This is already drawing that potential high-low setup across for GX, leaving A pretty lightly held. But they're okay with that. It's Aura with the operator posted up. He's getting all of that information just by existing there. Safe pair of hands for sure. This drone heading into mid is going to at least spot out Zekin. These dark covers are going to need to be cycled yet again from Bang up towards top so Sen can safely maneuver around this area of the map. That's the second one being used. Of course, to be able to use a third should be required. Now, it looks like Sen at some point, do they just want to see if someone is over towards A? Are they going to make noise and then try to pivot back into a B split? I don't think they really made any noise towards A just yet. I think Zelsis wants to probably find a fault line opportunity when it comes back available, but Zach is going to go straight into market anyway. Sees the trip, clears it. No, he gets killed. Wow. Sen are trying to pivot into some kind of crazy A split right now. A smoke is placed top left mid for Zelsis to maneuver in. Or still has this operator not spotted out. Dangerous there, very dangerous, but Bang goes for a diligent little shoulder peek. Ara, those asking for more, and there's no opportunity to trade it back. Flickless may have fallen, that's a breach util gone, but most of it was already expended to the favor of GX now. We've got 12 seconds left in the round. Sentinels accelerating here. My goodness.
threatening to break the sound barriers. They hit that A side, and all the GX get drawn out into the town square. What an insane execute from SEN. That's a crazy pivot back towards A. Making it seem like they were going to go through market, then they smoke top mid for Celsius to kind of re-flank up top while they're going through main. That was madness. Ira's set up here ends up being what? The trade is to play here from Link. Narrowed is this crosshair set already. For that emergence out of elbow, and SEN just send it. They got no other choice. John is... Wow, he went crazy. Yeah, he's disgusting in some of those moments. I think the pistol three-piece as well back on Corrode. Another moment memorable. Yeah, he's had some insane individual plays so far today. Cloud did not look pleased with how that round. Nice round. बाकी do like this stream and don't forget to subscribe guys. जितने लोग भी आ रहे हैं subscribe बटन को दबाना ना भूले. टाइम आउट ले लिया गया है यहाँ पे. सैन का टाइम आउट है. 2-4-2 की लीड है यहाँ पे जीएक्स के पास. सेकंड मैप अगर ये हारती है जीएक्स तो जीजी. सेकंड और 8वां राउंड आया भाई. 3 राउंड बीच के लगातार लेके गए थे हमारे. 6ठा राउंड आया था. 6ठा 3 राउंड लगातार वो लेके गए भाई. मेरा गेम बहुत चिपक रहा है. क्यों चिपक रहा है? This is something that SEN need to be prepared for. क्या आपने आज ढोकले खाए थे? चटनी के साथ. और क्या लैपटॉप पर ढोलती थी? The spike is down in that corner. SEN are getting sold out by the dark cover, paranoia going through, or in an isolated 1v1 They have the rolling thunder to get A-main control back. That is absurd. A counter one comes out though. Flickless lets it go, but it's Grabinho who eventually falls by the wayside. Sentinels have not got off the starter's mark in this round, and Zekin's not there to double up. Now trying to at least play off this aftershock. Celsius got his, and it all falls apart. Cloud निकाल गया भाई. Who likes to be assertive on the defense side. GX more than most. That is a classic GX play right there. Keep them coming, baby. They love Cloud भाई round लेगा भाई. An aggressive early ult. This is an exact round out of their playbook that we saw them use to win a round against Fnatic, for instance, in their matchup in the playoffs. This is what they excel at. Their strat book on Sunset is absolutely as dense as it gets. And Sentinels have definitely seen that. Kaplan has definitely seen that. It didn't really seem to prepare them for it either way. What a nice look there for GX. Here's a fault line that'll force Cloud off the line, and in theory allow the cross back for Grabinho. Finds a perfect window to punish that rate. And again, early in the round, SEN have been knocked down to 4. It's good to see Grabinho really getting into the game here on map 2. I don't think SEN that performance America's in any way is representative of the normal top 1 या top 2 पे play नहीं that है. he is offering to this GX team. And he's starting to come to light जब here. गोटी टीम्स को क्या हो गया? गोटेश टीम्स क्यों बनती जा रही है? गोटीज. The buy here for Sentinels is tragic. SEN भाई जीत जा Try यार. and work the map a जीत little जा bit, SEN but भाई they've got यार. nothing done over at the B side. Ara is there with the op. They've sort of sniffed that out, I feel. Reno is still just posted up on this dark cover angle and knows he needs to get the hell out of here with his overdrive on the way. Is he TPing? Yes, he gets out just in time, but he TP'd into the relay bolt. Flickless though, sharpshooting. ले लिया भाई. Backside. And crucially, Bang still in play, so need a smoke to come back online for him. There's 30 seconds left in the round to probably cover up, yep, that spot in spawn. But Ara has had time to get here with the op. John, he sprays through smoke. Realizes Flickless is there for the taking, and Bang maybe doesn't know the lay of the land before he TP's in like that. Another 3 for John, but not enough for Sentinels. That's the 6th round to hand for Giant X. 5 राउंड 3 राउंड निकाल ले और SEN तो हो सकता है डिफेंस पे फेल देगी अच्छे से. On one right now. That is a very insightful shoulder peek for Grabinho. This just never should have been that close. 4 on 2, he gets the 2K just spraying the smoke. All right. Oh my god, bhai.
Hey, you gotta be feeling good here. भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही इंटेंट टीज कर रहा है भाई सैन को. Improved on Sunset. We're going to thrust down mid again. They're going for an hour and tears them to shreds. Sentinels barely get out of bed before getting clotheslined. Ara finally taken down, but once Sen cannot get 10 seconds into the round with 5 players wide. They just can't do it. कितने जल्दी mid control लेके उतना fail भी दिया भाई. That we've seen from them before, and no team seems to know how to stop them. It's just the combination of their initiator util, the push down mid, a push through B main. There's a fault line that comes through B main that canvases all of bottom mid for Aura to fight. And then there's that recon up top. It's just, they run the same plays and it just keeps on working. And here's a neural theft for John. Sees all of this at top mid. Trade ले लिया उसका. Second baited into that swing and तुरंत trade लिया गया है. Cloud was right there using that drone obviously. Which is good that he had support from Flickless for that instant trade. Zekin doubled his entire kill total in that round, Wyatt. He had a quiet outing up until this point. John has been making plenty of noise. This timing is going to hurt them though. Tell you what, that's value for ammo, isn't it? Flickless exits around with 3. GX 5-round lead. These guys really lock the map down. This is just where they're at their best. It feels like even if you prep for the rounds like this that are going to be thrown at you, it just doesn't even matter. Mid से क्या push करके लेके गया भाई वो तो. This is just what they are best at. Look at how all of that util is placed on the map so perfectly. And it's that fault line that comes from B main that just gets the entirety of bottom mid into lower tiles, which is even covered with a dark cover, so Aura doesn't need to focus on the left. He can just fight right. तीन के डब्बे में जा रहे. And in situations. Again a timeout by SEN. Second timeout by SEN भाई. Expect what they're assertive, they are proactive, and they are more than happy to get into the face of America's number 3 seed. Now Aura's picked up this outlaw knowing that everyone on Sentinel's just going to be on the light armor. He'll be controlling that B main side, and the rest of GX on account of that can really put the emphasis on stacking A together. Gravino here is going to be forced back, timing not quite on his side, but the paranoia came out enough to act as a relief valve. Flickless might try and work this angle with him. Not affected by the C's, but sprayed down as those bullets were intended for Gravino. That was very, very dangerous for Flickless. He was getting stalled up by those bullet tags, slow movement. This is crazy from Aura. He's all the way out of B main, holding the exit. So, okay. I mean, GX, they know where SEN are hitting. They know that they're going A. I mean, this is just breaking conditioning for Sentinels, who probably just aren't used to being in some of these positions. Ara, in no hurry to push off that. Full trust in the rest of GX to lock this A side of the map down, but it's to where push comes to shove. Zekin gets onto the side behind the box, but the aftershock came through. And Cloud swings for the fences. GG लग रहा है. 2 kills cleaned up. Now Ara decides to get a little active. Catches Zelsis out. Timing certainly works in his favor. And Westside will step in when needed. So many metrics there for GX. Untouchable. What's happening? Yeah, they really do a lovely job of just fighting together on the site when the hit comes in. And second getting stalled up in the back box. That was essential. अगर सेकंड स्लाइड मार देता डिफॉल्ट की तरफ तो शायद ओमन डाउन होता, फिर शायद कहानी कुछ और होती. Flanking out a B main and holding their exit. Yeah, that was somewhat important too. Just a comprehensively great round from GX, who are running away with their pick. Yeah. And Sentinels are struggling to adapt. Why they've not found a gear that suits them against GX. And Aura has actually kept this outlaw. Does have a few
125 HP targets. Zekken and John, though, they're the ones with armor. So John can have some confidence pushing into this. Much faster from SEN. They're going for that three-prong sight exec splitting from multiple sides. Stun आ गया उसको यार. Going to be dug in here, but Narrate steps up with a Guardian. They know, yep, Prowler confirms. West side in the corner and only gets his one. Stinger goes to work for John. And a Nightfall now to catch the players rotate in. 2 pings at Boba. Tells the whole story for Sentinels. This is a pace adjustment from SEN that GX were not expecting. Ooh. Crucial win from Gravino. Ugly stuff with a Stinger, but util in hand for when Narrate steps up to the plate. And now it's on Cloud and Flickless to make their way through a smoked out Boba. Money, damn good for GX, and it might be worth going for it, but they are caught off the site. Cloud wants to wrap around, has a lot to say across the stage so far this game. He'd love now to show some bite with the bark wide. Nice swing. And second down. Oh, Cloud might just be him right. Bang is all over the place, and Flickless is more than happy to how put him out of his ये misery. कैसे हार गए? Unbelievable retake from GX. It's Cloud भाई on He PP. gets that 1v1 against Zekin, ready for the swing from Narrate next. He is going insane on this map. That is really nice. Yeah, I mean, it's crazy. The desk touched on it. By far the most experienced player on GX. 5 years of play, and is yet only 21 years old. And has to be the leader of this team. And I love that we're seeing him give it back to Sen. Yeah. Oh, is it indicating we won a 2v3 against you, I think? Like Zelsis stood up सिर्फ after 2 राउंड जीते हो भाई. ये राउंड तो निकालो भाई सैन. just been given it to बाप him. रे. It's a 7-round गंदा map तोड़ between रही these है two भाई teams. गंदा. And look at how far back Sentinels are playing early. They're expecting some nonsense because Hunter's Fury. गेम में तोड़ रही, गेम के बाहर ऑन स्टेज तोड़ रहे हो. Not in that way. क्या लगता है सेन जीतेगी? डिफेंस में निकाल सकती है, बट ये वाले मैप में थोड़ा सा कम राउंड निकाले हैं. अटैक में कम से कम 4 या 5 राउंड तो निकालने थे, पर 9-3 कर्स एक्टिवेट हो सकता है. लेट्स सी. लग तो नहीं रहा जिस तरह अभी पिट रही है. एक्जी उनको गेम में भी तो तोड़ रही है, गेम के बाहर भी तोड़ रही है हर एक राउंड के बाद. वो क्लाउड हर राउंड के बाद तोड़ रहा है. कवर देखो आप, कवर देखो. वो फंस गया था फिर भी इसका कवर आ गया. यही तो गेम है. Spike is heavily within enemy territory and John has to stand. 10-2 हुआ है. 9-3 भी नहीं हुआ, देख लो. 9-3 कर्स भी एक्टिवेट नहीं हो पाया है. Set up to fault line through main. Off that, the Hunter's Fury gets significant damage through. Makes Sen scramble in their positioning. They have this double setup in elbow. वो स्टन, वो खुद के स्टन में स्टन हो गया फिर भी जिंदा है भाई वो. Honestly, the protocols have been incredible and so many different set plays here for G. यही है बाबू, कवर और ट्रेड की कहानी है पूरा गेम में, और कुछ नहीं है. अगर हम मर रहे हैं तो हमारा ट्रेड, इंस्टेंट ट्रेड लो तो उन पर प्रेशर बना रहेगा. वो ट्रेड नहीं आता तो फिर वो पोमा आ जाते हैं, फिर उन पे कॉन्फिडेंस चढ़ जाता है. उन पे कॉन्फिडेंस चढ़ जाता है तो फिर तो ये हो जाता है. बाय द जीएक्स बंडल भाई. थोड़ा सा वीपी दोगे? अभी खरीदता हूँ भाई, अभी खरीदूंगा. तुम जो बोलोगे ना, मैं सीधे पेरिस आके फिर तुम्हारा पूरा वो स्टॉल खाली करके जाऊंगा. बस पैसा डाल देना अकाउंट में. तुम बंडल बोल रहे हो, हर टीम के बंडल खरीदूंगा भाई. हर टीम दे दो भाई, अकाउंट में हर डाल दो. हर टीम कैप्सूल्स खरीदूंगा, हर टीम की जर्सीज खरीदूंगा, एक्शन फिगर्स होंगे, सब कुछ होगा. अच्छे वीपी वीपी वीपी. हाँ यार, वीपी ला भाई यार, खरीदना है तो. खुश कितना हो रहा है भाई, देख रहे हो. हाफ कितना अच्छा गाया, तो इज हैप्पी, इज सो हैप्पी. In many events, the blue wall, and
wow, it's excited to see them. Really beautiful. I'm also fan base, excited. right? Donc, on voit दुम 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 भाई इसकी जीन्स फट गई भाई, ये गिर गई थी भाई। ये आज स्कूटी वूटी से आई होगी भाई, रगड़ लग गई है भाई। भाई भाई कितना खुश हो रहा है भाई ये भाई, जैसे चैंपियन से जीत गई हो भाई टीम। कितने खुश है भाई, कितने खुश है। देख रहे हो जीएक्स वालों। भाई की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। है भाई, विंगू का टोपा भी आता है, देख रहे हो, विंगू का टोपा भी है भाई। आधी बस प्राइस गैस कर इस टोपे की कितनी होगी। भाई टोपा नॉर्मल टोपा ही है, कुछ स्पेशल नहीं है, बस विंगू का थोड़ा सा वो बना दिया है भाई। कम से कम 10,000 का टोपा होगा, मैं बता रहा हूँ। 10 से 12,000 देखा, 10 तो कम से कम तो 10 का होगा ही होगा, है नहीं भाई। सैन बंडल, हाँ वीपी लाओ भाई, खरीदने को तैयार हूँ, मना नहीं कर रहा भाई। जोन सी टीम का बोलोगे सबका खरीद, बस वीपी डाल दो अकाउंट में। एक हाफ बहुत वो गया, दूसरा हाफ एक्टिवेट हो गया है। They have so many crazy fast executes where all of the utility sequences भाई कम से कम 4 राउंड निकाल देता सैन, क्योंकि तुमने भी उनको 6 राउंड दिए थे और तुम 6 राउंड नहीं निकाल पाओ अपने सनसेट मैप को, वो भी तो धिक्कार है। And that's been hard to do with all this util slanting engagements in GX's favor. Big stack here of B main set up for Sentinels. That allows for West side to be extracted early, but there's Cloud standing tall. उनके एंट्री हो गई मार्केट से भाई। Towards that Boba area. And there's Zekin tucked in his corner. This is a pretty मेन छोड़ दिया, जबकि पता था ब्रिज की इन्फो है। Leaks finds Clouds, he gets around the corner, but he's gone low. was able to dodge that out. Now got into the sights. Oh. Spotted out by Flickless though. निकाल गया, नरेट निकाल गया। Flickless को ले लिया कोई। ये तो राउंड ही ले गए। कोई खड़ा हुआ? कोई खड़ा नहीं हो रहा। भाई कीबोर्ड क्या है? तुम उसका कीबोर्ड देखे? इतना सा कीबोर्ड है भाई। Last few bullets there from the right. Important round for him. Some confidence for the young gun wouldn't hurt. Second trying to keep the spirits high there. GX, no investment on this round too. Maybe if Narrate can collect a few kills, Sen could work towards an early nightfall. GX been pretty proactive here, getting some information about mid, but that tiles corner's been pinged already, and it'll be bang to take contact. Conversely for GX, if they can try to maybe round the world, get the orbs, they can get towards that Rolling Thunder early. They've been able to get Flickless the one so far. Economically, Sentinel's never really able to get in the game on the first half. That's evidenced by Zekin leaving it with 4 kills. Except for when they win the eco on round 2 and then get subsequently eco on round 3 and the economy is cooked. Pretty slow, very default coded look here for GX, of course. Hoping for something to be offered up by Sentinels, who are pretty patient. They're definitely more lean into the B direction. They'll have anchoring presences here, including John once more ready to shut him down from Boba. Prowler from mid. That's now cleared. GX basically contained buddies. Util usage are now hitting a paranoia as they try and get out of market. John's there. Low कर दिया है. Good damage. Cloud on the side. Somehow able to win these very unlikely scenarios, but Ara is contained by Bang. 5 bullets, brother. That's his freak, so to speak, and Cloud at 19. It's caught on the site. Bang knows he's coming and is trained on that corner. Still not enough to get down there. Cloud getting some pretty ridiculous That's 1v1 moments. Now the missiles convert on the pistol one. GX will be super happy with that. कोड दी ने कोड दी. They get the spike down, they get a couple kills. कोड and दी. Cloud, who's now one away from getting a Hunter's Fury. That's easily But going Sen to be जीतेगा. the first ultimate. वो जो भी हो भाई, जो ट्रोल किया गया है ना पहले हाफ, गंदा ट्रोल किया गया है. I think this team has drawn criticism from some of the attack side calling. चलो 4 राउंड आ गए. Less experience being pointed out, but
And this is not the start that we're looking for on the attack side anyway. पर Now अटैक we में get बहुत to see a गंदा little हगा bit though SEN of ने what's भाई. cooking, what's under the dome for Cloud. PRS की भी एंड में नहीं हुई थी. PRS की कहाँ हुई भाई? PRS जीती थी भाई. Fault line set up if there's going to be some aggression from SEN towards VCT पे भी कैमरे ऐसा लगते हैं ना. मेरे को देख के कोई बोलना मत कि दीवारों में कैमरा लगा दे. उन्होंने भी लगाया भाई. VCT लेवल में जब ऐसा कैमरा लग रहा तो सब क्या चीज है. बट एलेक्स की वजह से बच गए. अपना ही बेटा है एलेक्स. Now they can get more aggro with it, especially with that drone getting the हमने information. सिखाया उसको. Just bang the table. Fault line that comes out from Flickless just to stop SEN pushing up. They really don't have any deep elbow presence. Look at them pulling back on A entirely. पीछे पुश कर दिया भाई. SEN डर रही है भाई. SEN बच के है भाई. Don't really have information of top mid sentinels here, so at some point they're going to have. वो लोग इतना एग्रेसिव खेले हैं डिफेंस में होके. ऐसा लग रहा था कि अटैक में तो भाई GX थी. Honestly feels uncharacteristically slow right now for GX. Hoping that someone from SEN will maybe overextend that. First time our fourth round में ही था PRX तो अच्छी टीम है भाई. हार जाएगी अभी देखना. Waiting until of course some नहीं जितनी चैंपियंस. They get that fault line back up and now it's go time. On the side runs in and narrate first. It's going to be bang no credit. चैंपियंस नहीं जीतेगी तुम्हारी टीम. Of that dark cover and now the paranoia comes out late. Oh my god. Drop on narrate, but it couldn't have been more wrong. The raid eventually falls. Oh my god. For dodging that. For dodging that blind. They have been gone. Second timing hits the opening with the outlaw. Relay bomb might make things hard on the Boom. side. That's John downed. West side sharp as attack, folks. And Cloud. Cloud भाई का जलवा है. Become सही होगा आज का पूरा. Yeah, we've had 15 rounds of play, right? 14 rounds of play. That is an outrageous stat line. Thought it would be hard to beat seconds on map 1, but he might just do it. Yeah, okay. Yeah, some interesting classic moments as well. The first couple of rounds kept him in the game. I love how Westside repositions for those fights there. Dude, John goes wrong. Gets that kill on there. Cloud पेल रहा है भाई. Cloud पेल रहा है. Contact so we can swing link. बिना कुछ लगाए पेल रहा है भाई. Going from, you know, bottom of the table in kickoff stage 2 to literal world caliber should be studied. GX, it's unreal how they've come alive. And now we're finally getting to see what they're made of in this second map of the series. John has the trip set up for backside control. We'll see if they try to make their way out at all. Second, I know John does get that catch. Ara को ले लिया भाई. Still a lot of side control for GX. Now they are deep. They can anchor in the post plant. Grabinho very mindful of a sort of off-timing push out of Boba though. And Zelsis, he does have that full kit to get back in. West side, भाई ये तो brand है भाई. West side को इसका नाम बता रखा है. Harness Fury though, Cloud going to try and preempt this now and spots out Bang by the looks of things back towards spawn. John tagged out, has the dodge away. Some damage done. Sentinels are against the clock. Need to get in here. Stinger there for Zelsis. Looks like fault lines avoided by Flickless. He tries to get ahead of the game and so far not too shabby, but Zekin is up on the side and demanding some attention. Brought down by Cloud. And Narrate's got to step up in his absence. Does Bang. Flickless भाई. 12-4 for GX. Just dominant on Sunset. If SEN can't get it done there, they can't get it done at all on this map. It feels effectively over. GX just one round. GG SEN का भाई. No comeback. SEN have No all comeback. the initiator tools to get back in. Full kits used from both of them, and that's still not enough. Even then, Flickless not in the ideal position for that 1v1. Doesn't matter. Adjustment wins it out. Mental play from him. I feel like Haven is such a wild card map to look towards our third here. Sentinels have to have put in some extra work there. When GX get to control the tempo, they look head and shoulders above. QT आएगा, QT पिलाएगा. QT आएगा, QT पिलाएगा. QT आएगा, QT पिलाएगा. And it feels like the second they find some kind of advantage, GX just absolutely storm them in the round, and it is done. Their game plans on this map are just genuinely fantastic on both halves. It's going to work mid again. Pretty Oh. Second opts to go out, look for something. The setup was there for him. Yeah, cosmetic stun. उसको stun में ले गया भाई वो. That is crazy. 8 and 16. And now after pressuring mid, GX is going to go back, meet up with the rest of their teammates in B main and try to close this game out. Two pretty one-sided maps back-to-back if this round goes the way we expect it to. Some volatility's been introduced to this series.
Okay, TP there from Bagner, gets him set up in Boba nice and early. Johnny's in that corner, and Ara not able to fully clear it. Still suspicious, mind you. But John will have the drop on the site. Cloud with the plant now, going to be forced out of the cubby by that aftershock, and John's going to have to get active. Another side of the cage set up, he does not want to show himself, I get it, but Ara and Cloud already racking him up, and John eventually falls. Delta's pees in, gets one with a rolling thunder, will put him to bed, and Sentinels... GX Pickup SEN 13-4 भाई भी 13-4 हरा दिया गया भाई। तेरी आईडी ऑनलाइन देखा था मैं। हाँ ऑनलाइन है ना मेरी आईडी, यही मैं ही तो साइड में खुली हुई है। फ्रेबिल भाई थे ले 510 तोंपी थे लिए पंडला तोंपी थे लिए हमारी काजू हमारी कैस खेती कॉपी कैस कॉपी। मैसेज देख पहले पूरा, कौन सा वाला रेडी ऑनलाइन देखा था मैं। तू कब से बीजीएमआई खेलने लगा वापिस? अच्छा बीजीएमआई की कल परसों एक दिन खेला था, जायरो ट्राई किया था मैंने। एम ट्रेनिंग एम ट्रेनिंग अजुबा अजुबा मैडम वाइट Origin is in custom with 4 others. Meow Shiro भाई अभी भी राइट बडी दे रहे डेवलपर भाई। अभी परसों ही दिया, फातिमा जी ने दिया। बट मैं ग्राइंड चालू किया हूँ वापस बीजीएमआई है। वो मैं क्या बोल रहा था, फातिमा मर्चेंट जी ने दिया है, एरा को दिया भाई, चैंपियन के साथ जो खेलती है उसको राइट बडी दिया गया है रिसेंटली। हमें कब देगी फातिमा जी आके? हमें भी 50-60 की वॉचिंग दे दो। फातिमा जी आएगी हमारी स्ट्रीम पे भी, हमको भी देके जाएगी। फिर हमारे इसमें हायर डेव्स क्यों नहीं आते हैं? पर फातिमा जी डेव नहीं है। फातिमा जी का काम क्या है? फातिमा जी इज इन द मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट में है वो। सारे इन्फ्लुएंसर जितने भी वालों के रिलेटेड है ना, उनको हैंडल करती है। जिनको भी बिंग को लेके जाते हैं ना थाईलैंड वाईलैंड, फातिमा जी ही लेके जाती है। फातिमा जी on top. I got the Fatima Ji's Insta. वो तो दे ही सकती है, वो तो कोटी में राइट की है, और क्या। फातिमा सी कब आओगी? फातिमा सी Reloading. I'm out of here. Reloading. Let the killing begin. चोर आया चोर। Grenade. Focusing. नेड़ी कह दे। Jet's grounded. अरे हम तो 60 दिए थे, रैना को पे 41 दिए थे। Shocking. Okay. ये थोड़ा सा हिल देना भाई। भाई 60 अगेन। मैं डैमेज देता हूँ, ये लोग छूते भी नहीं है। एक गंदी टीम मेरी, मुझे ही प्रो बनना पड़ेगा। चैटोड़ी ऊपर मत कूदो, तोड़ देंगे हम तुम्हें। मेरा डैमेज ज्यादा है गाइस, मेरा डैमेज ज्यादा है, फिर भी ये लोग मुझे मार देते हैं। भाई मेरा डैमेज है भाई, मैंने डैमेज दिया सबको यार, सबको किल चोर की सबके आदमी 5 असिस्ट। हट अब देखो आइसु भाई बुलडॉग लिया है।
आयशु भाई is using bulldog. क्या ये अच्छी बात है? भाई मेरा गोली क्या है नहीं लगी, मुझे ये बता दो. अरे यार चेंबू आज की रात आ गए स्पैम पे. रो दिए तुम. वन 45 कितनी दूर से मुझे हेड मारा गया है गाइस. मेरे को करना था सेशन के साथ. दोनों 65 दिए गए हैं मेरे द्वारा और अभी तक अफसोस की बात यह है कि उनमें से कोई नहीं मरा और मैंने एक को ले लिया. मैंने नेड मारा लेकिन मुझे पील दिया गया है. Not ready yet. This is the technique. Not ready yet. राइट से आ गया. मैंने बड़ी कोशिश करी अपने आप को बचाने की पर मैं बचा नहीं पाया. मैंने 40 ही दिया है. तुम ऐसा ना करो भाई. पिकड़ा चिकड़ा मेरे को पीला भाई. Such a dumb retarded team, bro. Get out of here. Stealing sight. Coming through. Wait for me. Arey, I was in cover, baby. Then also I am dead. It's you and me. कैसा दिया मैंने अल्ट राजा मुन्ना की. मैं तो कहता हूँ अरे यार this ISO is always coming from that side यार. This is not road यार. I am तो operator matter bro. Behave please यार, behave. अरे this man is always seeking towards me bro. Cutting their vision. Oh, reloading. The Kaka has breaking the obvious me. You want to play? Let's play. Not ready yet. 5 kills left. 121 यार. What is this loading? Enemy kill.
Easy bots. Learn to play, you bots. Learn to play. How the game has been played. Please go and learn. Learn first. कितना toxic हूँ मैं. Su 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 su. Na 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 na. Ta ra ra ra. Ta na 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 ta ta. eh? ये क्या हो रहा है भाई? What the fuck is SEN coach doing? The hell, baby? What the hell? मैं कहूँ या ना कहूँ तेरे इश्क की है वादियों में शर्म है लो शर्म है कुछ है. Swing, no dark cover. Zekken wants to go in though off that recon. All right, men at the door. Zekken bypasses them entirely and then decides to get on out, drawing a lot of attention. And now they're going to make the dive here through garage. West side flattens Elsis all over him like moss on a rock. No chance for recovery. West side down. Side swarming with red. Enter हो गई ये C. Controller side पूरी हमारे. Now two players from GX ready to face onto Zelsis. He doesn't want to take that duel right now though. He can just take things easy, slow down. Coming. That paranoia doesn't hit Narrate, so he can stand a bit of first to the action. Not Grabinho on flickless again, surely not. It's the Polish player alone. Zelsis waits for him to step out into the sun. Still, a mildly furrowed brow for SEN's fans. That could have gone either way. That was an interesting little round. I mean, that's a pretty classic move on a pistol. Attack cover and be fake with your Neon who can get in, get out, pivot into the C split through garage. Drone tags on the west side, and then he's lit up back box. Cool. Has Zelsis shot? That's a nice part of having the Sheriff, though, on these pistol rounds, is that you can actually shoot through that default box. How does Grabinho put that quick two-piece together? Dangerous as always, but Sentinels at least get their pistol. That's what they came for. Nice little pivot. So we have this gamble sack from GX that is based on this paranoia from Grabinho. If there's noise long, going to throw that out, and three players are ready to swing. But it seems like SEN are probably going to be dodging that unless they go for maybe a late C split again. I don't know if Narrate liked what he saw off that recon. There was no Owl drone used on that C-long position though, so tough to spot this out. Yeah, imagine यहाँ से कोई stinger वाला आए, दो stinger वाले भेज दो, garage से वो दोनों को पट I think Cloud has kind of put the fear of God in them here about turning up in random places on those eco rounds. So SEN they have to spend that much more checking these random corners, clearing really thoroughly. Yeah, they've gone ahead and worked all of long, completely silent. After that, drone was early, second caught, but quickly gets that shot off before going down to the classic. No Sentinels on this A side of the map, and Zekken barely gets out of that one alive. Now though, GX are going to have to play the A side retake, always difficult, with nothing bought up. They do have all the breach utilities to spend, but the gamble stack does not eventuate. Zelsis even waiting on this late little wrap through. हमारे भाई इधर राउंड I have to है. say, it's tough for me to kind of rank भाई where इधर SEN राउंड are at है. with Haven in जैसे terms भाई of जा their किधर map रहे pool हो? right now. You know, map pool was something that Kaplan discussed heavily as an aspect of the game that they Oh my need to God. work on heading into these global events to नहीं जाना ना, actually इधर का get देखने a का trophy. And they played Haven twice in the second stage. It was against C9 and 2G in the regular, season part. They won both games, but just a very small sample size. So I feel it's very hard to evaluate where they're at the moment. For GX, they've had moderate success. They're sitting at a 3-2 record in stage 2. Beat Na'Vi a couple times here. सेल्सियस भाई को थोड़ा सा वेट करना था, उधर नहीं जाना था.
And I think also we've got to take this map into context of the rest of the series. What we've seen so far from GX when they get that lead, when they start to build up momentum. They look to be really good at just strangling you out of a game. On the defense side, we've not really seen anything special from them yet. No real set plays, but this is the kind of round where they should start to rear their heads. The Sentinels, of course, still have a Stinger Bulldog Outlaw in the round. Zelsis does fully invest into getting that Vandal. Early recon certainly going to be broken. Cloud taking the opportunity to spam through that standard A-long dark cover that SEN can use to claim this space easily. So far, and this is small sample size of rounds, सब ये देख रहे हैं कौन सब ये देख रहे हैं मैं ही देख रहा हूँ 10 TG अभी तो वेलकम टू द स्ट्रीम 10 TG और कौन देख रहा है मैं देख रहा हूँ विंग्स भाई देख रहे होंगे फाटू भाई देख रहे होंगे हैटरा भाई देख रहे होंगे क्लच देख रहा होगा हर्ष देख रहा होगा Will anyone actually be here in time to assist him, though? He wants to break the recon that might come in on that top left side, but it doesn't. It's just a drone, yeah. Okay, well, they've got presence, though. You'll notice that he's been joined by Grabinho. Plenty of GX players here now. They're going to be lit as they come around the corner. Zekin, no tracks back. And then Oi, down ho gaya Jacob. The guy's a little too quick with it. West side, backside, caught out. And Cloud, not inside. He is still making his way over. And has the unenviable task of making his way into C from defense spawn side. So GX are able to rotate everyone into back Cloud again. Arey, welcome to the Valtos fam. Membership आ गई है लाडले की. Push-ups लगाए. No push-ups. At the end there, Cloud even caught by Narrate. Lovely little kill, and is now just बहुत push-up लगा लिए. Push-up cancel अब. Bonus round converted for SEN. ये सब sponsor membership पे अब. थोड़ी महंगी वाली को तजुब दी जाए अब. Feels like they kind of try to overfight there, you know, with that double swing coming back default, and it sends patience getting into the site. It does pay off. Getting that recon thrown back sight after the drone had given them front sight. PTSD. That's a deep cut, John. सस्ती पुशअप पे जब भी तब अच्छी वॉचिंग आएगी तभी. नॉर्मल पे कुछ भी नहीं अब. Okay, so send it out. They work slowly enough that Ara's able to ये लोग गायब होंगे हम पुशअप लगाएंगे. नहीं पुशअप नहीं लगाओ डांस करो डांस. ये 40 100 पे कभी डांस थी 200 पे कभी डांस थी. लाल लाल सीधे लाल देखेंगे लाल. It's not been the case for them so far on Haven in contrast to the style that they had on Sunset. लोड ही नहीं आते दस्टी क्या करे. सब दे दिया लोगों को हमने फिर भी वॉचिंग नहीं आएगी सब क्या करें. हम भी हमारे दाम बढ़ाएंगे. Actually, GX more interested in trying to allot the correct number of resources to the site that they think SEN's going to land on, as opposed to trying to get early info pushes. They're not doing any of that so far. Again, the weapons don't really maybe allow for it. But they've made a gamble stack that looks unlikely to pay off for them. And honestly, that lurk wall over on the B side of the map will keep a few of them there. This game as well, I will say it's an interesting clash of styles with the two approaches here to Neon. Westside has made his way. It's this double controller with the Viper that has really been the trend in America versus the very classic approach to running Neon on Haven, running double initiator with Breach and Sova. And I think a lot of people do have concerns when they see teams picking Breach on maps that aren't Sunset right now. And I do think that's valid. But GX have shown a real proficiency with that agent still, where their sequencing of utility is really effective. Their timings are usually impeccable. Honestly, they're certainly going to have to be if they want to win this map against SEN, who are going to be at 4. I think the KJ choice over the Cypher is an interesting one to examine. The turret lets you usually on the attack side watch for any pushes out of garage, and lockdown is pretty awesome to force retake circumstances on that A side especially, which is so hard to get back into. But GX here don't really see any way to make an inroads on the map. Cloud always seems to just fare a particular way late in the round. No, it'll be GX perishing to the blast and hoping to hit the ground running in their second buy round. 4-0 हो गया है टाइम आउट आएगा. GX टाइम आउट लेगी. Finally stop this run of rounds the Sentinels have been on, winning both the pistol and the bonus. Obviously gives you a crazy advantage in the series. The economy has finally gotten to a place where Aura can pick up that operator. Okay. We definitely highlighted that on the previous two maps, how that is really a linchpin for this GX success on defense. Him just being able to control space somewhere so they can rotate
elsewhere with the rest of the players. Now it is a little tough at times when you're playing against this Viper. Having to deal with the wall does make the angles on A bit more difficult to work around. I definitely feel like the texture of the game changes drastically when Aura has a scope weapon in hand. When it's Hyper holding the seaside alone. Shock dart. Drone in first from there, right? Similar to क्या drone info ले पाएगा? नहीं लिया. Drone then recon has been the cadence. Backside, we're just gonna see some of those corners cleared, and Sentinels have seen or not seen enough. Yeah, they want to slow things down. The rotate has been drawn very fast towards C. They obviously saw GX willing to do that on a previous round when they sent that sequence of utility on the C site. So now they're going to maneuver their way elsewhere. I think this is some really good calling from John. This B site is pretty open. Cloud wants to get in there. Dangerous though. Yeah. Knew there'd be some utility to draw out, but Cloud overextends onto the side. It was ultimately a fake for SEN. Something that's been in their wheelhouse a lot in the past. GX though, convinced that was for real, and they get punished for it. Wow, they have just been baited into all of these angles. Aura is absolutely going to be saving this ball. ऑप ही सेव करेगा. Really excellent. पहले मैप पे भी पूरी ऑप ही सेव करी है भाई ने. Just activating that same early util on C to गया गया गया. QT पकड़ लेगा. QT पकड़ लिया. It's free, man. But then rotate, pivoting to B. But then after they're delayed by that aftershock, they turn around. All of those GX players who were drawn out, baited out, they collect the kills, pivot to C where they've left. Zelsis inserted deep. This was a really excellent round for SEN. And obviously a decent time to make the fake play on B happen. Still the GX, maybe that's something that also has come up to them in VOD review. 0-5. Is something that SEN likes to mix in. Just a point of tension in this game where टाइम आउट आ गया. GS की तरफ से टाइम आउट आ गया. बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस. Go SEN, go. Go SEN, go. Go SEN, sit, go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. कितनी खुश हो रही SEN है नहीं? पिछले वाला राउंड देखते ना SEN वालों की खुशी जो गई थी. पिछले वाला मैप देख लेते तो. You have the spike. I think we're going to get it mix now. that in, and yeah, I do think they're going to do it here with this half buy that they've got going. Now, there's no KJ turret set up to see this. Oh wow, so that's a recon paranoia with a stun from Aura into window. All of SEN though, they're stacked up towards this seaside. Site is going to be totally free. Yeah, him teleporting up top while Zekken runs in so they can double face back Site, but it is not going to be held by a single GX player. It is indexed in that mid play. Yep. I like the set play, it give a lot of map control over, allow to contain, but there's no pressure coming from C long because there's KJ util that can obviously read it as it comes. This round is as good as done. Nice read by Zekken by. On such low HP. Garage. Aura and Cloud. Don't have a lot to say about this round, I suspect. Just as likely to disappear in a puff of smoke. Set up inside garage. Bike around it. Zelsis bike around it. This. No one's looking in Zelsis. क्या शॉट मारा उसने क्लाउड ने उसको भाई. क्या चल रहा है? SEN और GX का मैच चल रहा है फाइनल डिसाइडर मैप पे और यहाँ 0-6 चल रहा है. SEN जीती हुई. SEN watch party without Bunny. Bunny would be in a hostel.
हॉस्टल में होगी बनी. I would think. At least the option to go for one. Maybe if, Cloud is one away from his Hunter's Fury, so that's the natural counter to the lockdown if he can get an orb somewhere. This time, Sen, they want to go very back towards a teleport cross from Bang, but he's caught. He's stunned. Okay, well, Sentinel's conditioned to a little more slowly around from GX and don't really see the mid pop from them in the previous one, so think they can still play in that fashion. And there's a stronger A fight from GX. I do like to see that. But this is a good response from Sen. They have gone so quickly towards this C side. Can GX flood in to support West side now? West side Tax gets the gaya. West side ले गया था तो यार. Too easy for the बेचारा को एक राउंड दे दो. Gets himself onto the board kill wise. John, not the timing would have hoped for, I suspect. And now narrate. Unsuccessful in trying to crack the C side open. Finally. अगर यहाँ साइड पर टेक डाउन हो जाते तो ये राउंड भी नहीं आता. It's that A fight, very aggressive. Fault line comes through, recon into lobby. It was on a round where Sen wanted to go for an A fight of their own. They are completely caught off by that breach util. And then GX recognizing that there was that fast pivot to C coming. Westside gets all the way deep towards plat. Gets the cages up, allows his teammates to flood. Let's get this. Let's get this. Let's get this. Example of how that util perfectly facilitates. And now look, they want to get aggro towards 1-6. Play from before the relay bolt, paranoia, and the recon. He's there in the second wide. Gara भाई ज़्यादा pump up नहीं हो गए. Just impales himself on his own sword by the looks of things, but there's that Hunter's Fury that comes off for GX, a big part of their early aggressive play. Zekin's got to get across the window, lucky to be alive, but could still be spammed down. As Corbino wants to push up outside of lobby. Chaotic early round. कुछ हो गया भाई. Sentinels down to 2. Yeah, Westside stayed fully committed out of garage, caught off Celsius, and now the neural theft buddy. Revealed these remaining two players at the 1v1. Second won that round, looking very different. A crucial pickup for Flickless. GX, they have to convert this. They got all the info. John can't get anything done outside of the purview of GX. They know it all. Now, those thin walls may be his undoing. Flickless wants to step up. John doesn't have the mechanics to answer. Yeah. GX up to 2 rounds. कम से कम एक तो निकाला था क्योंकि 2 राउंड आ गए, 4 की लीड बची है. Surge of energy coming into this team after an absolute drought. This is the play they ran on that prior half by. This time Sen were in the region they needed them to be towards window. It's that Hunter's Fury that Cloud throws in to get the trade when Aura goes down. Hits Bang as well, brings him to half HP. And they're pushing out of A, and they're pushing 4 out rounds. of Garage. That was only 4 rounds to level up. Exactly as intended. And Aura considered, they drew it up. Aura considered picking up an op a couple rounds ago. Opted for the rifle. The GX haven't really needed to play the passive line hold game. They want to brawl and do it again. They want to fight for this A lobby. Very hard. Gravino gets the first. He gets the second even. That's not where that came from. Zelsis was cut down in the corner there, and Bang is revealed, able to take 2. That's all it's going to get. Cloud को भी down कर देता मजा आ जाता shot in this round. Cloud चलो half HP हो गया है. Starting to dwindle. It's getting a little low for Sentinels, as this would be their 3rd consecutive round they've given away to the defenders. Don't have the spike. 1v2 again. Suddenly capture the pace of the 1v3 game है and take it भाई. over. Feels like these past 3 rounds have been faster than an entire buy round from the beginning of this first half. John here has to keep it simple. Not surging out in that long direction. Has to make a correction here for Cloud, and he's in mid-air. IGL seals up another round for GX. 3-6. Like he said after the first, 5 more to go. अच्छा Cloud इनका IGL है. Managed to cut this lead in half. 5 also the number of ults that Sentinels have coming into this next 5. But hell, they've had a lot of them for a while. They haven't even had a chance to use them because GX are just sending it on them. You think Bang is trying to find a way to play in response to this raw aggression from GX? But it kind of amounts to him cowering in a corner while his team gets mowed down, and him with trigger discipline able to take 2 and then not convert any further. Time out by Sen. Sen का time out आ गया.
ults. It's a good number. 3-6. One out. Strength of alone. Now look, GX, they haven't played it long. There's going to be a recon going in towards that seaside of spawn, fault line, relay bolt, Aura running it down, and John is just stuffed into that corner on account of the util. Pump up हो गई भाई, GX pump up हो गई. Reposition to. It will be not easy now. Pivot based on where that spike's been left. Zelsis needs to stay alive for this lockdown to be a factor in this round. He has to know Westside is playing close. Wins it out. That is an important correction. A flick to the head. That downs the enemy Cypher. Now does A-side starting to crumble. उस टर्न पे मार गया भाई तो. Emerges with 2 very important kills. That is going to put GX to the shot in this round. A real one now as Ara gets close, wants to challenge it. Bang, cannot keep up. It's too pacey. Headshot though, Dink onto Ara, doesn't. गारा डेल्ट वाला टेके जैकन ने क्यों मारा भाई, गन गेम से ले जाता भाई. The overdrive will claim the final frag. Second wanted to use his own ultimate, but while activating is just rushed down by Aura. He's lost it now. Who opens the round, closes it. It starts off another early round active play. This is just what makes GX GX and such a cool team to watch. John is isolated on that C side of the map. He goes shots, down. भाई. And then of course Sen feel like we just need to accelerate into Reflex. भाई वो स्टन में 2 लेके गया भाई. Massive credit to Corbino, by the way. That 2-piece he had. और जैकन भाई को नहीं पॉप अप करना था. नहीं करता तो इजी डाउन पे जा रहा. सारा को हेड लग गया था, टीम को गया था सारा. Map 1 Corbino, but he didn't let it get to his head. He has stepped up both Haven and Sunset. Some part of the map, Ara has been taking liberties for the last 4 rounds in a row, and it's no coincidence. 4 round सलग लेके आए हैं GX. SEN have also lost a little bit in that ult battery now. Still have a lockdown. They just have them now to get to the stage. अब ज़ारा देखो विंडो छोड़ गया भाई. विंडो आ चुका है. This won't spot Ara out. Honestly, this is an insane spot to be set up. उनके spawn घुस गया जा रहा भाई. This is crazy. There are 2 Sentinels players right now. ये गया. John, please! Oh, he just doesn't know what hit him. Narrate there under extreme pressure as well. Zekin trying to respond, but if Ara gets out here, this is masterful. He can just leave. Look at the A site, by the way. There are 2 Sen players in there. How has that happened? GX were fully expecting a seaside hit. But they're not going to get to cross for free. They've got to get past Cloud, and then final boss Ara is waiting there. सारा भाई पूरा राउंड निकाल के दे रहे हैं भाई. Look at the फिर विंडो आगे बढ़ गया वो. Time short, bang, deep into spawn. Ends up being a 1-for-1. They still need to get the spike to his side. They're going to be Ara, they can't get past him. Second slides in, and he takes matters into his own hands. Spike recovered, but a pivot, a wise one, across the map will send them to see info, but can sort of guess. Nice read by Zekin. Zekin has to stick this, no choice. Caught by the trip, doesn't matter. Going to get the spike Slide down. shot How do Sentinels position themselves? नहीं मारता तो वो मर जाता Zekin. Thrown on default. Yeah, GX, they really don't have an opportunity to break it, and Zekin wants to take the space that it's creating. Doesn't want to overpush there. Cam dealt with. Delsus also has to play a little bit slower. Yeah, now GX, they have to think someone could be positioned in garage right now. Surely. They're not checking for it. No one's... Okay, Westside is watching it. Will you see the barrel? Yes, wins it out. देख लिया. Oh, God, you hate to be in this spot. Has to play long. देख लिया लाला. 6-6 हो रहा मेरे को ऐसा लग रहा है. Corbino on spike and Zekin's not 100% sure exactly where he is. He's going to have this fight. वो उसी लाइन ऑफ फायर में आ गया. उसी लाइन में आ गया भाई वो. You've got to be joking. No one from GX can connect the shot. And Zekin sprays them all down. Jeez, they needed to come up for air though, didn't they? I mean, that's how this स्प्रे तो है. उसको लोकेशन नहीं पता थी उसकी प्लांट की, तो पहले इधर उधर मार रहा था. फिर उसको सोवा दिखा. फिर साइपर उसी लाइन ऑफ फायर में आ गया. उसी लाइन ऑफ फायर में पीछे से मर गया वो. Ever since round number 6. I'll take it. Not how I wanted it to happen, but I'll take it. Yeah, well, this can just be credited to the individual. That's just fine for SEN fans. Now they're still in that Hunter's Fury. Also, if they ever get to a post plant, which is मैं आया. ये राउंड म्यूट पे देख लो भाई. आ रहा.
John Grabinho, 32 points of health left for the Moroccan mastermind. He needs to step up. He sees the shoulder of the Omen, but Grabinho doesn't give him enough to work with. GX, get that pistol locked up. They needed it with absolute desperation, and they got it. Perfect timing window to get into the site. They got the pistol round. They were staying on A, and after enough noise cut, had to be concerned about that B side. The moment they leave, it's taken. Pistol round aa gaya re. Clickless posts up in hell with that standard breach util, that line with the, where you can throw the fault line into spawn. And by the time SEN get in, numbers are depleted, and all Grabinho had to do was even just waste time, and they would have won that out in the 1v1 clutch. Or, of course, with the Outlaw. Always has it that second round. And now, of course, we gamble stack. It looks like Westside and Cloud just down to Ghosts here to facilitate for their duelists. Equipped as well as possible in the early stages. The double swing potential here, as Narrate shows shoulder, but sees Ara coming. Might try and play off some of this util. And well, the Outlaw does his job. Just flattens these Under Armour targets. Westside, yes, that's nice. And lovely little shot. That aftershock good as well to push Narrate out earlier. Fault line comes through a little bit too late, but I don't think John will be getting away from this one. Now we call that taking responsibility for what we start. Bulldog basically chunked him down to minimal amounts of health. 6-8. ये round भी गया. ये round भी जीत will look गई. to simply exit the round, hoping to get some value. Even trade himself up. Never not shilling. You got to respect it. Also, the homage to Sufat BB, his quote-unquote boyfriend, as was discussed in the press conference. He was expressed some, regret that Wolves couldn't be present here. And I think seeing how they showed up in Toronto, many of us would feel the same. Just going to wait out to go down to the spike explosion, unless maybe Ara does go towards that B side. Nope, just going to run towards spawn. Hold up, wait. Potential for an orb. All right, makes it a noise. There it is, Elsis. Not too shabby. Nexus around with an orb. Ara down, but the Outlaw was given over to Flickless to preserve that. So no harm, no foul, really, if you're the attack side. We just saw some good util here from GX. Nothing unbelievable, but just the standard ways of getting players out of those angles into the open sight lines all works out. As clean as they needed it to be, they saved the crucial guns. And now on this bonus, we're able to buy up a rifle for Aura, Guardian for Westside. All things considered, not too bad of a bonus buy here. Cloud actually has the Outlaw this round. The solo A main player. GX were showing some real desire to get into that B site, but they slow things down. John forced away. There's a nanoswarm in the default location that would also slow them up. And trying to get some early util out of Sentinels is never a bad call. And you would imagine the alarm bot in that spot will often be broken by a shock dart from Cloud. That's usually the standard. Zekin does spot out Aura in Garage. GX are getting a lot of map control right now, but Aura goes down to Zelsis. Yeah, just to send try and get 3 players on C. They've realized that they need to get in that B direction, and that's nice from Zek and Grabinho's. Mostly been good for their first one in this series. Yeah, this is GX taking a lot of liberties on their bonus round. Going for some individual plays to turn the tides. Cloud going to be able to plant in this default spot, but now versus 5, what can GX do realistically? Only Bang and Zekin susceptible to the one shot from the Outlaw right now. And of course, play it safe. When you're retaking on this B side, that's where this Viper Wall can come in handy as well. It's just a natural smoke for main. Takes a hit for that. Toho wall bang. Through the wall. Flickless finds Zekin on the other side. Getting in from the garage side of the map. ये round भी गया भाई GX का comeback भाई. John says no more breach until no more breach, in fact. Down Flickless, puts Sen in the player advantage, but now they're going to deal with this setup from Cloud, and Bang was the only player not set up to deal with that. Defused goes Elsis, living dangerously and punished. GX का comeback भाई. With a pistol. GX is comebacking. Simply no way GX should be allowed to get away with a round win. 3 versus 5, they convert. SEN with better weapons coming into this.
I mean, ambitious little spam from there. वो wall bang में shot मार गया था उसको. Second peeks out. Celsius wasn't ready to be there for a trade. Little miscommunication. The Viper Wall's not in play because they're trying to fight out towards mid. You can't tell me your protocols for dealing with the post plan on B aren't 3 round सलंग जीत गए वो. I guess in a way there's some justice that both teams 8-8 incoming or not की लीड बढ़ाएगी सैन अब. सैन के पास यहाँ बाय नहीं है. एक और राउंड है 8-8 आएगा. Light armor gets you there. और एक ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं. I am a little nervous as a representative of the North American region. सैन के लग गई. Ara now with the scope weapon back to hand. He's already thinned out the herd of Sentinels players. Now we'll look to take that mid. Thrown down top mid from Bang. Zekin working his way forward, wants to close the gap with that stinger, of course. No one actually in this B site. Drone over top will confirm that. Bang got in. Aura wants to just draw out a little attention, a little spam, maybe find out if someone was hiding. Wrapped around the drone's view. This Gara spot's starting to become a little more relevant now, Wyatt. As is a commitment here by GX towards the B side of the map. Bang sees Zara coming a mile off and is able to down him. John, patient, collected. And he'll have himself a frag. Zekin now with that fast lane, trying to get in Grabino's direction. It's a bit of wayward, ham-fisted. And Zelsa's now finally on the wrap. But this spike's headed on to B. They are going to end here. West side though in a safe corner. Grabino has the line covered and Zelsa's only has a classic. This is looking terrible for Sentinels. The Celsius just no opportunity to upgrade that weapon. Flank from west side was perfect. Bang does a great job backside getting that first kill, and then Zekin hit a really quality relay bolt that connected onto multiple players. How many times has Grabino got a stunned kill, by the way, in this series? It's like the 3rd time we've seen him do that. Yep. Well, considering he only needs 1 bullet to kill someone. Yeah, just hit him in the head. Just don't miss. Yeah, the guy has been very resilient to any form of disruption. And GX, honestly, like a decent pivot after things start to go a little haywire at B. They don't leave the site. Just a little reposition. Little spam being exchanged. Cloud, if he can get this orb, is going to have the Hunter's Fury. So GX, they want to get that C-long control, smoke it off, make sure they have that tool. Ara with a judge here. And the overdrive, of course. Yep. So can just use both of them when he pleases. Aftershock to break a common turret position will do so. So that's some passive info But turret down would have had on B now removed. Yeah, now John has to watch it. Giving it to him. Okay. Ara says, well, that's maybe a little bit more than I expected. Sense down हो गया भाई. He's from the fast lane and plays. He's got no resistance to try to cover that weapon. Overdrive will suffice for him late in the rounds when push ultimately comes to shove. Now what is the move? Paranoia and breach. क्या ये GX जीत रही है? क्या GX बम्प अप हो गई है? पूरी कमबैक तो कर दिया उन्होंने. 8-4-8 था भाई. 8-8 हो गया. Garage. Zekin's got to take it up himself. And Grabino, he had that from the shadow, so he can use that paranoia on A. तोते लाल हो गए. So they have full ready to get in बाव का that भूत बोल रहा है. मैं ही बोल रहा हूँ. साढ़े might even be a second player. Maybe Westside goes बोल first. तो मैं ही रहा. मेरी ही आत्मा बोल रही है. अच्छा है भाई ये. वायर है लेकिन अच्छा खासा लंबा वायर दिया है भाई. लंबा वायर है भाई. आराम से मेरे बिस्तर तक आ जाता है भाई. अगर मैं टेबल मोड़ूं तो मैं पूरा बेड की तरफ भी लेट के आराम से देख सकता हूँ. मुझे टेबल मोड़ना पड़ेगा पूरा. तो वो बहुत टफ टास्क है. सैन की तो ने लगा दी. लंका लगा दी. लगा ही दी भाई. क्राउड सपोर्ट देखो तुम उधर. ये मैप अभी सैन ने डोमिनेट किया था स्टार्टिंग में तो बढ़िया लगा. वरना ये वाला मैप तो जीत जाएगी. फिर आगे लग गई. फिर कमबैक कर दिया और अभी लीड में आ गई XG अब GX. GX अब लीड में आ गई. सेकंड मैप तो उनने पूरा ट्रोल करा. अभी ट्रोल नहीं कर रहे. GX ने लिटरली सैन को ट्रोल करा सेकंड मैप में भाई. क्राई बेबी बोला है. पता नहीं क्या क्या बोला. रो रहे हो. सिट डाउन. पता नहीं क्या क्या बोल दिया भाई.
वो भी क्लाउड है, क्लाउड ने बहुत मारा उनको सेकंड मैप तो, और अभी भी मार ही रहे हैं। अभी उनका ड्यूलिस्ट पॉप अप हो गया है 11। अरे टाइम बम था क्या? Second was in garage, sure, but he's just smoked off. Can't do anything. Looks like GX are getting a lot of what they want here. The push up into Ara's position, free judge pick. It being on a killjoy of all people, which meant that Westside could actually, pull a player into garage further. बाकी लोग कहाँ हैं चैट में भाई? मोरिजिन कहाँ भग जाता है भाई? कहाँ मोरिजिन भग गया? कहाँ आग भाई भग गए हैं? Basically fully invested into this, not the best weaponry, not the best कहाँ मेरा मॉड स्लाइव भाई किधर है? Viper's pit to just control all of that short A side. And GX, they could just try to heavily index and fighting through long if they really want to get into A late into this round. And it does require the attention of a second SEN player to stay on A. Someone needs to be looking at long. John needs to know what's going on. Yeah, you can't play off the site now. So Narrate has to be back at A jump spotting for eternity, basically. And I understand that Sentinels do not want to have to retake the A side of the map, but like you mentioned, it can leave them a little limited elsewhere. I mean, look at how passively Bang is holding B. Only the Killjoy util on the C side, but there's going to be early warning there, at least for Zelsis, who's not offered himself up as a free frag early. Alarmbot spotted out. They're going to accelerate into this. I don't know if the Sentinels can respond quickly enough. We're about to find out. Straight to the Nana Swarm they go. जिन भाई गायब और क्या जिन भाई गायब हो गए? आग भाई आए तो वो गायब हो गए। ये अपना मॉड सारे मॉड गायब है। हटा दूंगा सबको मार से। ना स्लाइव भाई आ रहे हैं, स्लाइव भाई आए थे, चले गए। ना एफटी भाई आए, ना अब्दुल भाई आए। Every other SEN player also one orb away from ultimate. They could rip that, but Ara just gets confidence. Not allowed to swing into that as well. There's no response. Ara doesn't linger for long enough either way. Gravino in trouble though, getting hammered out by that molly. Flickless has to stand tall on the side. His teammate is on the outside. वो तो Demon Slayer देखने गए दोनों, सभी गए, अब्दुल भाई भी गए. Yeah, we're doing it again. Hunter's Fury. I mean, surely Cloud doesn't repeat the Zekin from back here. Doesn't quite have a bead drawn on the spike location. The smoke comes down. And also, when I said, oh no, it was because Flickless used the ult, but he died before it went off, so he lost it. Yeah. That is brutal. I feel like that happened to Zekin a few rounds back. And he tried to pull out that overdrive and died. Yeah, it did. But I mean, how it's more painful with the Rolling Thunder. Oh yeah. That is real rough for. मेरी दिल नहीं है वरना मैं भी जा रहा हूँ. वाह. I think that forced. Yeah, that forced. Demon Slayer का इतना वाह भाई. Yeah, he had a paranoia ready as well. यार मैंने लास्ट सलार वलार मूवी देखी थी शायद. Not too shabby from Sentinels. That's the round they needed. थिएटर ही नहीं गया हूँ मैं. Trying to make a GX play there for a second with Zekin pushing down bid, but not going to happen. 2023 से देखकर वो गर्मी. Over at A, so Sentinels don't have to overinvest in holding that site right now. It looks like Yezelsis मैं और is मेरी going to drift off नहीं pretty और ये early. चार दीवारी मैं कितनी दूर है मैं 2 साल से. A long is of course not going to spot anyone out, so they can definitely remain confident in just playing other sides of the map. सही फैन बेस बहुत है. Zelsis might be hoping for a lockdown mid-hit here to disrupt. वो तो है ही. Yeah, and with this Zelsis position, he's keeping the alarm bot online, and he's also in position for the lockdown if they need to retake on A. So मेरे को पसंद नहीं आती भाई. Playing over towards this C side, second back site. They might call for a narrate Hunter's Fury here from spawn. Second though, holding on it. Action figures और वो तक वहाँ तक ठीक है बस. Posters and all that. तो movies वो देखना. Now looking to anchor. This Hunter's Fury slows things up for GX, but they are committed to this site. And Zekin is more than happy to hear it. There's the step up from west side, and the anchors are down. Recon broken. Just trying to get back in while the Demon Slayer cover मिला है patch animation. Shock dart though, not enough to clear him out. Narrate is down as Cloud just finds the timing to leave that corner. The lockdown is going to give that control back to the defenders. How deep into the site can they get? Just going to come down to spam. That's how we have our expectations set. Yeah, Sentinels don't have a lot to disrupt. Util-wise, Cloud gets that recon back, and the fault line is up. Zelsis lucky to be alive as he's able to get away. Recon doesn't reveal Bang, so he goes for it again. But look half at the ही क्या half तो करता था भाई. Knows exactly where Bang is, and they're waiting for Zelsis too. पहले half हो जाता तो अभी easy पड़ता. Contingency accounted for GX. And an important conversion here, round number 19. GX had a really quality second wave fight into backside. He was here with Westside, with Flickless.
picking off that player towards Plat. Because initially it was Aura. He went in with one of those 10-9 ho gaya goes down babu. right away. Then there was a cage spawn. No one could flood. No one could help. Then they refight backside, claim the kills on the anchors. They force SEN into a bad economic spot. Look at what they've got remaining. Not very much. It's John with a hero rifle. He certainly had some heroic plays. He has gotten some pretty sick multi-kill rounds so far today. It's time to dig deep. If you're an America's fan. GX fans happy बहुत happy है भाई. Stinger Ghost. Second map में तो जो उछल रहे थे भाई अभी भी उछलने लग गए वापस. सनसेट कौन जीता? GX. और अभी भी GX लीड में आ गई है. अगर ये वाला डिसाइडर मैप है भाई जो जीता वो आगे. जो हारा वो लोअर ब्रेक है. Dangerous to anchor against it, Wyatt. But they are gambled correctly. 4 players ready to go here on this site. Did GX sniff it out? Did they see the second player there? I think they've had enough. Well, Sentinels, how long does it take for them to read this? Yeah, they don't want any of this site. They are out of there. Now with some haste moving towards C, totally empty. Going to be able to get it for free. Yeah, I mean, look, Zelsis is going to hear a fair bit of कैसे this. जा रहे हैं भाई? He'll know. सब लोग डिचुक. So might looking to wrap around. Full retake for Sentinels with Overdrive and a Phantom. Despite, unfortunately, having wasted that Breach Ultimate, the Rolling Thunder, a couple rounds ago, Flickless has made a lot of progress towards getting one for the end of this game. Could be used at a pivotal moment to close this out for GX, but right now they have to win this 5-on-5 retake. They have the better weapons to do it. So far, West Side's able to get clear of that paranoia, but Flickless was impacted. Here's the push backside. Ara, just the player you want to stem the flow of Sentinels players, and they get absolutely bloody trounced. GX just stuffed them in the choke, fighting together, swings from all angles, Overdrive, no value. Zekin has had no opportunities on this map to make anything happen with it. Not this half, yeah. No, he's played a trifecta of Neon games. His first one on Corrode was the best. But can he actually pump up हो गया भाई, pump up हो गया, pump up. Back in it, they're down 11-9. SEN, who we absolutely expect to be at Champions, versus a GX, who we still don't know how 11-9. And honestly, the work that GX have put in over the last couple of months is really showing fruit. No, we certainly get it now. Hunter's Fury from Cloud coming into that site, not getting any tags. GX will slow things down for but a moment. Relay Bolt, now Aura through. SEN have lost their re-clear info, though, off this overkill. And GX don't quite have the stall for the post-plant. No controllers up for the attack side here, and yet that allows Bang just to peer into the mix, see what is there. West Side served up. They'll stay in the site. GX more than happy to fight tooth and nail for this space they've claimed. It's going to be John looking for a timing for a swing. Again! It's these refights in the site where GX are just better. Now it's just Bang. Has to clear graffiti, but there's a crossfire Yes, from the he's drop. of course just better. Aura, but the adjustment isn't there. It's as you said, GX, they're so ready to fight together when Sentinels are coming in. They hit all of the shots. They no smoke. My no crowd is doing boo on SEN now, bro. Material edge in terms of util. It doesn't matter. It is straight up raw aim. It's Aura getting crucial kills. Besting Zekin here on this final map of the series. His Champions debut versus one of the best duelists we've ever seen on the global stage. And he's outperforming him right now on Haven. What a showing. 21-16. Outlaw to hand, Overdrive in the back pocket. Should have been required. Defense में एक round आया SEN के पास बस एक round. Sentinels have languished, and that's putting it nicely on this defense side. They try to push Zekin down C. और वो सारे round लेके गई. 4 round थे बस. 4 round थे. 8 round निकाल गई है वो. This execute 8 round GX. Flickless just one orb away from getting that Rolling Thunder. Narrate on the angle. Gonna get a lot of action, and then once again steps up. A bit too much action than he hoped for. Bang is committing to the backside anchor. Pinged out. No, he's there. He's cut down so easily. It's on second again. 2 kills will have to be enough for John and Zelsis to put it together. दो तो निकाले. On the lurk, isolates John. एक ही बचा अब. GG. Miles away. Only has the GG भाई. Zelsis भाई. even has the Rolling Thunder on account of the plant.
This one is as good as done. Not the auspicious opening that SEN City were crowd hoping dekh rahe ho tum, for crowd. as they took to the stage here in Paris. But it's much the same fashion that they'd limped out of America's playoffs with question marks over the map pool, question marks over the individuals, question marks over the postseason prospects. But now we have an answer. At least for now. Up against a GX team that finished 7th, 8th in kickoff, 9th, 10th stage 1. They bring in all off your feet. Flickless, and they've just won their first game at Champions. And it just turns out that Sit down. in this parable, Sentinels completely neutralized, often disrupted, set off balance by these aggressive push-ups. लग गए भाई, सैन के तो लग गए, सैन के तो लग गए गुरु, लग गए। लग गए सैन के। आगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कहूँ या ना कहूँ, लॉल भाई। थ्रो किया पूरा, सैन हुआ नहीं उनसे भाई, थ्रो क्या किया, हुआ ही नहीं उनसे। वो पूरा एक कमबैक के बाद उनकी पूरी मोरल ही डाउन हो गया उनका। इतना कौन हकता है, बहुत हकते हैं भाई, तुमने देखा नहीं है कितना हकते हैं भाई, कितना। हाँ ये तो कुछ भी नहीं था। से दो तो काजू कतली डीएम खेल लिए। आगाज हर कोई करता है, यस। सैड नीड टेंस ना, टेंस था तब भी हगाड़ी बजती थी, टेंस ने क्या ही कर लिया। By the way, Demon 1 is coming back. Yes, Demon 1 is coming back. भाई बात है, हाँ। एटलीस्ट एक होप तो थी, होप तो अभी भी शायद इतनी कोई खराब टीम नहीं है। होप तो अभी भी थी भाई। अभी क्या चल रहा देखो, इवेंट डिटेल्स, ब्रैकेट्स। अभी पीआरएक्स जीती, पीआरएक्स इधर आ गई है। अब इसमें से जो जीती जीएक्स, अब जीएक्स आएगी इधर, और लोअर ब्रैकेट का जो होगा वो आएगा इधर, एडवांस टू प्लेऑफ्स। अब इनमें से जो जीतेगा, पीआरएक्स और जीएक्स में जो जीतेगा सीधे एडवांस हो जाएगा प्लेऑफ के लिए, और हारने वाला इधर आएगा लोअर ब्रैकेट में। और इनमें से अब एक्सएलजी तो आई गई है, अब हार के सैन आई है। अब एक्सएलजी और सैन का होगा, वो जाएगा इधर, तो इनसे हारने वाले से मैच करेगा। हे अननोन, हेलो कैंची, वेलकम टू द स्ट्रीम। ऐसे सारे ग्रुप्स का है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सबका ऐसे ही होगा।
ऐसे करके प्लेऑफ्स के लिए जाएंगे सब। आफ्टर दिस जैसे अभी PRX हो गई ना और अभी GX जीती तो अब इनका मैच है। इनका जो जीता वो डायरेक्ट प्लेऑफ्स के लिए, और जो हारा वो जो SLG और सैन का मैच होगा उनमें से जो जीतेगा उनसे होगा उसका, फिर वो प्लेऑफ्स के लिए जाएगा। उसके बाद प्लेऑफ्स के अलग ब्रैकेट से बनेंगे। मैं ठीक हूँ, आप बताओ हु कैन ठीक है। ऐसे ही सब करेगा। आफ्टर एवरी ग्रुप्स प्लेऑफ्स उसके बाद अलग ब्रैकेट्स बनेंगे, फिर अलग से आप पिकम्स बना पाओगे। अभी तो ये ग्रुप चल रही है, फिर प्लेऑफ्स के लिए अलग आएंगे, फिर अलग अलग पिकम सबके बनेंगे। Foxy Sama is in deathmatch, playing deathmatch alone. Foxy Sama, good, bad. इतना लंबा ही रहता बाबा। 5 अक्टूबर पूरा महीना चलना है भाई। 5 अक्टूबर को खत्म होगा फाइनल, 5 अक्टूबर को है भाई। अच्छा है। ओहो, टूटी हुई आवाज आ रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे आपकी फालतू। आवाज टूटी आ रही है। आपका नेट बीटी दे रहा है आपको। रैंडम ग्लिच है तो इसका टूटी हुई आवाज आ रही ये विजिटिंग नहीं दे, ये है। मेरे विजिटिंग पास देख की लिया टूटी मैं। हुई आवाज आ रही है। क्यों बनी सिंह बीसीटी नहीं देखती क्या? मुझसे इतना ही प्यार था। बहुत। Match found. और बताओ चैट, क्या हाल है चैट के? चैट वॉच पार्टी में सो व्यू मिलती है मेरे को। Warm up. गंदे लोग। हाय आप। ओह माय गॉड ग्रूटी, I fucky. Then also you are alive. कुत्ते रे कुत्ते। अरे यार नीचे आ गया। मुझे आपकी टूटी हुई आवाज आ रही है, आपको मेरी? यस। I am the only one. Oh fuck you all. 110 था भाई। ना रे ना। We need one. I tried my level best, but Fight. I am everywhere. Give in. No more. oh my god, I gave a body to him. Where are my kiddos? Na la na. 3 killed. Lala. Killed. Dominating. Thank you. बेचारी तोड़ दी बेचारी। Be gone. Disappear. बेचारी है।
हमारी आवाज अभी भी चूती है. चूती हो तुम चूती. अरे यार स्टैंजी. भाई ये सब आपके गाना. My how. I'm really sorry. Pachpan, I also given Pachpan. Why I am only the Pachpan? Oh my god, again Pachpan? He given me body. Oh my god. He's giving me body. Oh my god. He's healing dueling. I'm not healing dueling. Angle पकड़ के ही मारना है के लाडले. Removed. Chiamti दे दूँगा chiamti. Silence. शॉट तो थे लाला. Ten kills remaining. Again 55. Why this man is giving me sound or like this? Is Spirit just preying on me? Five kills remaining. अरे यार बादी बादी. Why? One kill remaining. एक सौ पाँच. Why 105? उनको एक मिला नहीं तो टॉक्सिक होगा. अच्छी आई भाई तुम्हारा एक निकाल तो सब क्यों कर लो.
Tutti, 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 frutti, frutti. Ta 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 ta. कोई है ही नहीं हमारे पास तुम्हारे सिवा कुछ तो कहो तुम ना आधी है कि भाड़ू रहता है मेरे पास आधी आधी तुम तो हो क्यूटी Match found. Where are the other peoples, guys? Where are the other peoples? Swifty, Swifty. खेलेंगे हम तो पुकड़ी पुकड़ी जेटुड़ी खेलेंगे जेटुड़ी मैं कहूँ या ना कहूँ तुझसे ही मेरा हूँ ना 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 मेरे तारा तारा भाई एक स्विफ्ट प्ले गेम में इतना टाइम लगता है मेरे को नहीं पता था रे देश को नाम से कौन स्पोकन है भाई के भाई ने देश कोड बुला लिए मुझे क्या बोल रहे हो कुछ नहीं समझ रहे पूरा टूटा फूटा ऐसे लग रहा है किसी ने माइक जाट भाई तू को वैलोरेंट में आ जा भाई बस आ जा क्यूटी वैलोरेंट में आ जाओ डॉजी हो गया आ जाओ क्यूटी 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 काजू भाई क्या कर रहे हो काजू भाई Match found. बीच के अपने वाले किसी ने मिला के आज मैं तुझको ही पहनूंगा सनम आवाज तो ठीक है बेबी यहाँ ठीक है वहाँ पे पता नहीं क्या ग्लिच है हाँ आपका लैपटॉप ही ग्लिच है वहाँ पे टूट गई है टूट तो जिंदगी ही गई है वाह वाह क्या वाह वाह टूटे सनम ऐसे काला आदमी खेले जाट भाई खेले काला आदमी बता एक्शन फिगर काले का अच्छा रहेगा या फिर जेट का एक्शन फिगर दोनों ही अच्छे लगेंगे जो विसिडनी एक ही आ सकता है ना भाई 25,000 का जेट एक का जेट का बढ़िया लगेगा कि फिर तुम दोनों को देखे हैं तुम दोनों के देखे हैं देखे अरे सामने देखो कौन आया पता है मुझे वो तो दोनों देखे तूने नहीं दोनों को देखना मेरे को फिनिक्स ज्यादा बेटर लगता है Be careful with my secret, Cypher. It is better, I think, if we stay friends. छी आते ही कैंची फैन के टका कैंची करने लग गया एक्सपोज कर देता है मेरा थोड़ी ना नाम दिखेगा वहाँ पे मेरा तो दिखता है मैच ये क्या चल रहा है स्विफ्टी लग गया हमारे बिना स्विफ्टी On my mark. आपके बिना स्विफ्टी
Out of charges. अरे क्या ये हाइपिंग जा रहा है बीच में? So close. पीछे जाएगा एक्स्ट्रा आएगा। देख रहा हूँ। One enemy remaining. कुत्तरिया से वॉक कर रही थी। आपके पास तो अपने घोस्ट है ना? कहाँ पे मरे आप? बताना। मैं यही मरा हूँ। शेरिफ ले ली। अरे यार। यही लेनी पड़ेगी तुम्हें। Focus your hate at the end. मेरी घोस्ट तो यहाँ पड़ गई। शेरिफ मैं आके मरा यहाँ। काजू भाई को इनवाइट कर दो। काजू भाई नाम है। Sorry my darling. काजू भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो यार, फिर टूटी आवाज आ रही है। Fuck you. Knife deployed. One suppressed. Grenade. Flash. Spike down A. राइट पे बैठा हुआ है यार। केमपुर। Last player standing. क्यूटी मार गई। क्यूटी से मर गए। छी छी। That's mine. Don't get shot. Human brains are hard to replace. नई वाली गन डली ना? है ना? Does anyone have funds? सब बढ़िया। Reload him. इसको अभी तक नहीं पता कि मैं हूँ। So dead. Who the fuck are you people? Knock him down. You are mad. रुको। इतना तो पीक ले लेते बेबी। चली गई वो पीछे। एक इधर है। One is linked. Here. मैं इधर। Spike down A. Well, I need media. Teleport's ready. I have retrieved the spike. That works. One is linked. चलो Spike down A. I have the spike. They found my trap. More. Watch your eyes. Why me naga match? Teleport's ready. Plant the spike. 30 seconds left. Spike down A. One enemy remaining. Main. Careful now. Amen, bro. Amen. Spike planted. Reloading. The card elbow. Last player standing. वापिस पे चली गया ट्रैप तोड़ के। छी। मैं तो क्रॉसर देख रहा हूँ भैया, मतलब कैसा है? हाँ। Michael. Last round before the switch. Please stop. Buy the best guns you can. देना। रिकॉन दो यार। रिकॉन है ना? रिकॉन दो। Kill me in that. Does anyone have funds? Does anyone have funds? Kill me in that.
मेरे ला दो उसे तुम भाई मेरे ला दो उसे तुम मैं कौन ला रहा है यार Too slow. मैं वैसा बंदा हो ही नहीं अरे एक एंगल देखना वाह छूतिए Do better. Still inside. Spike down A. रुको हटो Spike down A. One enemy remaining. I'm too far. ये तो crazy मार के गई कुछ Okay, quick break. But will be blind. Switching sides. Everyone's motor functions okay? AM बोलते हैं I know humans चैंपियन नहीं get tired. बोलते मैं doing क्या Does anyone have funds? सबको खोलते My cutie गोश्त दो यार तुम क्या कर रहे हो कर दोगे गोश्त दो अरे बाप रे Does anyone have funds? रुला के छोड़ोगे भाई उसे आज तुम सोलो नहीं है ना कौन है तो आपका cutie नहीं ऐसे लिखो अरे आप मुझे चीट कर रहे हो ऐसे लिखो Are you cheating on me? Spike down B. वाले फ्लैश के वाले ले गया फॉक्सी अबे लग जा भाई लगी नहीं भाई जो हगाड़ हो गए स्कोपिंग खोल के कुतरा डेडलॉक क्रेजी मार रहा है भाई ये बंदा क्रेजी Let us see what they have planned. Out of charges. अरे इसने अच्छा मारा अभी खोलते हैं ना उसकी धोती छह गोलियां कुछ नहीं लगा Who will I spot first? No one is on mode. Here. स्मोक है रुको एक ऑफ एंगल करते हैं यहाँ से टाइट एंगल अगर आई तो पीक की गई पीक ही नहीं देगी भाई देखना ये देख खौफ देख रहे हो कोई पीक ही नहीं देता है सेज लो है भाई अरे लोग क्या भाई ऐड दिया भाई मैंने मेरी मैं देख ले ऐड में मैं देख भाई वो तो सही है मैंने तो डैमेज दिया उसका क्या ऐड दे इसकी सॉरी माय लव I find them I kill them अब मेरे अलावा किसी और के साथ दो मत करना स्टार किधर गया बैंक के 8 के बाद 8 में ही है भाई 8 के बाद क्या हाँ तो 8 के बाद जब शिफ्ट दबाओगे तब मेरा तो कर मीडियम बैच
नेट जा रहा है यार मेरा। Here. Spike down B. स्पाइक इधर है देखो। नाइस। मेन ही आएंगे। एक मिड है। मार सारे Teleport's ready. एक लिंक आएगा। Last player standing. 80 है लिंक। अच्छा आप ही। One enemy remaining. 80 है वो डेडलॉक। Spike down B. इसके नीचे। How do I get away with these things? Sorry, my. Match point. Chamber, man, consistently consistent. दो मेरे को। माइकलो। क्या दो? Does anyone have funds? Vandal. भाई। अरे यार ऐसा कैसे हो गया? इस बंदे के बाद तुम तो ये तो प्रीलोड बीस्ट फोन है। चल आओ। चल आया बड़ा माइकलो। Spike down A. आओ आप यार। आपका ही इंते। Hostile remove. Reload. My territory, my rules. A. One enemy remaining. अल्ट तो था भाई का। अल्ट में चिंची कर दी। One suppressed. It's a shame you had to die. Defenders win. आजो भाई लो। Crazy. काजू भाई इधर ही बैठे हैं, कब से देख रहे हैं। काजू माय लव, आप कैसे हो काजू माय लव? अरे ऑल चैट पे बोलो क्या कर रहे हो? हेलो काजू भाई, हेलो माय लव, काजू भाई माय लव, सुन रहे हो? अजी अजी सुनते हो काजू भाई? बोलो बाजू में कैसे हो यार, कैसे हो? ना डीसी आओ, इसे डीसी बुलाते हो तुम, ठीक है। फॉक्सी समा, हेलो 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 बस भाई, बढ़िया शर्ट भाई आप बताओ सर। वुंड टूट गई है इसकी, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है। अरे मेरे को सबकी आवाज वैसी आ रही है। नहीं आ रही और मेरे भी ऐसे अच्छा जा रही है भाई। सबको। ऐसा क्यों? वैलो ग्लिच में। इतने प्यार से बात करने के बाद भी आप ऐसा बोल रही हो, गलत बात है कैन जी। डिस्कॉर्ड है मैं ऐसा मत वो करो उधर ही मेरे बैठे हैं। साथ। इतने प्यार से एक बात करिए, हम तो चाहते हैं आप आओ, प्लीज आ जाओ, मुझसे दूर जाओगी। हेलो हेलो बाय बाय, कैन बाय मत बोलो मुझे, कैसे हो आदि? मुझे हर्ट होगा। एकदम बढ़िया आवाज भाई। आप बताओ कैसे हो? बाऊ आज हाँ। बहन चोद दीपू के साथ गलत हो गया, बात मत मैच फाउंड। क्या हो गया दीपू के साथ? मैं और वो कर रहे थे बकचोदी कॉम्बी का, हम ना वाइस और तेजो लेके कॉम्बो बना के क्लिप्स निकाल रहे थे कॉम्पी में। मैं और वो, ठीक है, मैं शाही पनीर से था, वो ये वाली आईडी से था, नोन एस 20 से था। हाँ। भाई एक मैच लगाया हम, लिटरली 9-3 किया हमने एक हाफ में। और फिर हार गए। हमारी टीम वाले स्टार्टिंग से गाली पे मारने लगे हुए थे। क्यों? रीजन क्या? हम दोनों वाइस और तेजो एक ही साइड हर बार खेल रहे हैं और कॉम्बो कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम, इसलिए जीत रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं। साथ में खेलो, उससे दिक्कत है। हाँ,
गाली पे गाली दे रहे हैं, गाली पे गाली दे रहे हैं। मैं था 20 किल के ऊपर। हर एक राउंड हमको वो नेट किल मिल रहा है, ठीक है भाई। वो लगी हुई, उसने एक वर्डिंग गलत कर दी, माँ मर जाए ये वो टाइप। भाई हमने थ्रो करना शुरू कर दिया, उसमें एनिमी में दीपू था, जीत गया। हमने कहा चलो बढ़िया है, जो थ्रो करने में भी हमारा ही फायदा हुआ है ना। फिर उसके अगला लगाया हमने, वो थ्रो किया, उससे अगला फिर हमने सीरियस खेला मैच। तब बस ये था डिफरेंस कि हमने उल्ट कर लिया। उसको मैंने कहा कि मैं क्लोव खेलूंगा, वो कहता मैं सोवा खेलूंगा, है ना। खेला भाई, उसमें भी सामने दीपू आ गया, हमको पता नहीं। उसमें 11-0 हमने स्विच आउट किया डिफेंडिंग में, 11-0 11-1 है ना। फिर उसके बाद अटैक में थोड़ा बहुत बकचोदी हुई, 13-7 एंड कर दिया। फिर उसने डाल दिया मैं हूँ। दीपू इज लाइव भाई, दीपू इज लाइव। उस गेम में पता नहीं मैंने 25 या 30 किल किए, है ना भाई। दीपू भाई ऊपर आ रहे हैं। नहीं यार, दीपू से इस बारे में नहीं करते हम। मैंने उसे बता दिया, उसे मैंने बता दिया। हमारे इसमें भी तो आता है एक बार, अब तो ओटी लेके गए थे। मैंने कहा मेरे को बता तो दिया कर। उसको मैंने वो आईडी दी हुई है शाही पनीर वाली, खेलने के लिए एक बार। तेरे को नाम फिर भी नहीं याद, मेरे को बता दिया कर। मेरे को टेक्स्ट कर दिया कर। मैं थ्रो करा दूंगा या कर दूंगा, टेक्स्ट कर दिया कर। जो इतना गलत हुआ ना उसके ऊपर से। मेन चीज पता क्या, रैंक मैच था उसका। बाप रे, एसेंडेंट का पता नहीं, डायमंड 3 या एसेंडेंट ऐसे ही कुछ। डायमंड 3 था शायद। डायमंड 3 है तो एसेंडेंट का होगा। Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. भाई मेरे को दुख हो रहा, मैंने कहा बहनचोद, बहनचोद क्या है यार, अपने बंदे को जितवा के बाद में अपने बंदे को हरवा दिया। उसके बाद और क्रेजी शिट हुआ, वो सोलो क्यों गया, अगले मैच में उसको लाइव पे देख रहा था। वो अकेला बैठा 18-20 किल पे, बाकी टीम 8-9-10 और हार गया वापस। ऐसा ही होता है सोलो क्यों में, कुछ ना करो तो जीत जाओ, बेटर है। क्या नेड देखोगे? बहुत लो है ये देखो, ये देखो। वापिस आ जा भाई प्लीज। ये क्या था? सैचल ऑफ द ईयर भाई। One enemy remaining. Spike down mid. फिर उस मैच के बाद ना उसने कॉपी छोड़ के स्विफ्ट प्ले खेलने लगा। अरे नीचे कर। मतलब वाइड पक नहीं करता, स्विफ्ट प्ले खेलने लग पड़ा। फिर अब चेस खेल रहा है। अब चेस? बाप रे दीपू, मैं दीपू से बस पूछता हूँ, दीपू चेस क्यों खेल रहा है? अरे नहीं रहने दे बहनचोद। Reloading. दीपू भाई चेस क्यों खेल रहे हो? रहने दे बहनचोद। कॉपी क्यों नहीं खेल रही दीपू? Can I get a drop? आना प्लीज E4। आना प्लेस की स्पेलिंग, आना प्लेस की स्पेलिंग उसको पता है पर उसकी चैट को नहीं पता, किसी को और कुछ किसी को नहीं पता। तेरी में तो अपने ही बंदे हैं इसलिए मैंने बता दिया है यहाँ के। दीपू भाई भाई ब्लाइंड हो गया है। Spike down A. सैचल करता है ले उसको। बढ़िया से चला भाई। कुछ काजू भाई तो पेल ले भाई। काजू भाई का माइक नहीं खुला वापस यार। काजू भाई कहाँ बोलते हैं? One enemy remaining. वो धोती खोल दे। Last round in the काजू भाई half. धोती खोलेंगे ना।
तो सब कुछ मिल जाएगा। एयर कंडीशनर है अभी काजू भाई। इसमें कौन सा वेंट लगा भाई देना? हाँ इसमें कौन से वेंट ले देना? बंडल नहीं है इसमें, फैंटम है, यही बंडल है इसमें और शेरिफ है। देना तुम नॉकटर्नम देना। देख रहे हो इसमें ये बंडल और शेरिफ है बस। They want more of me? ओह क्रेजी भाई। हाँ ले ला आदि आईडी ले ला बढ़िया पे। ना भाई ले ला आदि यार, मना नहीं करेगा आदि भाई, ले ले। मेरे को गिफ्ट कर दो। गिफ्ट नहीं हो पाएगा आदि, गिफ्ट आईडी गिफ्ट हो सकती है, गिफ्ट नहीं हो पाएगा। लो फिर आईडी गिफ्ट कर दो भाई, लो ले उसको ले और क्या भाई, इमॉर्टल आईडी गिफ्ट करवा रहे तेरे को हम। अब कुतरिया पीछे से मार गया। वेले भी है। Last player standing. Coming through. Gotta go. सुपर नो तो मैंने मारा। Switching sides. कितना तूने मारा? नो के दिन ने बहुत प्यारा डैमेज है भाई नो का, है ना? नो का डैमेज मारा कैसे तूने? टैरेट से मारा? अरे नहीं मैंने नेड मारा था, 3 बंदों पे लगा था वो नेड। अच्छा मैंने कहा शायद तू केजे का टैरेट है, इतना कम डैमेज दे रहा है। केजे का टुटुप वो भी ज्यादा देता है केजे का टैरेट भी। हां मैं भी वही कहने वाला हूं, इससे ज्यादा देता है टैरेट। I need a drop. 10 का देता भाई टैरेट पे। देख ले बहन जो उतनी वैल्यू नहीं है तेरी। वाह भाई क्या नेड बनेगा रे तू। एक जमाने में क्या नेड हुआ करता था। काजू भाई का ब्लाइंड तो है यार। मेरे को लगा मैं मैप के बाहर जाऊंगा। उसके पीछे गया मैं छोड़ गया। Reloading. Yikes. मम्मी। One enemy remaining. बच गया भी। Reloading. अरे भाई तो ऐड है भाई। ये मोंटी और मिल गई तुमको। यस Sebastian. योरू भाई साहब ने दांत दी थी, गिरी पड़ी थी। भाई मैंने वापस सेंसी चेंज की हुई है। अब कितनी कर दी? मैंने अब कर दी 1600 पे 0.3। Oh my god. 0.1 से 3 कर दी। I got the spike. 1600 पे। Reloading. हाँ। ये नॉर्टे की सेंसी है। 0.3 कितनों की सेंसियां याद करके बैठा है। याद क्या करना, अब तो पता ही थी। अरे यार नोट चलता था। Spike down A. Last player standing. Come on काजू भाई। Oh my god. Avengers assemble हो गए थे। Avengers assemble हो गए थे। इंटरनेट बन गया भाई। हवा चारों तरफ से उड़ उड़ के आ रहे हैं बंदे। Oh my god. ए भाऊ अच्छा आपको काजू भाई यू हैव जज। अभी तक कुछ केस नहीं हुआ, तो जरूरत नहीं पड़ी। Hit them when they're not looking. अच्छा टेक्सास मांगा नहीं होगा अभी ना, तभी नहीं है। टेक्सास ने नहीं मांगा होगा, टेक्सास का तो बीच में आ गया भाई। अबे देखा मैं 114 है भाई वो। मारो भाई। मैंने पूरा क्लियर आंखों से देखा। कुछ गलती मारा। योरू है भाई, हैकर है। One enemy remaining. तेरी ये आंखों की मस्तियां जो देखी मैंने। Last player standing. ये मैंने अपनी आंखों से देखी। कमल काजू भाई।
Cutting through. Yeah. 3, 2, 1 ऊपर. East to left. East to left. East to left. Extreme left. सोचो डैश राइट को मार देता. नीचे गिर सकता. I don't know where he is now. Fake teleport. नहीं ये नहीं करता था. Nah. काजू. ऊपर ही जाके टीपी फेक करना था ऊपर. काजू भाई 118. आंटी. रहो मत यार, आपका नेट खराब है, पता है 19 का पिंग भी खराब रहता है, पता है मुझे. You must keep going, even if. काजू भाई मेरे किल देख लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा. Reloading. काजू भाई तो पीरो है. तो बस भाई नॉकटर्नम देना. मैं तो बैंड जो उनके सामने जाके नाच रहा हूँ. क्रोनोमाइट फैंटम ले रखी है. गन्नी ने निकाल रहा है. And the spike's still in base. ATM के MPK की आतंकवादी बोलना चाहता है वो. अरे नेट गलत हो गया. हैंग काटी ना, ब्लाइंड भी तोड़ा दी. तोड़ा भाई मैंने तो ब्लाइंड तोड़ा भाई. मैंने ही तोड़ा भाई. तो मैंने दिखाऊं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा है ना, मैं लाइव करना, वरना मैं दिखा देता भाई. मेरे तो दिखा भाई, मैंने तो तोड़ा भाई. मैंने तोड़ा ब्लाइंड भाई. उसने मुझे तोड़ा. वो तो आपकी गलती है. ब्लाइंड तोड़ने के चक्कर में तो मैं टूटा भाई. ब्लाइंड के लिए मैं था, आपने क्यों तोड़ा है? मैंने तोड़ा, मैंने बोला मैंने ब्लाइंड तोड़ा, तो आपने क्यों तोड़ा है? आपने उसको तोड़ना था. क्या पता था कि तू इतना अच्छा कमर देने लग गया है. वाह कमर देने लग गया. कमर तो देता ही है भाई. कमान काजू भाई, कमान फ्लैश है. One enemy remaining. Attackers win. GG. I'd hate this. Do subscribe रहना जी. छोड़ दे तुम्हारी बुंड जी. बहन जो मेरे को बुखार हो गया दो कल परसों से. है कहाँ घूम लिए ठंड में? भाई मेरा भी वही हाल हो रहा है. चल रहा होता रहा माँ की आँख. कंबल याद कर रहा है तुम्हें? कंबल में आने वाला नहीं है ना कोई. बुला लो. घर में घर वाले हैं. बाहर चले जाओ. बुखार है, हिम्मत नहीं है. फिर तो हाथी है. Match found. स्टैमिना नहीं है, कमजोरी आई है. फिर तो कुछ भी नहीं है. बैठे रहो. आप आ जाओ. मैं क्या करूँ कि जब स्टैमिना ही नहीं है तो. आप में तो है. तो मैं क्यों वेस्ट करूँ तुम पे? तुम रशियन बुला रहे हो तो आ रहा हूँ. मैंने रशियन ही लिया. आ जाओ. लिए. डैम आदि चल रहा है क्या? बाजी ने बुक कर दी भाई. सोवा ली तो. अरे सोवा नहीं. अरे यार सोवा पे मजा नहीं आएगा. करंट मार देगा भाई. शॉक डाट मार देगा. कोई नहीं, पकड़ के देखो यहाँ से भी आएगा शॉक. ओह माय गॉड. काजू भाई रेना लवर. कोई और भी था, आना बंद कर दिया. राजा गुज्जर आया. नहीं एफटी भाई आए उसके बाद? नहीं आए. नहीं मूवी देखने चल. डेमन स्लेयर देखने गया वो. यार मैंने मैसेज किया उनको, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे. अरे मूवी देखने गए हैं ना आज बाहर सब. नहीं 2 दिन से मूवी देख रहे हैं. और क्या. कल एनीमे देख, कल वो मेरे से पूछा कि एनीमे देखने का साइट बता, मैंने बताई. आज हम बोलते हैं कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ. मेरे को देखनी है. जब वन पीस देखनी है. अब देखो भाई 1100 कुछ एपिसोड है. देखो गांड मरा गया लूफी. कौन है लूफी भाई? लॉन्गेस्ट एनीमे हुई तो मैं उसके टोपे से मेरा टोपा बड़ा. छोड़ो. नहीं देखना लूफी. गलत चीजें हैं सब.
मैं बेंचोद ब्रेकिंग बैड नहीं देख रहा 6 एपिसोड है। ब्रेकिंग बैड मैंने तो देख रखी ब्रेकिंग बैड। मुझे देखनी पड़ेगी। मैंने प्रिजन ब्रेक देखी थी भाई। वो भी गया। मेरे सामने से हिलते हैं और इनके सामने हिले ही नहीं रहा। भाई इजी शॉट केओ 50 मिनट में था भाई। इजी शॉट मेरा मिस हो जाता है, जो डिफिकल्ट शॉट होते हैं वो लग जाते हैं बेंचोद। अब बने डिफिकल्ट चीजों के लिए इजी आते हैं। नहीं रियल भाई। हाँ तो हम भी रियली बात कर रहे हैं। आपके लिए इजी शॉट नहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपके लिए एकदम ऐसे नहीं इसको चैम्बर को मारा फ्लिक मारा या सेज मारी फ्लिक, यहाँ पे क्यों चिल करके खड़ा हुआ था उस पे मैं हक दिया। तो उस पे आपको 360 मारना चाहिए था करके, वरना तेरी तला इस इजी शॉट को डिफिकल्ट बना के फेल दो। क्या हुआ स्पाइक लेके घूम रहा है उधर भाई, फेंक दे रेना पे। एडीएस लगा के खड़ी हुई है, जरा आ रही है रेना एडीएस खोल के खड़ी हुई थी बुलडॉग लेके। पीछे कोई पिला गया भाई, रैंडम ही गया। रैंडम मिलेगी भाई पीक दो भाई। राइट अरे पीछे हेलो क्रैक को वेलकम टू द स्ट्रीम। भाई मैंने ब्लाइंड के बाद भी मार दिया, 60 भी मारा था मैंने जेट। उस पीछे वाले नहीं बुट फोड़ी भाई। वेंटल देना वेंटल। I need a gun. Thank you. I need a gun. Spikes here. और क्रैक क्या हाल है? कैसा क्या चल रहा है? भाई कल की शॉट जो एडिट की है मैंने, They'll break with the right pressure. कल को की शॉट आ रही है। पुरानी क्लिप उठा के ला रहा। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बस अकेलापन खा रहा है मुझे। एक्सपी मां का साथी का भाई लैब से मार दिया है। भाई एक वहां पे एक बी पे है। काजू कतली बेच किया भाई। लेफ्ट मिड में था भैया, यहीं से पेला मेरे को काजू भाई। वो दिख गया दिख गया शैडो यार, शैडो दिख गया शैडो। ये दिख गया भाई। अगलापन एक दिन सबको खा ही जाएगा। अब तू ऊपर शैडो देख, शैडो ऊपर शैडो देख। लास्ट राउंड बिफोर द स्विच। शैडो नहीं देख पाया। मुझे बहुत खा रहा है यार। वेंटल दे वेंटल। आपको तो पता ही है क्रैक। वेंटल कोई है I need a gun. Thank you. जो दूर कर सके ये चीज। शैडो तो शैडो क्यों नहीं देखता? हाय आदि। हेलो प्रतिष्ठा जी, कैसे हो? शैडो अरे शैडो कैसे देखेगा? शैडो खुद शैडो है। शैडो की शैडो में शैडो शादी वैन डेंजर क्या हो जाता है? जब अकेलापन दूर। अरे रशियन भाई हवा में उछल गए। मैं बढ़िया आदि, आप बताओ। मैं भी बढ़िया यार। ओए अल्ट मार कैसे चल रहा? इस पे इसके मुंह पे खड़के नहीं मार। ये कवर देने ही नहीं आया। काजू भाई वेट करते हैं। काजू भाई कम ऑन ट्री है कम ऑन काजू भाई ट्री है। राइट नीचे ऊपर मैं तो बोला ये आराम से मारते बढ़िया बात। कोई लड़की नहीं आपकी नजर में? लड़का है। स्विचिंग साइड्स। कोई भी नहीं है यार, लड़का नहीं चाहिए मुझे। लड़का चाहिए होता था आदि बचता क्या आज तक। अरे बाप रे भाई फिर आदि खतरनाक इंसान है यार। छे भाई ये आदि लव यार। नहीं आदि पे फिर वही टॉपिक पे यार, बार वही टॉपिक यार। तो आदि लव ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा आदि भाई, मैं तेरे साथ हूं। साथ किस तरह ढूंढो फिर।
आप ढूंढ लो, आप नहीं, फिर आप किस काम की यार प्रतिष्ठा जी? हर बार उसी टॉपिक पे यार, आदि के धंधे हमने पे जाना ढूंढी थी क्यों पर यार? उसने कोई और को ढूंढ लिया। अब नहीं, हर बार बताओ। तो आदि के धंधे पे क्यों जाता है? आदि सॉरी अरे सॉरी सॉरी आदि, मैं नहीं नजर डालूंगा आदि, अपना प्राइवेट में कर ले आदि भाई। देखा अभी भी वो प्राइवेट में ही करता है, तू नजर लगाता है। आदि सॉरी आदि। अरे क्यों तोड़ा वो? मैं मर गया है भाई, देखो मैं मर गया, ये इंसान की मेरा पीछे खड़ा था मैं इस इंसान के। आपने किसको ढूंढा था? थी एक बड़ी प्यारी सी, परफेक्ट। अरे वो अंदर उसकी आवाज बड़ी प्यारी थी, हम बोलते थे उसे। बट अब कुछ नहीं है, छोड़ो वो बीती बातों को, आप कोई और ढूंढो अब हमें। आदि कोई हिमाचल में है नजर में? मैंने देखो सुना भाई, सुंदर बहुत होती अब है। आउट ऑफ लेकिन आउट ऑफ स्टेट रिश्ता नहीं करती। मैक्स टू मैक्स तू जा भाई, हम सब करवा लेते हैं दनाली के सिर पे। तो ले भाई, हम आप दलाली मर के गई तो नहीं, कराओगे, जिंदा हमारे है, पास इससे भी जिंदा अच्छे है। इलाज है। She's alive. हैं? She's having fun in her life. She's अरे happy बशर there. दो। So I'm not disturbing her life. क्या? आप लोग जानते हो ना हिमाचल उत्तराखंड किस चीज के लिए वो है? रुक जा, Spike down mid. अब बोल। हाँ, जानते हो ना हिमाचल उत्तराखंड किस लिए जाने जाते हैं? Scoop in तो जानता है ना पंजाब किसके लिए जाना जाता है? उड़ता ऑलरेडी है, पंजाब। ऑलरेडी मेरी वो- भाभी है हिमाचल की। अरे वो मैं मना नहीं कर रहा कि देखो वहां तक का मैं मना नहीं कर रहा मैं, भाई किधर गया सोगा भाई? मैंने इसके आगे रिलेशन के हिमाचल का मैं तो होते हैं, कम होते हैं, पता मेरे को। हाँ मैंने इतने देखे नहीं। एक्चुअली पहले तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। अब क्या ये सीन है, अभी अब थोड़ा सा शॉर्टेज हो गई अब। साले आदि क्या तेरे बंदा पे है? जा रहे हैं हम। मेरे पे क्यों जा रहा शॉर्टेज हो गई है? अरे हिमाचल में शॉर्टेज होगी लड़कों की, वो बोल रहे हैं। नहीं हो रही बहन, नहीं हो रही। साले नहीं हो उसने रही, ये बोला है। हो ही नहीं रही। अरे अब ना थोड़ा एक्चुअली ऐसा हो गया ना सब ओपन माइंडेड। हाँ, और बाहर पहले क्या था, अगर स्टडी के लिए भी जाते थे चंडीगढ़ तक जाते थे, अब वो उससे आगे भी बाहर भी भेजने लग पड़े, सब होने लग पड़ा, तो थोड़ा हो गया ओपन माइंडेड। तो अरे ये क्या कोई? अरे नॉर्मल बात है यार, ये यहाँ पे इधर आओ, तुम बात करो खुद भाई। It's a normal- मैं जिनको जानता हूँ उनके सबके बॉयफ्रेंड होंगे। कहाँ पे? हिमाचल में ही है। बॉयफ्रेंड उठवा देता आदि बोल तुम तो। बॉयफ्रेंड उठवा नहीं उठवा सकते, नहीं उठवा सकते। भारी है क्या? वो कह रहा आदि उठवा देता है बॉयफ्रेंड। अरे Spike down B. मेरे दोस्तों को क्यों उठवाऊं मैं? अच्छा तेरी दोस्त है। Defenders win. गलत बात है आदि नहीं, यार। समझा नहीं, तो मतलब नहीं समझा उसका। तनिष्क पैरी। तनिष्क पैरी है। तो उसका मतलब नहीं समझा, वो क्या कहना चाह रहा था। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा था जी मैं? वो आप क्या समझे सर? अरे वो क्या सर? बाऊ। अबे यार तुम फिर क्या पता नहीं क्या सोच रहे हो। अरे क्रैक मैंने इज नहीं ऑनलाइन। कहा। क्या ये हमारी और भाई तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ यार, चले भी गए हो बाहर। यार डेली नहीं ये टॉपिक हो, सुनाओ यार क्या हाल चाल? एकदम अरे बढ़िया भाई। मेरे को एक चीज बता, एप्पल का सीजन कब आता है? मेरे को पता नहीं है इन रियल नहीं पता, मतलब मंथ कब, मतलब कटाई होती है, कटाई कब होती है? छटाई मेरी फ्रेंड, अरे कब उतारना मेरी शुरू आईडी से करते हैं फ्रेंड है। एप्पल को? गर्ल है या बॉय? एप्पल की कटाई होती है कब, मतलब उतार के मेरी तो सारा लैपटॉप ही करना शुरू खराब है। करते हैं। अक्टूबर से गर्ल है या बॉय है अगस्त ये से बता अक्टूबर दो तक बस। होती क्रैक है वैसे तो। और नॉर्मली जो मेरे को एक चीज बता, एप्पल के जिनके भाग होते हैं वो कर कुर के कटाई वगैरह, जैसे यहाँ पे कनक वगैरह होती है, फिर ये लेके जाते हैं मंडी पे, हाँ है ना, वहाँ पे सेल आउट होती है ये तो गवर्नमेंट को या boy। प्राइवेट को या कैसे भी है। इसमें क्या होता है सीन? इसमें भी एप्पल में सेम, मंडी एप्पल में भी जाती है, सेम। हाँ इसका भी पक्का एक रेट होता है, कैसे होता है? नहीं वो एप्पल की वो जो क्या बोलते हैं
कौन सी ब्रीड है, मतलब कुछ वो गोल्डन एप्पल होते हैं, कुछ कुछ टाइप के, कुछ रसीले होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के, वो उस हिसाब से रहता है। चलो तुम खेलो, मैं जा रहा। जा रहे हो? एप्पल तो खिलवा के जाओ। अभी आए नहीं, अक्टूबर में आएंगे। मार्केट में तो हर टाइम रहते हैं यार पाजी। ए, नहीं, मार्केट तुम वाले लोग का फुद्दू लेवल हैं। बहुत हाई है। मार्केट वाले फुद्दू हैं। हैं? वो स्टोर्ड सीजन में खाओ, सीजन फ्रूट। आदि सीजन वाले करें बिजनेस। चल बाय बाय बाय। चलो ओके बबीश। हाँ तो बाय बाय। सीजन वाला खेल लो। खाने आपको सीजन वाले। और क्या, बिजनेस करेंगे भाई, क्या महंगे बिकते हैं भाई। हाँ फिर चलो खेत उगाते हैं चलो। खेत ही नहीं है अबे हाँ तेरे, अगर है तेरे पास प्रॉपर्टी तो हाँ, उगा देते हैं भाई, उधर उधर ही तो उगेंगे, आप तेरे ही उगेंगे। आप इन्वेस्टमेंट लो, खेती खेत मेरे भाई। इन्वेस्टमेंट काजू भाई। भाई सब मिल के कर लो भाई, बोल रहा हूँ भाई। जैसे अंबानी ने आम का करा था, अपन एप्पल किंग बन जाएंगे भाई। वो आम किंग, हम एप्पल किंग। नहीं भाई, लेकिन एप्पल में भी एक दिक्कत होती है, कीड़े लग स्टोरेज। जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं भाई। कीड़े वो तो सब भी लगते हैं भाई। ये आ देखो गई कौन है, हमारी परी, उड़ती परी। देखिए कौन आया है। आ गई फाइनली। देख मैंने एक सांप का वो लगा रखा है, डस न तुझे। हेलो फॉक्सी। हेलो। डिस्कॉर्ड में हेलो। बोल दो भाई, इसके आवाज टूट रही है इधर। क्या आप डिस्कॉर्ड आ जाओगे? हम डिस्कॉर्ड में बैठे हैं। Match found. मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में वैलोरेंट सेक्शन में हम बैठे हैं। यस। What? You leave my server? सब रहता नहीं तो रहता है, ले भी सब कर रहते हैं, हम दे। है तो सही, आप याद तो करो। आप हम थोड़ी ना 120 FPS वाले हैं यार। आप हमें क्यों छोड़ रही हो? 120 FPS वालों को मारो गोली। नहीं, उनके साथ नहीं रहता, मैं किसी सर्विस में नहीं हूँ। आप मेरे सर्वर में आओ यार, आप मेरे सर्वर में आओ। आप एक काम करो, चैट पे जाओ, आ जाओ। चैट पे डिस्कॉर्ड स्पैम होता रहता है, वहां से लिंक ज्वाइन कर अभी लेना। गया डिस्कॉर्ड, अभी की लिंक डली हुई है, फिर से ज्वाइन करके आ जाओ। आ जाओ। है ना दृष्टि? ये क्या है ये क्या था भाई? ये मेरे को, मैं इसकी क्लिप बना के तुम्हारा मीम बनाऊंगा भाई, रुको तुम, ये जो तुम रोए हो ना अभी, रुको क्या मीम बनाएगा? क्या मीम डेट नोट कर बनाएगा लेता मेरी? हूँ। क्या डेट नोट कर लेने दो। ओमी टीवी की तो अभी नहीं डाल पाया, अभी तक स्लॉट आ ही नहीं रहे। उसके बाद बोला तो रोड डालो यार। करता हूँ भाई यार, हर 2 दिन छोड़ के एक वो कर दिया कर, एक नॉर्मल शॉट ही डाल दिया कर आज। ठीक है, रीच बनी रहेगी। ठीक है। अरे उस पे तो ठीक ठाक व्यूज आए थे ना आपके रिसेंट वाले पे। और क्या, 1 क्या आए थे उस पे, पेस वाले पे। क्या है उसमें, मैंने तो वो जो म्यूजिक यूज किया था वो ट्रेंड वाला था थोड़ा। वो लेकिन म्यूजिक आप उसको मेरे ऊपर से डाल सकते हो, पता है लोगों ने ऊपर से डाल रखा है, आप उसको ऊपर से डालना, मैं अगली बार आपको लिंक दे दूंगा। ऊपर से कैसे डालूं? मोबाइल से डालेगा, लैपटॉप से डालना नहीं आता मेरे को। अरे जैसे मतलब मैं किसी की वीडियो ओपन करता हूँ, किसी ने गाना लगा रखा है वो, तो वो उनके वहाँ पे शो होता है कि नीचे मैंने कौन सा गाना यूज तो वो मैं वो कैसे वाला डालूं? लगाना मेरे को बोल रहा लैपटॉप से नहीं आता ना ये करना। हूँ। मेरे को तो फोन से भी नहीं आता करना ये चीज, आप लैपटॉप के बाद। Last player मेरे को standing. फोन से तो इजी, ऐड म्यूजिक करके ही वो ऑप्शन म्यूजिक सर्च करके आ जाता है। ओह Chamber, why you AFK, man? Come on, clutch it, clutch it. Oh, clutch it. Hello, Foxy. These new friends of ours are Cancel. not friendly. हाँ आ गए आप। कैसी हो Foxy? अरे गेम में म्यूट करूँ मैं तुझे? कर दो ना मुझे म्यूट। तो तमीज से बोल ले पहले। बे तमीज से आप दो जगह क्यों बोल रही हो? कैसे बोल रहा है? कैसे क्यों छोटा बच्चा बोल? है भाई, क्या कर छोटा लूं बच्चा है भाई। Foxy?
हाय हाय इतने दिनों बाद जाने आपका जीवो बनना है हमें। हाय हाय आई एग्री भाई, ऐसे तो किसी लड़के तक का थोड़ी होना बने। ऐसे तो लड़की भाव, ऐसे तो भाव नहीं देगी लड़की में, ऐसे वाले मत दे दो यार। अबे what the fuck? One enemy remaining. My ult spike planted. ऐसा No charges left. For you. मेरे को तो मैंने चलते फूलते हेड मार दिया तो भैया भाई क्या मारे भाई। क्लिप करो भाई ये शॉट, क्लिप करो ये भाई। शरीफ किंग बोलते ऐसी था मेरा वो तो। फॉक्सी जी थी इसलिए तो क्लिप करता हूँ। कहाँ गया करा किसने क्लिप में? काजू भाई तक करा। यो काजू भाई बहुत टाइम हो गया आपकी तरफ से सुपर चैट और ये सब नहीं देखने को मिल रहा है यार, बड़ा निराश फील हो रहा है काजू भाई। तेरा ने उल्टा बोल दे कि आज तक तूने मेरे पुशअप्स नहीं किए। नहीं किए भाई, सबके किए मैंने भाई। 700-800 तक किए। वो इनके नहीं थे, वो तो जिनके थे वो आ ही नहीं रहे स्ट्रीम पे, तो मैं क्या करूँ। बाकी सबके मैंने करके दिए भाई। नाइस, थैंक यू जस्टी। क्या है ये? ऐसे लग रहा है किसी ने मुंह में लिखा। एक गंदी लैंग्वेज भाई। 115 तीनों मिड है भाई, मैंने दोनों लोग किए मिड। तीनों मिड है। मिड तो वो भी थी। क्रिंज डायलॉग तेरे और जिसके साथ उसने चीट किया था उन दोनों का। नहीं, मैं और मेरी तनाई के बीच नहीं चीट तो नहीं किया किसी ने मुझे आज तक। मैं इतना अच्छा हूँ चीट नहीं करता। शरीफ पकड़ू फिर भी स्किन नहीं है, देख ले दस्टी, फिर भी स्किन नहीं है मेरे पास। इतने अच्छे शॉट देता हूँ शरीफ भाई, इतनी स्किन ने रखी हुई है। डिफॉल्ट फिर भी रो रहा है भाई। हट कहाँ है भाई शरीफ की? एक भी नहीं है भाई। Last player standing. वो होता है ना तेरे नीचे वो होता है ना। हाँ राइट में क्या मेरे पे तो एक भी गन की नहीं है। आप पे तो मतलब शरीफ की नहीं होगी किसी गन की। मेरे पे तो एक की भी नहीं है। मैं कुछ बोलता हूँ। ओह माय गॉड, मेरे कने शरीफ की नहीं है, मेरे कने क्लासिक की नहीं है, मेरे कने शॉर्टी की नहीं है, मेरे कने फ्रेंची की नहीं है, मेरे कने जज की नहीं है, मेरे कने वो बक्की की नहीं है, मेरे कने एरिस ओडिन, मेरे कने मार्शल की तो है ना भाई। नहीं है, ओनली वैंडल फैंटम और एक गोस्ट है भाई। कम होते हैं हम पे वो भी नहीं है। तुम पे मैं हो तो सही। हम पे है ही। वो तो अभी हुई यार, तो तुम पे हम है ना। बस दिन बदल गए। ठीक है बॉक्सी बदल गिरे, पहले कैसी थी कैसी होगी। हमको बदला गया है भाई। हमने तो नहीं बदला। हमको बदला गया है। वो लोगों की गलती, हमने तो नहीं बदला। गिरा दिए गए। स्ट्रीम पे ना होता तो मुझसे इतनी गालियां सुन रहा होता ना। तू मुझे गाली देगी? यस ऑफ कोर्स। वैसे काम करेगा तो खाएगा। तू मुझे गाली देगी? हाँ मुझे। Switching sides. वो भी मेरी फॉक्सी। It's getting toxic. क्यों भाई? मैं इसकी स्ट्रीम रिपोर्ट करूंगा, गेम नहीं स्ट्रीम रिपोर्ट करूंगी मैं। मत करो यार। पहले कितनी पगलू थी मेरे पीछे, अब देख रहे हो कैसे बदल जाते हैं लोग। तेरे पीछे कब पगलू थे? कभी भी नहीं थे। ठीक है भाई, अब हर्टिंग नाउ। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस। अब नहीं करूंगा भाई, अब हो गया आदि, मेरा हो गया आदि। ये वैल्यू की लड़कियां मेरे लिए नहीं बनी आती। तो वायरल वाली भी कहाँ बनी है? बनी है यार, कोई ना तो कोई। लड़के क्यों नहीं ट्राई करता? मैं लड़के क्यों ट्राई करूँ? ट्राई करने की चीज है क्या लड़के पास? जी भाई लड़के ट्राई करो भाई, देख रहे हो आप। अरे यार
Oh my God, bite has bited me. Oh, अरे दोनों का 87 है. दोनों Oh के my 87 God, all are low चाहिए पर clutches. ये मर जाएगा, मर जाएगा, पता है ना, मर Chamber, are you new to this game? फिर भी तेरे ऊपर आती वो कैच. तो क्या हो गया भाई, वो ना वो मेरे असिस्ट ही जा रहे हैं हर राउंड. उबासी क्यों ले रही हो? नींद आ रही तुम्हें? अभी तो रात हाँ, मैं एक्चुअली सोने जा रही थी. नहीं, रात भर खेलेंगे अपन. चल सोने जा रही हूँ बस. तो मैं हो गया भाई. बदल गई हमारी फॉक्सी. तो बदलना पड़ता है वक्त के साथ. हाँ ना. उन बदलाव के चक्रों में कितने लोग तो वो बदलना पड़ता है भाई. सही बात. तो थोड़े अच्छे के. वाह भाई, कैम कर रहा है. अरे लो जा. इनका अलग रोमांच चल रहा है. मैं नहीं जाने दूंगा. मैं कब तक बच सकती हूँ उनका लक कितना खराब हो सकता है. भाई उसने 25 कम से कम ना 3-4 बार 25 गोलियां खा ली. Match point. Avengers Assemble. I want their life, not yours. Need a drop. Thanks. हाँ जी. अरे कहाँ गई? मेरे हैंडल. अरे कहाँ गई वे? हम पे ना, हम पे तो 0 रुपए. नीचे गिरी थी क्या? कौन है? मैं आदि. प्राइम वेंडल है क्या? यस है ना प्राइम वेंडल. मैं आदि और फॉक्सी, मतलब कैन, बस सब 3 है. वो कैन भी जा रही है हमें छोड़ के जा रही. अरे सोने जा रही है भाई, वो छोड़ के जा रही. मैं अगले दिन ही मर रही हूँ. मेरे पैर भी है तेरा दिन पहुंच गई. छोड़. हलवा पूरी मिलेगी क्या? चाय पनीर बिरयानी पूरी साइड खाली छोड़ रखी है. उसमें हिम्मत ही नहीं आ गया. तेरे भी एक शादी है तुम्हारी, तो तुम्हें बम बिरयानी. Oh my God, Yoru. Oh my God. Backshot. होगी, पार्टी होगी भाई ये तो तुम्हारी. नॉनवेज नहीं मिलेगा. वो ब्लाइंड कैसे हुआ? पनीर सब मिलेगा. चलो कोई बात नहीं, उसमें खुश हुआ मैं. हाँ, HTP. कढ़ाई पनीर. TP तो थी. Wow. All coalness has been dusted. साल लगा दिया मारने. Defenders win. डिफेंडर विन भी हो गया. जी कल आना. परसों. कल बीजी उससे खेलो भैया. क्यों उससे क्यों खेले प्राइम से यार? अभी चैंपियंस आई है. काहे पैसा डाला है उससे खेलने के लिए ना. प्राइम से तो पूरी जिंदगी भर खेले हैं. देख मैं इसलिए नहीं खेलते इसके साथ. ऐसे बंदे आते हैं. कैसे? तेरे जैसे. मेरे जैसे. मैं आईडी बदल दूंगा आपके लिए, आप बोलो तो सही. अरे देख रहे हो. आऊं दूसरी आईडी से छोटी वाली? नहीं रहने. अरे आप बोलो तो सही, आ जाऊंगा. रिश्तू पहले तेरे को हुआ क्या है मुझे ये बताया. अच्छी बस कर जा. कॉम्प नहीं खेल रहा. कॉम्प बच्चे खेलते हैं. किड्स प्ले कॉम्प. मर्द प्ले स्विफ्ट प्ले. वाह प्राइम है भाई. मर्द प्ले स्विफ्ट प्ले. मर्द प्ले कॉम्प. कितना छुआ लग रहा है भाई. डन भाई. पिवाड़ी देवादी पेला मने सारी तो तवड़ा दर. मुझे भी पिलाओ यार. ये पता नहीं क्या गुजराती तो मैं बोल गए 6, बट हमारे भी हो जाए यार. एक गिलास कॉफी प्लीज. ऐसा ना कॉफी की दारू की बात हो रही है. नहीं कॉफी की, कोल्ड कॉफी की बात हो रही है. ये my people know I'm a sober person, okay? I don't drink, I don't do smokes, I don't do anything kind of shows. इतने शुद्ध बंदे हो. Yeah, pure पुकी.
Please don't disk you Foxy यार. You know ना we are going to play. Yeah, pure फूकी बंदा हूँ भाई मैं. वो ऊपर वाला नहीं हूँ, बस ऊपर वाला फूकी. मत जाओ यार फॉक्सी, खेल लो यार. मलेरिया नहीं, आज तो मैं जानबूझ के तेरे साथ नहीं खेलूंगी जैसे तू हरकतें कर रहा है ना. तेरे नहीं खबर. I don't wanna भाई. प्लीज Bye यार, bye. why please don't leave me please, but खेलो she यार, has खेलो gone. खेलो. गई भाई. रोकने वाले को जितना रोको वो उतना दूर जाता है भाई. सीख मिल गई तेरे को कि जिस चेहरे को जितना रोके वो अपने से उतना दूर जाएगा. इसलिए बस उसे जाने दो, वो अपने आप अपने पास आएगा. Match ना नहीं found. खबर मने. जैसे देख तब लो में बॉक्सिंग मलेरिया हो गया सी, तेने मच्छर काट गया सी अच्छा कि करके छी भाई. मैं तो बोलूँ तुम भाई ऐसे तैसे करके लैंग्वेज की तुमने. कोई ना, जल्दी सारी था जा, जल्दी ठीक हो जा. मलेरिया ने मस्त मस्त पपीता खावे. भाई भाई आपको बहुत पता है गर्मी हो रही है. मलेरिया में क्या होता है बंदे को? क्या होता है बताओ. आप बताओ, आपको नहीं आप पता? बताओ. नहीं पता मुझे भाई. है सोचो तो सही थोड़ा, क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई. बुखारी आएगा, उल्टी होगी और क्या होगा, और कम जो प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे और क्या होगा बता. मेन रीजन वही होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाना. तो वही ग्लूकोज और पपीता खाओ, मजे करो. What तब hope do हमारे these 6 और के. criaturas have? छी क्या हो गया दृष्टि? दृष्टि छी क्यों कर लिए? क्या हो गया? पपीता पपीता इज गुड. ओके तो है कि ये मेरे साथ ही अकेले नहीं कर रहा, सबके साथ कर रहा है. मैं सिर्फ आपके साथ कर रहा हूँ यार. नहीं, इतना मैं खुश हो गई अब. तो खुश हो गई बस. अच्छी बात है. Need a चलो drop. चलो क्या यार? फॉक्सी खुश तो हम खुश. Anyone have funds to spare? अभी भी है क्या आप हमारे दो ना भाई गोश्त. अरे गोश्त का क्या? ये लो. Anyone have funds to spare? जो थवे तो नत थवे वे पाची पीवा देती तो मैंने सारी था भी ना. Reloading. कौन कौन सी पाची दन दर. Toxins going up. Reloading. Reloading. I got the spike. Spike I have drop. the spike. Toxin screen down. Spike drop. Reloading. 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 The toxins going up. I got Still in sight. Toxin screen down. here. Planted. I'm low. Wait for my poison to pop up. 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 Toxins going up. Enemy. I'm out of here. Come on, push. This is our chance. This is our chance. Wall banking की कहते फेल के रख दूंगा लाडले. Symphony of Death. एडमिट छे भी तब कमरे छे तो फॉक्सी तो चली गई थी. वो डिस्कॉर्ड पे बैठी है हमारे साथ. The cutie is in Discord. Ew. What you're saying? You yeah, don't say you yeah. डेंजर भैया, अब तो समझ जाओ कि मैं जो बोलता हूँ आपको, मैं क्रिंज बोलता हूँ, मैं ठीक बोलता हूँ. No, you my cringe. I'm the OG. धोते हो आप, ओजे नहीं. Bad move. Reloading. Pivana che. Go. Reloading. I'm out of here. Spam on Reloading. Weapon here. इसको आवाज दे दे. 101 मारा भी मैंने क्रो को भाई. स्मोक स्पैम किसी को तो लगता है. Message sent. सर ने आ गया. अरे क्या भाई
क्रॉसर भी चल के है। One enemy remaining. Last player standing. 82. Spike down mid. 30 seconds Running left. for life. Navrati something 3M पता छे? I have the spike. 15 seconds. 12. 10 seconds left. You will 9. not kill my ally. नीचे उठा दिया भाई. That's why you should go to A only. अड़ाजन वाली क्या बातें हो रही है? Who to smother first? Bye bye. तुसी ना जाओ. Reloading. तुसी नींद आ रही? Reloading. तुसी शो ना है? Go, go, go. भाई तुम इतनी क्रिंज क्यों हो? Reloading. नहीं उड़ना. मैं क्या करूँ? What should I do, man? I should be a man enough and I sound like this. Okay, you're going okay. Bye, bye. Meet you soon later. This is fine. You want me like that? I can, bro. Enemy spotted B. Barrier created. अरे मेरे पे डीके कैसे गिरा है? सब पे गिरा है भाई. Wall down. Toxin screen down. Last player standing. अरे यार, my poison की timing हो गई यार. Last round before the switch. I was just spitting my poison, but the spooky kinda gave a good cover to that shitty bro. Ha 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 ha. Go, go. कोई नहीं ध्यान रखिए. Need a drop. Anyone have funds to spare? Thank you. Nope. I'm sorry. Salamat, thanks. Nope, get well soon. अरे थोड़ा झुक गया. पूरा ही चुप है तू. Reloading. I'm out of here. भागे तो वहाँ बहुत थे. अच्छा अब तो नियॉन नहीं है. वेट कर दियो उसको. वाह, ऊपर ही चढ़ा हुआ है वॉल के. अरे क्या भाई क्या? मिक्सअप कैसे अप्लाई? Enemy spotted B. Last player standing. मार दिया बेचारे को. Hello, Siege. You know the reason why we are losing? Single life worth. It's not English. Mari ciao. Oh, mare. तो सारी चीजें ना देते मैं ना इसको तो पिवा दूं. मुझे पिवाओ ना, ये पिवा दूं ना वो पिवा दूं करे देते हो कि कभी ये बोतल भिजवाओ ये बोतल भिजवाओ. कितनों को बोतल भिजवाई तुमने अभी तक? मेरे को ना आई नहीं अभी तक एक भी बोतल. ये भिजवाता हूँ, वो करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, कुछ नहीं करवा रहे सिलाए भाई. देख रहा है आदि एक बोतल ले आई, तेरे को आई क्या दी अभी तक? आई क्या दी भाई? एक तो ब्लू लेवल भाई गिफ्ट कर दे भाई. देख रहा नहीं पोई नहीं चाहे भाई. No charges left. इधर इसके नीचे. हाँ पेल गया वो. हाँ तो देखा ना, एकदम नीचे नहीं था ना भाई. नीचे देखने जा रहा था भाई. Come on, Neon, entry, Neon to your right. Come on, push it. Go, go, go. वो घर के पास नहीं रहती, उसे भिजवा सकता हूँ.
ठीक है ना, घर के पास रहते हैं तो हम दूर वालों की कोई कीमत नहीं है आपके नजरों में। आप ये कहना चाह रहे हो? देख ले आदि, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। मर्जी। थोड़ा सा लेट जाना था आपको, तो आ जाते, तेरे को भी पिलवा दूंगा। Match point. Reyna, time to hunt. Oh. We can push them back. Many enemies B. बाप रे। भाई इधर मैं बता रहा हूँ, अकेले मत जाना, 4 बंदे पीक लेके बैठे हुए हैं। एक तो गया। Spike planted. Cutting their vision. Here. Still in sight. एक दिखा। Reloading. They're dead. Enemy spotted B. Your fault. Reloading. One enemy remaining. I will not die here. Prepare for hellfire. Main. Last player standing. Clutch. Attackers win. GG. लास्ट में मार के और होम करके दे। तू आजा इधर मैं तुझे भी पिलवा लूं। सुनिया कहता सी है बनी अकेले अकेले मेरे को याद नहीं किया। इसको अगली गेम में बुलाता है। मैं तो कहता सी आधी होंदा भाड़ू। गाना है? यस मेरा बना भाई। Match found. You gotta catch them doing something interesting. Interesting. Oh, अब पकड़ा क्या? Okay. अबे सामने काजू है हमारी टीम में देखो। आदि इतने सारे काजू है ना, क्या बताऊं तुझे मैं। इस गेम में बहुत काजू भरे पड़े हैं। इतने काजू है, इतनी कतलियां है, खा के थक जाएगा तू। अरे काजू भाई ऐसा करोगे? काजू भाई क्या कहोगे यार? काजू भाई ने मेरी जाट भाई ले ली है यार। तो उसकी टाट ले ले। देगी नहीं ना वो। और कुछ नहीं। डिस्कॉर्ड में भी भूत चढ़ गया के लौड़े हो सारे। सैटरडे क्या होता है? सैटरडे होता है कि सैटरडे तेरी ऐसी तेरी। क्वेश्चन करने और बैठ के करी। क्वेश्चन करना तुझे? कौन से क्वेश्चन? एक्सेल के क्वेश्चन करना है, 2 असाइनमेंट करनी है। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या होगा जी? गाड़ी की चाबी दी, मैं चला सोने। बाय बाय, गुड नाइट। इतना जल्दी कौन सोने जा रहा है आजकल?
Remember, everyone, she can only suck our souls after we die. What a charming woman. यही होता है जीजू. Yes. Cutie जीजू. अबे Approved. Approved. मुझे क्यों गिरा रहे हो? Gun here. I need this. My thanks. की आवाज कौन निकाल रहा है? की आवाज कोई निकालता भाई. I need this. Reloading. की आवाजें आती है वहाँ से. Spike down. जहाँ से आती गुजर जाए. Show me a target. Reloading. गिरी भाई. अब वाव क्लोथ बेचर. Refreshing. Spike down A. One enemy remaining. क्लोब है जो मुझे वेट करके गए हैं. छुप के बैठा है कोड़े में, मेरे को वेट किया इतना. बदमाश. भाग यहाँ से. यूना नाम है. लौना नाम है इसका. लौना. लूना बना दी इसकी बैंड की. स्ट्रीमर हो सकती है भाई. हो तो हो, क्या करूं. आप भी स्ट्रीमर हो. स्ट्रीमर हो तो कोई भाईचारा, कोई स्ट्रीमर पारा नहीं होता भाई. देख लिया मैं भाई. मैंने इतने लोगों की स्ट्रीम पे जाता हूँ, अपनी स्ट्रीम पे कोई नहीं आता भाई. सब मतलब ही है. वेलकम टू द खुशी फैम. बेल्टोस फैम. खुशी जी आ गई भाई. खुशी जी ने मेंबरशिप ले ली. लेट्स गो. 110 का भाई. इसको एक ले लो बस. Spike planted. हड़िया लाडली. तेरे को ही कर दूंगा नहीं तो. Vulnerable. Show me a target. Making cover. One enemy remaining. Refreshing. Sorry मेरी. No peeking. छुप के बैठी रहती है लड़कियाँ. Found my wire. बेचारी हमने. क्लीन. खुशी जी वेलकम एज अ मेंबर. बेल्टोस फैम में आ चुकी हैं हमारी खुशी जी. Thinking out loud. और बताओ खुशी जी, और क्या चल रहा है? I need a gun. Thank you. क्या मैंने फेंकी है गन. ना पूछो यार क्यों. हमारा भी ऐसे ही बेकार चल रहा है यार. Chat is it real or fake? हैं. Still in sight. Watching here. Cutting their vision. अरे क्या ये ब्लाइंड तोड़ते क्या भाई? ऐसे कुत्ते की तरह 4 बंदे ब्लाइंड तोड़ने आ जाते हैं भाई. मेरा कुत्ता स्पैम में दे गया पूड़िया. मेरे को भी स्पैम में दिया. क्राउच कर लिया फिर भी 80 दिया था मुझे. 80 सेज को मैंने भी दिया है. ऐसे जब हील कर लेगा. Last round in the half. After taking 2 on the side alone as a warrior, my team fucked up. I need a gun. Thank you. Food poisoning, match up throat, can't eat, unable to speak. I am on liquid diet for 3 to 4 days. आपका तो तबीयत के साथ थोड़ा भूल मेरे को लगता है. आंकड़ा सही नहीं है. आप अपना कुंडली चेक करो भाई. सीरियसली ऐसे किसी को मतलब फूड पॉइजनिंग हो रहा है कभी. क्या कार को हो गई थी. रियल भाई. रियल में चेक करो. कुछ तो है. किसी ने कुछ तो किया है आप पे. Breaking down. Target down.
80 भाई, नाइस कवर, नाइस down. हार्ड हो गई का। One is window, one crash entered bro. ब्लाइंड क्यों नहीं हुआ? बेटर एक नंबर का सैपर। 14th को बर्थडे है बट आई डोंट सेलिब्रेट। कोई क्या ही कर लेगा, कुछ भी हो यार। Last player standing. पूरा बेटर इस, पूरा बेटर इस, पूरा बेटिस। ये 14 को आपको बर्थडे है, मतलब वाह यार खुशी जी, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। बाकी ध्यान रखा करो, करने वाले पता नहीं बहुत कुछ करवा देते हैं, क्योंकि जलने वालों की कमी नहीं है। I need a gun. Thank you. गेम जलती रहती है। Reloading. Reloading. हाँ डॉट पे मेरा लगता ही नहीं है, मैं भूल गया मैं डॉट पे खेलना। अब क्या ही बोलूं, अब कुछ बोलो मत, बस अपना ध्यान रखो खुशी जी, और देव भाई को बोलो ध्यान रखे आपका। ऐसे ही टूटती भाई, ऐसे टूटती है, वो देख जाए। वॉल के राइट में बैठा है, बोला राइट में बैठा है। तो मेरे माऊंगा भाई। और बैठे लेफ्ट हैंड जगह में बैठे। क्या कॉल देता हूँ भाई मैं। अरे एक और था, कैमरे निकाल लिया कुछ को। अच्छा जब निकालते हैं कैमरा या फिर यूटिल निकालते हैं, वो भी दिखता है क्या? ये निकाला ना इसने, निकाल तो हमें नहीं, एनिमी को दिखता है क्या? एनिमी को निकाल तो दिखेगा कैमरा, है दिखेगा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं दिखेगा? जब लगाते हुए दिखता है तो निकालते हुए क्यों नहीं दिखेगा? क्या पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। One enemy remaining. आगा तो है भाई। Wait a moment. Heaven. मार के लगाया उसको 200 बार, समझ आए कहानी। Last player standing. ये ले जाएगा इसको, देखो। चल भाई दवाई ले ली मैंने। देखो ले गया भाई उसको। टाइम भाई हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। चल भाई दवाई ले लिया मैंने, मैं जा रहा हूँ सोने, नहीं तो हेडेक होता बहुत गंदा। ओके सो जाओ। I'm the lone warrior now. Okay. If you've never seen a massacre, this is what it looks. क्या नगेट और क्या मैजिस्टिकेशन पट पड़ी। मैं कहूँ तुझको ही, मैं भी जा रही हूँ निन्नी आ रही हूँ। क्या जा रही? ये छोटे बच्चे से रोते क्या हो भाई तुम? ये क्या है? मैं आता लोना तो लेता ही नहीं है। भाई साहब ठीक है आ जाओ भाई अंदर। अरे आ जाओ, कल परसों अंदर आओगे क्या तुम लोग? 1 घंटा अंदर बैठा हुआ मैं। मेन एक ही बच्चा मेन बस। चल गुड नाइट।
गुड नाइट गाइस। ये ले तो देख रहे हो मार दो भाई। Attackers win. Was that supposed to be a fight? अरे ये वेलो लगाई इंस्पायर्ड वाले कितने आता है ये बंदा भाई, 10 बार अपने क्राफ्ट लगाई था करता है। आदि को लगाई भी था बोल भाई। देना, क्या बोल दो आदि को? अच्छा गुड नाइट। ओके कौन बोल रहा है मेरे को गुड नाइट? गुड नाइट भाई। आपको गुड नाइट को स्लाई भाई बोल दे। गुड नाइट स्लाइव भाई। velocraft.com। अच्छा ये बंदा ये ये कितने अकाउंट से आता है भाई ये बंदा? इसके सारे टीम रहती होगी, जितने भी वेलो खेलते सबको बोल रखा होगा कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। 6 अलग अलग आईडी पे तो मैंने आ देखा है। गई। क्या कितने की पड़ी आपको कैंडल वो? क्या पता भाई। है? अच्छा ठीक है आपने तो खरीदी नहीं, उनको समझ आ गया। हमें क्या पता भाई कितनी की पड़ती है भाई। वाह भाई वाह, किस्मत होती है ऐसी। हम तो बस बोल देते कोई दिला दो कोई दिला दो, फिर सही है भाई वेल सही है। बैंक इन द member for 3 months। बम 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 हरी रे आज मैंने फ्राइड राइस बनाए थे भाई। वाओ। Match found. मैं स्पाइसी फ्राइड राइस बने थे मस्त। वाह फ्राइड राइस खा के आया लौंडा भाई। 2500 रुपए के या मैंने वेंडर उड़ा दिए, तू फ्राइड राइस खा रहा है, मुझे भी खिला दे भाई। मैंने तो घर पे बना के खाया ना भाई। हाँ तो क्या हुआ आप भैया, आ जाओ आपको खिला देता हूँ। भेजवा दे भाई, हम यहाँ गरम अरे करके खा जब लेंगे। तक वो आएंगे खराब हो जाएंगे, पता है ना कितनी दूर हो आप। चलेगा भाई, 2 बार मेंबरशिप पे कैसे, 2 बार थोड़ी ना हुई है भाई, एक ही बार है ये फ्लेक्स आया होगा। हेलो सर, हेलो आदित्य भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल है आदि भाई? क्या आ गए भाई आदि भाई? आदि भाई स्टिकर का काम हुआ क्या अपना? अरे लील काले केल काले क्या है ये नाम है इसका? लिटिल काले, मिस्टर लिटिल काले, काले। यस लिटिल काले। ये- नहीं वो बाकी उसे नहीं अरे, किया मैं, नहीं दिव्यम वो बाकी डेस्क्वाइटी। यूज नहीं किया मैं अभी। मेरे को लग रहा है स्ट्रीमर है ये सेज रुक चेक आ, करते हैं। रहा है बोल दिया, ओके हो रहा है, ओके ओके इन प्रोसेस, लेट्स गो लेट्स गो। माफिया दे कॉल मी ओ है, ये तो ले ले। नहीं कौन अलग है भाई? स्ट्रीमर एथन हंट। This place is a इतने स्ट्रीमर testament है to वैल्यू की क्या science, बताऊं भाई। a testament to folly. फॉर रियल बहुत स्ट्रीमर है। सबको स्ट्रीमर बनना है, और सबसे ज्यादा तो सिल्वर और ये प्लेट के मिल जाएंगे, सिल्वर प्लेट गोल्ड, सिल्वर प्लेट नहीं नहीं दूसरे मॉडल के मिलेंगे सबसे ज्यादा। इमॉर्टल्स के नहीं है स्ट्रीमर, इमॉर्टल्स वाले नहीं करते स्ट्रीम। है अच्छा हाइड्रा हर्ष ये वो बड़े बड़े वाले है ना, मैं छोटे छोटे की बात कर रहा हूँ। तो सारे मॉडल ही हैं वो। हाँ तो मैं छोटे वाले नहीं की बात कर रहा हूँ छोटे ना। छोटे भी मॉडल है भाई, किसने बोला? Need a drop. आज ही दिखे थे, एक दो दिखे थे आज मेरे को रिकमेंडेशन में। एक घोष तो है साल Need a drop. साल Thanks. साल लगा दिया। मैं तो कब से दे दिया था भाई। बाकी क्या हाल है? बस ठीक है, कट रही है जिंदगी यार। The life is just passing. Eliminate. Hila, 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 hila. अरे मैं को ही चूज करा फिर पेलने के लिए। एल क्या मिली? 46 क्या होता है Enemy भाई? spotted A. Spike down. Spike down A. Reloading. Last player standing. 78 सोआ क्लासिक स्पैम क्या स्काई सोआ किधर था मैच? लेफ्ट पे गए थे लेफ्ट। नहीं है, लेफ्ट राइट है। माय बैड ब्रो, माय बैड, सॉरी ब्रो।
मुझे मुझे ही चुना क्यों गया है भाई? इस गाय ने क्लासिक स्पैम करी है ना ये। ऐसे ऐसे देखो, दो 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 चलते चलते उसके हेडर लगे हैं दो। कैसे हुए कैसे? मेरे क्यों नहीं लगते? जब भगवान हो साथ तो क्या करे? जब राइट मेहरबान तो फिर एनिमी क्या ही करे। फिर भाई लाइन अप तुम पे मोंडेर कब आई हुए? ऐसा ही थी। मार उसको, लो किया उसको, लो किया। मार दिया स्काई भी लो है। एक क्लोज है इधर लेफ्ट में। भाग गया। One down. पड़ गया पटाक। वो तो आपको पढ़ना ही था गुरु। For you. Reloading. एक ऊपर बैठा है, राइट में वाइपर है। अरे वाह 110 है वाइपर। अगर हील नहीं है तो। One down. 30 seconds left. My ultimate is ready. भाई ऊपर रैंक्स दर्द है भाई, ऊपर रैंक्स दर्द। रैंक से बहुत दर्द है भाई। One enemy remaining. रैंक का ये है कि स्मर्फ वो स्ट्रीम स्नैप बहुत हो जाता है स्ट्रीमर ऊपर वाले। टाइम नहीं है, जल्दी मारो मार की गिनती। लैंड कर लो ना इससे अच्छा तो। टैंक तो है नहीं भाई, क्या लैंड करना। Clutch. Everyone just learned what I already knew. You're wild, Sage. Yes. मैं कहूँ तुझको Keep up. तू है बाड़ू। Make it 1 hour bro। मैं अभी मोबाइल खेल के हूँ, उसमें भी कैम कर रहे हैं घास में। I have the spike. That's done. Blocking sight. Careful now. Here. Going up. भाई वो ब्रेन का बैठा हुआ था भाई स्मोक के उस साइड में ऐसे छुप के कैम करके। भाई वाह वाइपर भाई उन्होंने डेथ फ्रॉम मेन ब्रो। कम लास्ट Reloading. वाइपर स्पाइक दे जा क्या स्पाइक दे भाई, वेट कर गया मेरे को। बढ़ जाओ सर। बहुत बढ़िया आवाज कहीं कुछ देता रे भाई, रोक के एक नंबर तो खेल रहे हो बहुत। We lose everything after this. Spend it. खा लो भाई। मेरे को वेंडर को Need a drop. मेरे को भी वैंडल दिलाना प्लीज। Need a चैंपियन। drop. Thanks. They're not better than me. उठाना भाई, थैंक यू क्या कर रहे हो? अच्छा बात है कि छी भाई ये सो कॉल्ड ट्रस्ट इशूज भाई। यस बॉल तो काटी है भाई ने। पीछे वाइपर, पीछे हील है। क्या वाइपर पीछे भाई, नाइस वॉल काटता भाई वाइपर। प्लीज ऐसी वाला जिंदगी में काटता भाई।
मेरे को जिंग मार दिया टेका शूटर, इसके बाद तो गुड नाइट है। ओ गुड नाइट अब 2 है यहाँ पे, तुम मर गया मेरा तो गुड नाइट पता नहीं क्या है। जल्दी भाग के चल भाग। आगे एक साइड। ओह माय गॉड कवर तो है मेरे को नहीं, उसको मार के रेटिंग। Last player standing. मेन है फ्लैंक फ्लैश है भाई तेरे पे। टाइम नहीं है, टाइम 120 है। टाइम नहीं है वो ठीक है भाई, पर तू किल तो ले। किल की भूखे हैं ये दुनिया। Switching sides. फिनिक्स क्यों हवा में चढ़ा हुआ दिख रहा है? जीते हम, ट्रॉफी बनी फिनिक्स की। लास्ट में वो लाइव रहा ना, इसलिए उसकी ट्रॉफी बनी। भाई मुझे खेलना आता तो मैं हाइपर लेता। ओह माय गॉड, खेलना नहीं आता। वाइपर बाकी सेक्सी एजेंट है भाई, वाइपर की तौहीन ना करे आप इसी। ये क्या वॉल है भाई, ये क्या वॉल है? चाची वॉल बोलते हैं। मेरा वॉल है, क्या वॉल है? मेरा वॉल है वो। अबे तो कौन थोड़ी कहता है भाई, क्या हो गया? क्या वॉल है? कवर तो है। हिल चलो भाई डर तो के। जेट तेरे पास है, देख जेट वाइन चेक। One enemy remaining. रॉन्ग कॉल्स Spike मत देना down भाई। B. रॉन्ग कॉल्स मत दो, गुत्ती लाल कर दूंगा। Reloading. What will it be this time? Have any Lamborghini. Ethan Hans. Come on, Kali. Kali, let's go, Kali. Be a Kali. लेफ्ट का ध्यान रखना। 140 के हो। बुल्ला है के हो 140 100 में मार दिया उसको। अबे हील है भाई उसके पास। अरे वो भी है, माय बैड ब्रो। You were right, my bad. Yeah, bro. Oh, yeah, my guy को भी यार सुपर यार। ये मैंने बात भाई वो दिया, मैंने शब्द दिया। वैंडल। Need a drop. रहना वैंडल दो ना प्लीज। और दो ना मुझे। मेरे पे मुझे दो ना। मुझे दो। जेट भाई पे है, कहाँ है जेट? आपके पिछवाड़े पे। फिनिक्स भाई उसको फ्लॉलेस तो उसके आगे तो उसके आगे निकल गया। उसको पूछा है जेट ब्रो कितना बड़ा बंडल, सही से कितना बड़ा बंडल। अरे शिफ्ट चल रही। ए बाप रे भाई, वो कुछ भी स्प्रे में पेल गया भाई। भाई वो कुछ भी पेल गया भाई। अरे वाह का शूट। दो स्पॉन में बैठे हैं। Come on, ऐसे लाला ऐसे। Still in sight. क्या कर रहा है? दो स्पॉन में थे। हज बरासी। जा साइड जा। रहना भाई स्पॉन में थे, ओके? स्पॉन वाले तो क्या करूँ मैं स्पॉन वालों को मैं। आगे एक वेंट एक। जल्दी कर, डालते उसके पास। रीलोड। प्लांट कहाँ पे किए हुए? उस साइड आ गया। Can't use it. कुछ Recreate this। भाई पागल है के।
Match point. Regret this. Big streamer बोलते जड़ भाई दे दो प्लीज भाई क्या दे दूं Need a drop. क्या मांगेगा तू? एक बंडल मेरे को दो यार। Need a drop. Thanks. ऐसे होते हुए भी लालची आदमी खर्च करेगा नहीं अपने भाई स्टॉक में लगा हुआ 6000 चैनल अबे यार बे एक सुपर चैट तो होती नहीं है एक मेंबरशिप तो होती नहीं है जैसे कुत्ते चियाना चिमखांडे Prepared for hellfire. दो है अभी पे एक ऊपर है मिड टू भी आ रहे दे दिए फुट काट गया तुम्हें कुत्ता बेच गए अपने बेच गए भाई वाह इसने देख भी लिया मुझे Spike down. बिना आवाज के नाइस स्टन ना मारा वो Last player standing. तो हेवन से पुश कर रहे मुझे कैसे देखा आरामी मुझे कैसे देखा Spike planted. प्रे कर दे भाई कोई तो मरेगा लैग है 30 एफपीएस वाला प्लेयर है Attackers win. जी छी I'm not छी भाई do subscribe मुझे सब्सक्राइब कर I'm live on YouTube छी मत लो जा मैं हम महागुरु छी है ठीक है हमें छी मत बोला करो छी भी इज्जत से बोला करो जी बोले अब्दुल्ला टीडीएम खेल रहा है एक अब्दुल्ला ये तो एफटी भाई लग रहा है मेरे को मेन अब्दुल्ला ही होगा छी लाओ छी ना बोले भाई इज्जत दीजिए हम गॉड है भाई छी के भाई ठीक है और अगर कुछ छी बोलने का इतना शौक है तो एक लाल वाली एसी मार के जब छी बोल के बताओ मजा आएगा मुझे बड़ा मजा आएगा मुझे एक लाल एसी में जरा छी होता ना आय हाय हाय मौजा ही आ जाता मौजा लाल एसी छी दिखा दो हमें आज जी अरे दिखाओ ना लाल भी नहीं हो पा रहा क्या लाल एसी नहीं हो पा रही लाडले बहुत मौसी कर बे ये मैं हमें पता अब्दुल भाई है ब्रो हमें पता है कि आज अब्दुल भाई ने ही हाथ लगाया है अपना अकाउंट हेलो नहीं आ पाएंगे दुबई वाले नहीं आ पाएंगे हेलो डीमन स्लेयर के हेलो अबे हेलो मूवी वाले हेलो हेलो सीरीज खेली क्या बोला डेंजर डीमन स्लेयर का हेलो है आपको क्या बोला डीमन स्लेयर आपको हेलो बोल रहा है समझा नहीं आवाज अरे कट रही है तेरी मेरी आवाज कट रही है हेलो हेलो डीमन स्लेयर का हेलो है आपको तांजिरो का हेलो बोलो उनको तांजिरो का हेलो है आपको हाँ रेपो आजा बोलते हैं कौन हाँ बोलता रेपो है कौन रेपो आ रहा है क्या मैं तो नहीं आ रहा भाई कौन आ रहा है रेपो आना रेपो आओ रेपो याद ही नहीं आ पाएगा फिर अरे खेल लो भाई एक दो दिन में चला क्या बोला मेरे पे स्पेस नहीं मैंने फ्रेश उस पे रेपो नहीं है आदि के पास आदि नहीं खेल पाएगा आदि के साथ एक दो खेल दो आदि बोल रहा है फिर वो चले जाएगा मैं तो वैसे भी स्पेस नहीं रख भी नहीं सकता मैं भाई स्पेस कहाँ गई आदि की स्पेस पूरी भाई सिस्टम में घेर बाकी लाइक करें गाइस लाइक करें सब्सक्राइब करें प्लीज लाइक द स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब मशीन को आने देते हैं हाँ वो वही बुला रही है सना बुला रही है रेपो को हाँ तो स्पॉटिफाई भी डिस्कॉर्ड भी सब चला लो भाई आज के दिन इकट्ठा सब कुछ क्रैश कर जाते इसे फिर मैंने भी तो सब चला रखा है नहीं करता मैं मजाक कर रहा हूँ गूगल है ओबीएस है वैलोरेंट है डिस्कॉर्ड है मेरा भी डिस्कॉर्ड चालू है वैलोरेंट है फिर फाइल डाउनलोड भी हो रही है बाकी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें क्यूटी पुकी चुकीस
क्यूटी कुकी चुकी। और क्या करते ही नहीं क्या है। लिखा? ये क्या होता है क्यूटी बूटी चुकी? ए जो मन करे बस। बाऊ मेरे को बताओ मेरा वॉलपेपर कैसा है? अच्छा तुम्हारा वॉलपेपर जैसा होगा क्या बताऊं इसमें। हमारे पास तो है नहीं है। हेलो My ultimate's अबॉर्डिंग ready. में ये रखा है मैंने वॉलपेपर के लिए। अच्छा है। हट बे, वो इंजन लगा रखे तुमने भाई। वॉलपेपर इंजन है ना? वाह यार। अच्छा मेरे को लगा कि कोई आया गया कुछ तो हुआ। एक ये कौन सा लगाऊं मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि एनीमे वाला लगा भाई, क्रेजी सीन वाला एक तो। ये डेमन स्लेयर का देखो मेरे को। टॉप 10 स्वॉर्ड्समैन ऑफ डेमन स्लेयर। नहीं टॉप कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ एक मेन कैरेक्टर। ऐसा नहीं एक सिंगल सा एकदम क्रेजी जो तलवार वलवार दिखे एकदम। ये भी बढ़िया है वैसे भी। हाँ एकदम एकदम ब्रापचिक वाले हो तो मजा आते। राचेक वाला मेरे को एक रेड वेड हाँ एक जैसे ये हो गया। अब जैसे मान लो बैकग्राउंड पूरा लाल है, खूनी बैकग्राउंड हो रहा है, दरिंदा वाला हो रहा है। दरिंदे एक तो थे यार मेरे पे वैसे। रुको मैं देखता हूँ जरा कहाँ रखे होंगे ना। मेरे क्या खोल रहा है आज। वाह मेरा एम गया। मुझे मेरा रिएक्शन टाइम बढ़ाना पड़ेगा, फिर मैं बन जाऊंगा प्रो। मैं ये डिस्कॉर्ड पे डालूं ये मूवी? ये देखोगे? ये मूवी डिस्कॉर्ड पे डालूं देखोगे? कौन सी? द डांसिंग विलेज द कर्स गेम्स। डाल देंगे भाई। अच्छी होनी चाहिए बस बेकार दी। अभी डेप्थ क्यों देख रहा था उसमें, बोर हो गया तो सो गया। फिर 2 बार तो डेप्थ क्यों देखते। डिपार्टमेंट क्यों सॉरी नेटफ्लिक्स पे है। इसमें कहाँ रखे हैं भाई मैंने वॉलपेपर? क्या है? हाँ एक ये है तो सही। मैं क्या कहूँ अघोरी व्हाट्सअप पति। बस बढ़िया है। चलो आदि में जाता फिर रैपो खेलता और क्या। अरे रुक के जाओ ना भाई, अभी क्यों जा रहे हो? वो तो चलेगा ना अब्दुल भाई। उनको बोलो रुक जाओ थोड़ी देर के। स्पॉटिफाई इंस्टॉलर के जरिए। वाओ व्हाट अ मिस आई हैव मेकिंग हियर। कितने क्लोज वाले में भाग रहा हूँ भाई। कितनी गर्मी सी है, कितनी गर्मी। और बताओ गिरी भाई आप कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सी। रेंज में ना हो। मैंने ऐसा करा था। 11 दो गेम प्ले है। गेम प्ले तो आता जाता रहता है। गेम प्ले को मारो गोली। गेम प्ले का क्या है, आज है कल नहीं है। इंसानों को महत्व दो।
बंदे को महत्व दो। कहाँ से करते हो इतने अच्छे डेवलप? बात सही है, जिंदगी देखी आती। अब एक स्ट्रीमर मान लो 25 की उम्र तक, 30 की उम्र तक, 40 तक उम्र तक मान लो खेल लिया गेम, बाद में तो वो बंदा ही बचेगा। 30-40 के बाद बंदा ही बचता है। काहे को ये एसेटों के ऑक्स वाले और दूसरे वाले वो है भाई, why they are making videos, why they are making vlogs, why they are coming to photo vlogging, why they are coming into और क्या बोले एक vlogs। चीज पे नहीं, क्योंकि एक चीज पे नहीं टिक सकते हैं ना, इसीलिए। और क्या, गेमिंग के अलावा भी उनके चैनल में बहुत सारी रीच है। फूड व्लॉगिंग भी, अब स्नैक्स को देख लो, वो फूड व्लॉगिंग भी करता है, वो मोटो व्लॉगिंग भी करता है, वो चैलेंजिंग वीडियो भी बनाता है। उसके पास हर टाइप की ऑडियंस, हर टाइप की ऑडियंस। अभी तो 2 मिलियन है भाई। या तो फिर गेमिंग में तुम फ्री फायर खेल लो, बच्चे इकट्ठा करके कर लो 20 मिलियन। नहीं ज़्यादा हो गया। रुको चेक करते हैं कितने, रुको चेक करते हैं कितने हो गए भाई के। 45 मिलियन। 45 मिलियन आ सकता है आपके, देख लो। फ्री फायर दो। लेकिन साथ में कितना फेस रिवील के पीछे इतना रोना क्यों है भाई? और जब कर लिया ना फेस रिवील, तब उसको खुद को दिक्कत होने लगी, उसके मोहल्ले का बच्चे उसके पीछे पड़ने लगे। और क्या, स्किन दिला दो भैया, डायमंड दे दो, डायमंड। अरे लेकिन पता है ये क्यों इसके पीछे पड़े? क्योंकि उसमें आते हैं एकदम शाइनी वाली, तो ऐसे तड़क के भड़कती आइटम लेके आता गेरीना, ठीक है, कि लोग वो एंथुसियास्ट को खरीदने के लिए। एक टाइम पे मैं भी था, एक इमोट के पीछे ना, पता है इस फ्री फायर गेम के सबसे लेजेंडरी इमोट है जो अभी तक रेयर बंदों के पास है। एक वो इसका टूर्नामेंट हुआ जो इंटरनेशनल, उसमें एक इमोट आया था, उसकी कुर्सी पे बैठता है उसकी, ठीक है, एक ड्रोन वाला, और एक तो वो फ्लैग गाड़ता है उसमें, वो फ्लैग पे जो गाड़ता है उसका नाम आता है, थोड़ी देर तक रहता है वो फ्लैग इमोट ना। लोग पता है किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? डिसरिस्पेक्ट के लिए, किसी को मार दिया उसकी लाश पे वो गाड़ दिया ऊपर झंडा। मैं तो बोलता हूँ राइट भी लेके आए ना भाई, अगर लेके आए राइट भी भाई इमोट्स, क्या फिर अच्छा लगेगा भाई? राइट की सेल्स एकदम ऊपर जाएंगी। क्या है ये भाई? स्पॉटिफाई इंस्टॉल है, अबॉर्ट भी नहीं हो रही इसकी प्रोसेस भाई। ये मेरे पे पता नहीं 30 के आसपास मेरे पे लाइव वॉलपेपर थे अच्छे से, पता नहीं कहाँ चले गए भाई। शायद जब मैंने लैपटॉप शिफ्ट किया था मेरे को फोल्डर कॉपी करना याद नहीं रहा था। पूछा मैं 2 को मैसेज किया। किसको? आर्क और मोरिजिन को फॉर रैपो। क्या बोला दोनों में? अब क्या पता, जब रिप्लाई आएगा तब देखेंगे। अभी तो कहीं कोई किधर ना किधर पड़े होंगे। रैपो मेरे को घटिया लगा मेरा रैपो। नहीं आ पाऊंगा, आर्क ने तो मना कर दिया भाई। रैपो से बढ़िया चेन टुगेदर ले लेते भाई।
मैंने तो गुस्से में ली थी यार ये इनके चक्कर में, एफटी भाई और इनके चक्कर में। मैं वो लूंगा, राइडर्स रिपब्लिक दूंगा। मेरे को देखता हूँ रैपो रैपो किसने? मैं ही हूँ। मैंने आर्क ने मना कर दिया, आर्क नहीं आ रहा। मोरिजिन का रिप्लाई बचा। अब मोरिजिन, जब मोरिजिन आएगा तब होगा। डेंजर भाई यार, किसी का स्ट्रीम अकाउंट दो जिस पे राइडर्स रिपब्लिक हो। Sage, if I die out there, you're in charge. Someone has to look out for these टेक्सास को मैंने कहा था अपने डिस्कॉर्ड का लिंक दियो 2 हफ्ते पहले, आज तक उसने वो नहीं दिया है। वो क्या Reloading. बदल क्या रहा है अब? Reloading. किसी और के आ जाने से बॉस बदलते थे, सुना था। देख भी लिया अब आंखों से देख भी रहे हो तो आ रहा क्या? पूछा आ जाऊंगा मैं इसके साथ एक खेल के आता ये वाला। मैंने एक नहीं, मैंने 4 एग्जांपल देखे अपनी लाइफ में भाई। वैसे मैंने तो पूरी लाइफ देखी बदलते हुए लोगों को भाई, पहले कैसे लोग थे अब कैसे। और वही चीज अगर हम करते तो हमें तो बहुत ताने पड़ जाते हैं भैया, और उनको उसी चीज के लिए हम टॉन्ट मारते तो भाई क्यों हो रहा भाई? मुझे क्या बोलते सब क्या नहीं पूछा? ओके भाई सब लोग की मैंने नेट से हो रहा है। क्या ये उड़ते उड़ते जंप में हेड में लग गया। Last player standing. हेड हो ब्लाइंड कर दिया बेचारे को। और बाकी लोग भी आए भाई। वैरो नहीं खेल रहा, फ्लैश पॉइंट खेल रहा है। ऐसे उड़ते उड़ते आए, ऐसे रुका मार, ऐसी रिकॉइल नाम की चीज ही नहीं होती है जैसे। क्या है भाई? यही दुनिया है आदि, दुनिया का यही नियम है। इट वाजंट मी। और भैया क्या हाल है? तुम क्या हाल है भाई? शुभ भाई गायब हो गए थे तुम। गायब हो जाती मेरी जनता, टिकाऊ जनता ही नहीं है मेरी। हेलो पीक ही नहीं लेगा भाई। वो उड़ते उड़ते के मर जाएगा मक्खा बस। इसको मैं ही दिखता हूँ फिर से। One enemy remaining. Mid top. 140 मैं अंधा हूँ साले, ब्लाइंड दे दिया उसने मेरे को। 360 मारा फिर घूम के फिर भी नहीं पड़ी। वो 2 गोलियां मारिया मेरे को, 2 को पट। मैं बताता हूँ स्कूल के प्रोजेक्ट बिहा यार, कल छुट्टी है तो आज फ्री हूँ। अभी पूजा वैकेशन के पहले प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। ओ बाप रे। अच्छा आप दो यार, छोड़ो। Can I get a drop? Thanks. Cutting their vision. They will cover. किधर है ये लोग? Enemy spotted. Grenade. Bomb buddy. Spike down B. Who's next? मेरे कहाँ जाएगा भाई ये? स्पाइक अपना पास। Spike down B. Grenade. One enemy remaining. Out of charges. Satchel out. Satchel out. 30 seconds left. Last player अब standing. पुत्रिया मेरे को सुन।
यूरो को 145 मारा भाई मैं। यार ऐसा क्यों करते हो रे डेंजर? मैं तो कूद के गया था भाई। 145 भैया यार मारा कुछ यार। साथ खेलते भाई, साथ क्या खेलोगे भाई? तो आप पीसी गेम सही नहीं तुम्हारे पास। वो दिखा दिखा फर्स्ट लाइन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पोम्पलू से अरे बोटा हाउस जाना आगे। यहाँ वो मार्क देख मिनी मैप। अरे बोट हाउस क्या होता है अंदर इसके? अरे चाचा क्लाउड गेमिंग कर सकता हूँ मैं। अब उसको प्लांट नहीं मिलता। I will not die. प्लांट तो ढूंढ लेते चिचा। चिचा प्लांट ही ढूंढते रहेगा तुम तो चिचा। Last round in the half. Use everything you have. We lose it anyway. बट वेलो क्लाउड पे नहीं होता। यस तुमको हैंडल दो। कोई ना गुरु। काश वालों क्लाउड पे हो जाता भाई, क्या मजे आते भाई बंदों पे। रियल टाइम गेम्स नहीं हो सकते भाई कभी भी क्लाउड पे, मतलब जैसे होते हैं ना एकदम जो। बट शुभ भाई ने मेरे को बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। मेरा बर्थडे गिफ्ट किधर निकला है शुभ भाई? शुभ भाई वेयर इज माय बर्थडे गिफ्ट? शुभ भाई मेंबरशिप ना बर्थडे गिफ्ट में। Joke's over. You're dead. There. Smoke's Enemy down. spotted mid. Grenade. Here comes the party. One down. है ही नहीं भाई। भाई नीचे गिर गया भाई। Out of charges. अबे कितना ब्लाइंड था भाई। Spike down mid. Reloading. Bomb buddy out. Didn't beat him down. वाह भैया। One enemy remaining. बे इतना प्यारा अल्ट कहा ना। 118 रेना और 82 योरू दोनों लो मिड टॉप पे। ओ वाओ भाई का तो अलग ही फ्लावर बन गया था भाई। अगले साल दूंगा बर्थडे गिफ्ट जब मैं 18 हो जाऊंगा। ओ फिर तो 2 बर्थडे का गिफ्ट मिलेगा मुझे। और क्या भाई, इस बर्थडे का भी और अगले बर्थडे का भी। मेरे को तो भाई कितने 5-6 साल से नहीं मिला। मैंने ना मैं कुछ कहाँ मिला भाई? मैंने तो बर्थडे ही नहीं बनाया भाई, केक ही नहीं काटा भाई। मैंने बड़ा काटा है भाई। वही सेलिब्रिटी नहीं बचा। आधी हुई एक उम्र के बाद तो खुशी नहीं बचती जीवन में। आधी अपने तो अपन लड़के बर्थडे की एक्साइटमेंट भी नहीं है भाई अब तो। Reloading. हाँ इसकी ठीक है भाई। मेरे को ही 1 टैप दिया। 61 दे दिया भाई मैंने उसको। पोम्पलू सेट वो हील नहीं है और वो 61 है। Taken down. बूढ़े हो रहे हो शर्म करो, बर्थडे गिफ्ट चाहिए। इग्नाइट वेलोरेंट रैंक एसेंडेंट बने हैं। अब तो स्विफ्ट खेलता है भाई, हम नहीं खेलते इग्नाइट भाई रैंक उतना। खेलते होते तो रेडिएंट होते। जस्ट सेइंग वी आर नॉट रैंकिस्ट ब्रो। हम हर रैंक के साथ खेल लेते, इसलिए हमें स्विफ्ट पसंद है। Reloading. एसेंडेंट 81 आरआर टू प्रिसाइज। ट्राई करते हैं कैसी है। और इग्नाइट भाई और मेरी मेंबरशिप नहीं है भाई। गलत बात। इग्नाइट अपन को कब से जानते हैं। इग्नाइट भाई अपनी मेंबरशिप नहीं ले रहे और रैंकिस्ट हो रहे इग्नाइट भाई। I'm the last thing they'll see before they die. भाई मोरिजिन भाई तो वो खेल रहे हैं भाई। Out of charge. यार थेरेपिस्ट हार करने का सोच रहा क्यों? Need a drop. फालतू पैसे थेरेपिस्ट को क्यों Need a दे दे? drop. मुझे दे दे भाई। पता किस चीज की थेरेपी चाहिए तुझे? क्या दिक्कत है तेरे जीवन में?
लड़की की कमी। वो तो पैसों से पूरी हो जाती है मेरे भाई, कर दी ना गरीब अरे वाली वो- बात। क्योंकि हूँ भाई, हूँ ही गरीब, क्या करूँ, बात ही वैसी निकलती है। Hey! Go get him. There. Right here. Here. आओ साइड, आओ साइड, आओ आओ ना कर साइड। रहा है। Spike planted. Launching smoke. Lock in sight. Snuff. लेना। हाँ मुझे यहाँ से पड़ गई भाई। One enemy remaining. कूद के डैश मार के सीधे साइड। बस लेन लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। Last player standing. ये देखो। हमारी पोम्पलू से पोम्पलू सी है। इग्नेट भाई पहले तो फिल्म में बस स्वागत है आपका। ले ली इग्नेट भाई ने, भाई ऐसे बंदेज के एक बार में ले ली। अरे भैया यार बताना भूल याद गया। सो हमारे वेस्ट बंगाल में कुमार कुतली ने सारे Reloading. मूर्ति बनाते भगवान के, तो दुर्गा पूजा में मूर्ति देखने आ रहे कल सुबह 7 बजे। डांस कर दो भैया। भाई डांस पागल है क्या, डांस करते हैं भाई, मेरे को नचवा। रिकॉन मांगो। Can I get a drop? ना बाबा ना, डांस नहीं, बहुत डांस कर चुका मैं भाई। अब मैं सिर्फ लाल एससी और 2000 रुपए की सुपर चैट के ऊपर करते करते एक बार 2000 सुपर चैट या 2000 यूपीआई इसके नीचे नहीं नाचने वाला भाई। बहुत नाच लिया बहुत। रेड हैंड काउट हुए थे एक बार डांस करते। बहुत नुकसान होता है भाई मेरा। Enemy spotted mid. My ultimate is ready. Okay. One enemy remaining. निकल गया भाई। तब प्यारा ऐसे मारो गलाला। ले भाई ले ली, लेकिन मैं उतना देखता नहीं स्ट्रीम। वो तो कभी कभी नॉटी का देखता स्ट्रीम। कोई ना, आपका बस मेंबरशिप सपोर्ट मुझे मिल जाएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। फिर कभी कभी आके हाय हेलो कर लेना। Reloading. भाई मोटेटो के साथ बोल वो अच्छा नहीं हो गया आज। क्या हो गया मोटेटो का? सब भी शेरिफ लेके टॉप रैक करके भी हार गया मैच वो। होता है यार, ये होता रहता है, मैचेस हार जीत लगी रहती है। नेवर जज स्ट्रीमर बाय विन और लूज, जज बाय हिज एंटरटेनमेंट। यार मजा आना चाहिए लोगों को। अरे नहीं काम तो अच्छा करता है वो तो, नो डाउट है। पीछे भी घुमा है क्या ऊपर कोई आवाज तो नहीं आई भाई। शॉर्टी के My ult's ready. One enemy remaining. अबे मैंने अल्ट मारा था साले, अब तेरी मुंह में मारूंगा। मारूंगा उसको। मार दिया। Sudden death. उसकी मेरी, अरे सुनो मैंने पुराने स्कूल में बॉयज स्कूल से है, एक लड़के को बेंच पे डॉगी बना के 5 लोगों ने बारी बारी मारी उसकी बेंच की 5 हिस्से में टूट गया। 6 लड़के सस्पेंड भाई। इसको ऐसी रैगिंग होती है भाई, बहुत बढ़िया। स्कूल में है भाई ये सब। स्कूल रिकॉन स्कूल में हो रहा है ये सब। स्कूल में ये सब कर रहे हैं भाई, खतरनाक। थैंक यू पोपलू। स्कूल में ये सब नहीं करना चाहिए यार, गंदी बात है ये सब करना है। बेंच बिठा के मुर्गा बना के मार दो यार, गलत बात है भाई। विक टीम भी सस्पेंड, क्या बताओ सीसीटीवी वाला भी तरस खा गया। बाप रे भाई, ऑफ कुछ है भाई कि भाई यार उस पे सेजू अंदर आ, हील दे फटाफट, हील दे सेजड़ू हील दे।
क्या टकरा भाई सी Launching smoke. भाई मैंने कहीं टीपी सुनी भाई ये यहाँ है यहाँ है इसकी टीपी ओह बहुत बढ़िया वन मोर स्मोक कैन यू One enemy remaining. 120 हेड क्या टाइमिंग क्या बड़ी गंदी है यार मेरी एएफके जीजी ये कैसे क्या पता क्या कर रहा था नेड से मारते सेव की मेरा मेरा अल्ट नहीं आया भाई अंडरेज के चैनल पे भी लेता था तो वहाँ आके भी बोलता था भाई तू याद है मुझे अंडरेज के चैनल पे अंडरेज कौन है ये कौन है भाई अंडरेज कौन है अपन मैंने और भी कहाँ कभी मिले नाम नॉटी भाई क्या मिलते अपन तो ये तो पता है आपने नाम तो चले चेंज कर लिया स्ट्रीम पे शायद पहले इग्नाइट ही था फिर और कुछ था नोटी भाई तो नोटी में है भाई नॉटी भाई का एम पुश भी है 5 लोगों ने मारी है उसकी भाई क्या बताऊं कौन झालो के स्कूल से बाप रे भाई उन्हें एग्जाम देना नहीं चाहिए भाई जो लोग गए गंदे लोग हैं भाई वो लोग सस्पेंड करो भाई हमेशा के लिए सस्पेंड करो रैपो में क्या सीन है रैपो देखते हैं भाई अब क्या हो रहा है रैपो वाली पॉली क्या रैपो जा रहा है क्या देख लूं पहले रैपो में है कि नहीं है कि क्या सीन है एक लगा लो फिर मैं भी जा रहा हूँ वैसे 2 बज गए एक लास्ट खेल लो फिर मैं भी जा रहा हूँ ये अच्छा है दोनों गेम साथ साथ चल रहे हैं मेरे वाह तो रैपो हैवी नहीं है ना इसीलिए क्यूट ये रैपो तो बाकी लाइक करो शेयर कमेंट सब्सक्राइब अब मैंने दोनों चलाया तो मेरा ओबीएस का गेम कैप्चर पकड़ेगा कौन सा मैच फाउंड ये बताओ जो हाई प्रायोरिटी पे हो वो यही पकड़ा हुआ है भाई तो हाँ तो जो हाई प्रायोरिटी पे होगा वही अंडरेज के चैनल पे अंडरेज कौन सा चैनल है ग्रेड भाई अपन मैंने आई थिंक पता नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है पहले अपन वो कार्तिक के शायद पे मिलते थे वो इंद्रजीत भाई मिलते थे इंद्रजीत नाम था वही नाम है क्या आपका इंद्रजीत का इन गेम शायद ब्लैक था if I'm not wrong कितने सारे लोग थे कोई आता ही नहीं Enough training. It's time. सब्सक्राइब बटन दबाने में लोगों को कितना जोर आता है रे एक सब्सक्राइब बटन भी दबा पा रहे हो तुम लोग भाई आदि परसों नरसों मैंने करे थे 2 5 6 7 के आसपास सब फिर एक दिन स्ट्रीम नहीं करी तो गिरे फिर एक दिन स्ट्रीम करके चले गए फिर और गिरे तो आज 2559 है भाई चैट पढ़ लो पढ़ा भाई 5 लोगों की पढ़ लिया और कौन सी चैट 5 लोगों ने हमारी ये पढ़ लिया था कौन सी जाहिलों के स्कूल में हो या चैट पढ़ चुका हूँ मैं भाई शुभ भाई अगर कुछ आपने उल्टा सीधा लिखा होगा तो चैट अपीयर नहीं होगी उनके सामने ये हो सकता है अगर आपने रॉन्ग थिंग्स लिखी है हाँ तो उनके सामने अपीयर नहीं होगी वो सिर्फ आपको देखेंगे आपको भी नहीं दिखेगी अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आप इसमें से भी चल जाएंगे मैच फाउंड हाँ मैंने लिखी थी एक चीज वो अब उस स्ट्रीम पे शो नहीं हुई थी ब्रदर भी शो नहीं होता भाई मैंने लिखा था तो PRX OP बोलते और उनके सामने जो भी थे उसकी वो खोलते तो वो हटा दिया था ओह और हटा क्या मतलब आपको स्क्रीन पे जो वो आपको दिखा नहीं था क्योंकि आपके पास जो आती है ना चैट स्क्रीन पे जो रखते हो आप वहाँ पे मेरे को शो नहीं हुई थी सो आई अज्यूम कि उड़ा दी है भाई ऐसा ही होता है हम गरीबों के साथ गाइस
हमारी चैटें ही उड़ाती जाती हैं, हमारे यहाँ व्यूज ही नहीं भाई आते। आपको पता है एक एक डेढ़ हफ्ते पहले, नहीं हाँ लास्ट वीक शिवांशु के साथ क्या हुआ था। उसकी एक स्ट्रीम में 8.5K से सीधे 10K हुए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे वो 10K से 8.5K वापस हो गए। वो बॉट लगा वो किसी। नहीं नहीं रियल सब थे। रियल सब या तो नहीं, बॉट ही हो। पता नहीं क्या होगा वो। ऐसे सब एक दिन में इतने इंक्रीज हुए, ठीक है। फिर अगले दिन उतने ही डिक्रीज हो गए। वो जब डिक्रीज होता है तो वो बॉट ही रहता है, एक साथ इतने सब्स कोई पूरी जनता नहीं करती, पागल। वो भी नहीं नहीं एक साथ नहीं हुआ था, 9 घंटे की स्ट्रीम में हुआ था उसका। हाँ वही 9 घंटे की स्ट्रीम में एक साथ ही बड़े होंगे ना। ओ माय गॉड, आईफोन ले रहे भाई, पैसा नहीं है रे आईफोन जितना क्या आईफोन ले ले भाई। एक फोन अभी लिया, यही बहुत मुश्किल से मिला है, तो आईफोन अभी तो नहीं आएगा। आईफोन मैं लूंगा, मैं नहीं, आईफोन दिलाएंगे अपन अपनी वाइफ को दिलाएंगे, अपन लेंगे अगर वही वाइफ बनती है तो। भाई स्ट्रीम पे वीकेंड की नई गाना बजा दो, क्लोजिंग नाइट वीकेंड के पागल ओके मेरे लग जाए। वीकेंड वाले कॉपीराइट देंगे भाई। इतना बड़ा नहीं हुआ है कि भाई इतने बड़े बड़े गाना बजा पाए हम ये लोग। मुझे तुम मार रहे हो भाई, छोटे अंदर है सीधे घंटा भाई, खोपड़ा बोल दिया। Last player standing. Get him. 10 साला ये बॉडी मार गया एक 55। भैया पक्का केसरी लाल फैन है? मैं किसी का भी फैन नहीं हूँ भाई, स्ट्रीमर्स लोगों का फैन हूँ मैं। 80 था स्काई भी यार। यहाँ डैश मारेगा गेट। अज्जू भाई बिग फैन। अरे माइक अज्जू भाई हैकर भाई, हैकर भाई, हैकर भाई, हैकर भाई, हैकर। He's 21। मैं क्या करूँ भाई? Spike down mid. पेड़ लो दोनों साइड। One enemy remaining. Enemy spotted. हाँ देखा है साइड। अबे क्या आ गया भाई, कुछ तो मार गया वाह भाई। ये तो वो है। Your tactics failed. या ना कहूँ तेरे इश्क की है वादियों में। भैया पक्का केसरी लाल। मैं ना कहूँ मेरे में नहीं आवे ना छेरे पड़िया ने पड़िया ने पड़िया डेट पर पड़िया टिकट 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 का मनी पीड़ी आज से चुप 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 चुप। अकेला अकेले मूवी पता नहीं क्या क्या देख के आ जाते हो, मुझे छोड़ देते हो यहाँ पे अकेला। स्पीड मत लेना वो। हाँ स्पीड मत लेना, स्पीड बहुत है रैपो में। चलते चलते ब्लड छटक जाओ, मार लिया। My ult's ready. Spike planted. Satchel out. Flash. One enemy remaining. Ace. Go Ace. Ace हो गया बेबी, क्लिप करो। सैसल तो है। कोई है? नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे को आना पड़ेगा रुको। Last round before the switch. Karma is real baby जो ऐड। एक वेंडल फेंक दो एक।
रीना वैंडल की Can I get a drop? रीना मेरे पे नहीं मुझे है। तो मुझे तो मुझे तो मुझे तो मुझे तो मुझे मेरे नहीं थे भाई। Thanks. वो Gun पड़ी थी। here. कहाँ पड़ी? अरे कौन उठा के? अरे ये पड़ी ना थोड़े। अबे इनको सुना देता भाई मैं कुछ नहीं। Get out of my way. नाइस वॉल। उसको ट्रैप कर दिया भाई जरासी वॉल। सेवी उसके अंदर उठा दी हुई तुम। Spike down A. भाई मैं नीड मार दे फिर एक क्या 100s का है। One enemy remaining. नारा 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 दो गेम खेल रहा हूँ एक साथ। Player standing. Wow, he was 100, Brand. He was 100. Omen, what you have done here, bro? Switching sides. Stream freeze and chat miss. हाँ। क्या दबाऊं? क्यों दबाऊं? एक सेकेंड। अरे मैं तुमको लेके जा रही हूँ सर। ये क्या कर रहा है भाई तू? अरे अब मैं तो 2 गेम खेल रहा हूँ ना एक साथ। वैलोरेंट रपो। भैया आप 12 चिंचान को ये चार्ली के कौन था? चार्ली करके कौन था? मैं नहीं मारा किसी को भाई। आई एम क्यूटी थे पुगड़ी पुगड़ी तोड़ना होता वो। क्या रिवील है? Enemy spotted A. Reloading. तुम भी मरोगे। अरे क्या दे रहा भाई? क्या है? Reloading. Take whatever you need. I just need shotgun. अरे के कवर के दे। Enemy spotted A. Healing up. मेरे लग गए भाई। One enemy remaining. That's done. इसका कितनी हाई सेंस पे है भाई? इसका इतना शेकी एम हो रहा है तो तब भी लग रहा है ये तो कोई मैं अपनी तरफ से ज़्यादा हो रहा है। डॉट नहीं खेला जा रहा मेरे से। डॉट नहीं रहा मेरे को उड़ता हुआ देखेगा। खेला ही नहीं जा रहा भाई डॉट पे। मैं लगी नहीं, मेरे लगता ही नहीं है डॉट पे भाई। बहुत फोकस करना पड़ता है। तो डॉट है तो ही फोकस के लिए। डॉट पे सीखना पड़ेगा भाई। तभी होगा वो स्पीड स्टैमिना पे जल्दी हो जाएगा। रेंज बहुत है अपने पास। 12 रेंज है। ये देखो गेम खेल लो एक साथ। ये आया अपने क्रॉस शेयर पे हेड लग गया। चलेंगे तो वन मोर होता है। इसको लगी क्या? One enemy remaining. अबे तेरे नाइस भाई फ्लैश मत कर परे तेरी। मेरे को दो पर अभी अंदर बंदा है तो देखे तो फ्लैश कर दे। थोड़ा सा बैन मेरे को अंदर कर दे भाई। मेरे को दो बार अंदर कर दिया। लैंड कर। तीन फ्लैश है। स्काई मत कर फ्लैश तो। 3 फ्लैश कर रहा है तो। शादी ऐसा बोल। हेलो मुझे बाहर निकाल दिया तेरे ऐपों से। अरे कौन देना? For you, hermanita. फेंको रिकॉन तो मेरे को। Can I get a drop? मुझे बाहर निकाल दे रहा है
Lucifer. Over the. Reloading. चलते चलते जेट टूडी खड़े वो 120 दिया था मैं नियॉन नियॉन छोड़ो Your duty is spike down A. I have this fight back where I belong. लग गए मेरे Charges. आई नहीं रहा है भाई कितना बेशरम है भाई ये जी आया था देख रहा वो नहीं खेला जाता तुमसे Last player standing. Spike down mid. 30 seconds left. Buried. इतनी गोलियों में उसने एक मारा क्या वो समझा कि उसको इतना मार देगा Feel something over there. Can't place it. Like us, but वो तो बात आपकी सही है Can someone get this? Face guard है find the weak point and break it. गोटे रिवील कहीं कर रहा है भाई सेज अपना वो सेज नहीं फिर इनका वेट क्या चाहिए I've got your trail. इधर Enough. Get out of my अरे way, 140 भाई जेट भाई ओवर कुछ मत दो हाँ Blinded. One dead. अरे 140 Last player standing. Spike down mid. Come on blank you can राइट से आ रहा पूछ आ रहा भाई तेरे पे अब तो हील हो गया भाई नहीं हील हुआ है तो 114 भाई छी 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 हील हो गया Sudden death. भाई बच्चू भाई को मारो भाई गोली मारो बच्चू भाई की तो इजी की तेज की अच्छू भाई Can I get a drop? Thanks. मैं तुम एक जगह बोलोगे सर इको हो रहा है ना तुम्हारे हाँ तू खुद बोलता जब कुछ नहीं एक जगह कैसे बोलूं मेरे को डिस्कॉर्ड में पुश टॉक नहीं आता भैया छोड़ो calm down baby calm down मुझे सब्सक्राइब करो अंडर इंजीनियरिंग एज तुम्हारा लैपटॉप एज होगा भाई तुम्हारा लैपटॉप होगा भाई इसका भाई किधर है बंदे दिख नहीं रहे मुझे Spike down. Attacker spawn. come back Ruby कोडन चला रहा भाई One down. Last player standing. One enemy remaining. Three for me. Spike down B. राइट मार दो क्लचर गया था सिटी ओ सॉरी मेन गए भाई Satchel out. हाँ भाई के भाई Attackers win. There we go. Nice work, everyone.
डू सब्सक्राइब। ची 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 ऐसा मारूंगा ना ऐसा। अब दूसरा गेम, चलो बाय बाय। बाय बाय। मेरा तो जा रहा है, बाय बाय। यस सर। इतनी सारी हीले छोड़ रखी इन लोगों ने मेरे लिए। क्या छोड़ रखी है जी? हील 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 गन्स। गन। बाय बाय। बाय। There's one more card. No, I need one more card. Take it, Sana. I have a gift for you, Sana. Come on, take this. It's a very expensive gift. It's a very expensive gift. Come on. Give it back to me. Okay, give it back to me. Okay, give it back to me. Yes, I am pro. Okay, yeah. Where is the card? मैं इस बड़े वाले डब्बे को वहीं लेके चला जाता हूँ जहाँ से हम आया था। I didn't do anything. You are just bought. This is not mine. Oh, I got something again. FT. Come on, FT. तोड़ दी. FT, I have a thing for you. Oh, wait, I'm coming. Sana, can you catch? ये लो, छोड़ दो, मैं रखती हूँ नीचे। हाँ, मैं गिर गया। डर लगता है भाई गिरने में। मेरा सामान तोड़ रही हो तो कीमती सामान में लेके आया। अरे अब्दुल भाई चालू होने से पहले ही टपक गए। ओ माय गॉड, लावा में गिर जाते हैं आजकल के बच्चे लोग। ओह माय गॉड, कौन मारा मुझे? पंछी बनूं उड़ू गगन में। ओहो पंछी बनूं गगन में। हे घोड़े, मेरा घोड़े। या यहाँ गिर गया था क्या? Wait. I am waiting. No, don't keep it. Don't keep it. Move on. मेरे को अभी। Move on. No. अपन रखेंगे सब, इनकी क्या बात माने। उड़, हम रखेंगे भाई। मदिरा नहीं रखने दे रहा अंदर, गंदे लोग। मदिरा नहीं चाहिए अपने को। क्यों नहीं चाहिए? हानिकारक है। हाँ, तभी तो मिलके आओ, खत्म करते हैं। Oh, I'm so pro in this game. Wow, my God. Oh, my God. भाई कोई चिल्ला है राइट में ऐसा एकदम जोर से। कौन चिल्ला रहा है? कोई नहीं चिल्ला रहा भाई। कोई चिल्ला, वहाँ आवाज आई मेरे को भाई, जैसे पकड़ लिया किसी को। और अच्छा ये आ गया क्या?
एक खजल, एक खजल, सफेद खजल। कौन हरा तोता है मग 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 कर रहा है? मर गया, गेम चालू होने से पहले मर गया वो। मैं तोते चुप। तोता तो जिंदा है क्यूटी। किधर हो? फिर मर गए क्या? किधर गए? फिर मर गए क्या ये फिर टपक गए क्या? अब्दुल भाई फिर टपक गए? अब्दुल भाई खोल दूं मैं ये? आई एम सो क्विक। हमारी गन चार्ज करके रखनी चाहिए ना भाई अपनी गन है। I'm back. Who has the second card? I don't know. We have one card. The money card is still there for the section, please. Oh, here is the second card. I got it. Come straight, come straight. I got the second card. 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 Yeah. Go straight and it will be in the left. Oh, I got something. Oh my god. I got one more thing. Yeah. Wow, 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 wow. Yeah. Take us on. Yeah. I'm so pro, yaar. Yeah, na? She will also happy. Yeah, thank you. Oh yeah. ये सफेद भूत, ये काले और सफेद। ब्लैक एंड वाइट। क्या रे? हिल देनी है क्या? दो ना। लौड़े तू दे मेरे को हिट। नहीं है क्या? ये लो यार, ये लो यार। चूस ली। इधर भागी, अब भाग गई सफेद। इतना गायब इतनी जल्दी होते ना ये बूस्ट लेने के बाद आजकल के बच्चे लोग। बच गया मैं, बच गया मैं, बच गया। खाइए खाई। ओ लाबा ला, ओ एक और मिला। ओ माय गॉड, आई गॉट द क्यूटी। ओ माय गॉड, टंग बज गई भाई। बिना फालतू के गन चलाने वाला इंसान। हेलो हेलो, ये देख तेरे पीछे आ रहा था वो, ठीक है? ये देख। ऐसे 1000 तोड़ दिया। कोई नहीं आया, आपने तोड़ा। अब्दुल भाई आओ, आपका घर मिल गया। अब्दुल भाई एक जगह मिली आपके लिए, आ जाओ। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, भूत आया। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। हाँ मेरे तोते। भूत आया, भूत। बोल भूत आया। Oh my God, we got a घोड़ा। गतम चाहिए, पीछे देखे माँ खाई। आओ देखो घोड़ा दिखाओ तुम्हें, घोड़ा बता। शक्ल से तोते की एक्सेंट मैच नहीं होती। Oh, you wanna show someone accent? Shut up, you bitch. कम 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 बोला कर। Shut up. कम बोला कर। Shut up, you bitch. Shut up. Shut up, you सफेद audience. सदा,
डबल जंप ले लेते तब कुछ। अब देखो हमारे पास ट्रिपल चोपल जंप है। उस दिन तो फुद्दू बन गया था ना। आप देख उस दिन गई। कैसे कर रहे तुम सब? हाँ तो गई ना उस दिन। अब देखो ना। अब पीरो है। हम पीरो है। वी आई पीरोस। अभी को ना आके मरा आके फिर भी मर जाते। देखो इतने सारे हैक्स लगाने के बाद भी इंसान मर रहा है, क्या फायदा। गेम का तरीका। अच्छा गेम में मरने का तरीका तुम्हें पता है। हैक्स लगा के मरना भी कला है भाई। कला नहीं होता उसको नूपना बोलते। कहाँ गया सफेद? ए सफेद, ए झिंगुर सफेद। अबे अबे मेंढक आया, मेंढक मेंढक। कहाँ गया वो? आ रहा है सामने से आ रहा है कोई। हम पीरो है। कैसा मार। तो जंप कर देने का भाई वो। ये लो भैया, डालना नहीं तुमको। अरे ये डालो ना, ये 5000 डालो ना। इसमें डालो, दूसरी है कहाँ? पकड़ो ये, पकड़ो। काले काले गिर जाएगी काले। तुम काला साले। तुम काला। इतना काला। सर्फ एक्सेल लगाने के बाद भी तुम सफेद नहीं हो पा रहे। इतना काला। अरे माइकल जैक्सन जैसे करूंगा मैं। पहले जैक्सन तो कर लो, फिर माइकल बाद में करना। भाभी जी मैप खोल के कहाँ देख रही हो? हाँ ये पागल है अब्दुल भाई, ऐसे ही दौड़ते रहते हैं जब देखो चिंगुड़ जैसे। वो भूत है भाई, भूत। भाई ऊपर सब खाली खाली सा क्यों है भाई? वाई नॉट भरा भरा सा? खाली है ऊपर। ए कौन मरा? बच गया। मैं वो ऊपर देख, वो बॉल को देखते देखते जा रहा था कि मैंने नीचे। ये देखना यहाँ पे बहुत गंदी ट्रिप है वो। ये देखो, ये तुम्हारा लॉट है। अगर तुम मर भी जाओ तो भाग के आ जाने का। Oh my god. Oh my god. Oh my god. Slow motion. ए कौन पिचकारी मार रहा है? पिचकू। पिचका दूंगा, पैसा मिला। मैंने ही तो दिया तुम्हें पैसा। तुम एक ड्रोन ले लो। तुम बोला बहुत है अपने पास। वो इंटरेस्टेड बोल। बहुत इतना चीजें खन 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 करता है ये इंसान। है ना हट। We have the crown, guys. I got the crown. I got the crown. Yeah, I got the crown. Hey, wait you, uncle. Tax return. I'm pro. I'm pro, baby. तोते। क्या हो गया है? सफेद।
चलो Do you want to recharge your drawer or your gun? I think I have one shotgun, that's fine. The next time I कला ऐसे देखते हो ऐसे ऐसे कौन ने छानबीन करी ऊपर की है कौन दरवाजा तोड़ना आया था इधर नूब ये डेंजर हो गया ये अब्दुल भाई हो गया नूब सामान छोड़ के आ जाते हो $600 के चल मेरी गाड़ी चुचुक 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 चल मेरी गाड़ी चुचुक 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 चल मेरी गाड़ी चुचुक चुचुक चल मेरी गाड़ी फंस गई चल मेरी गाड़ी चुचुक 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 चल मेरी गाड़ी चुचुक 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 चल मेरी गाड़ी चुचुक 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 रुकना डालना मत अभी रुक जा अरे हम एक्सपर्ट ही है भाई किधर है हमें क्या पता किधर है भाई हम तो यहाँ बैठ जाते हैं ए झिंगुर It's best to recharge everything. सब रिचार्ज कर दो ड्रोन वन गन वन सब कुछ सब रिचार्ज कर दो हो गई मेरी गन रिचार्ज हील कहाँ है रे बिग पंग्या हील का सारी हील ले गया ये बिग मंगिया सारी हील खा गया रे ये किधर है हील क्या है बिग मंगिया है Why here? Go to the truck. Oh my god, I am on the heights. Ah, बिग मंगिया पकड़ा गया चलो तला तला क्या रे बिग मंगिया नहीं मार पा रहा क्या बिग मंगिया मुझे हील मिली पक बिग गन निकाल के डराता मुझे 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 डराता है मुझे बहुत बोलता है तोता ग्रीन कलर करना काले सफेद लोग get so cool ये सेंटर टेबल पे नहीं होता इससे रूम में अगर हुआ तो कोई चांदी से फूटने के भी हो गया
हो जाएगा। Not the increasing the health. चला क्या तोते का मुंह बंद है? तोते क्या रे सफेद झिंगूर। भूख लगी गई। भूख लगेगी भूख लगेगी भूख लगेगी। अंटा 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 है चंटा है पेटू पट्टा है। देखो कितनी जल्दी सब ले रहा हुआ। हाँ, एक सफेद को देखो। सफेद को देखो भाई। सफेद को छोड़ नहीं रहा भाई। सफेद सब खा गया सफेद भाई। फिर डिस्कनेक्ट। अब मैं क्या करूं? मैं भी जाऊं सोने जाऊं मैं भी। Let me also go to sleep guys. पैकअप करते हैं। जी गाइस, मिलते हैं कल एक नई इशू के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओके यू प्ले। सोरा में ढाई बज गई। चलो बाय बाय गाइस। जी कल मिलते हैं। ओनली 1.63K बिकॉज बट कोई ना। गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट।